बिकॉज अभी ज्यादा खातन जो है वो लीडरशिप रोल्स में ली जा रही हैं, ट्रांसजेंडर्स को साथ में ऐड किया जा रहा है, यंगस्टर्स को मौके मिल रहे हैं दैट दे आर बीइंग गिवन द हायर पोजीशंस। सो उसकी जब हम बात करते हैं, बट स्टिल देयर इज अ कल्चर जो बहुत ज्यादा नहीं है कि अ, जो है वो मौका दिया जाए और राइट ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। राइट, राइट तो है लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सो अगर रिपोर्ट किए जाने की फ्रीडम वहां पर है, बावजूद उसके जो है वो 1 in 3 यूएस सिटीजन्स इज डूइंग दिस, तो वो कितना अनफॉर्चुनेट लिखा हुआ है। सो वी आर फार मोर अनफॉर्चुनेट अबाउट दैट आई एम बीइंग ऑन दिस पोजिशन। जब हम बात कर रहे हैं मेन एचआर पीपल और इस पोजीशन पर होते हुए, इस जगह पर होते हुए, तो दिस इज आवर जॉब कि हमने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर को किस तरह से चेंज करना है। सो हम इसी पे बात करेंगे और इसी पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम फेयर वर्क प्लेसेस को कल्टीवेट कर सकते हैं। Am I making sense? हम्म। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट। सो ये है मॉडर्न वर्क प्लेस का लैंडस्केप। राइट। सो जो जो जरूरी बातें हैं इंक्लूसिविटी की, डाइवर्सिटी की एंड मेंटल वेलबींग की, जो एक मॉडर्न वर्क प्लेस के लैंडस्केप को बनाती हैं। और मॉडर्न वर्क प्लेस का लैंडस्केप क्या है? उसमें इंक्लूजन है, उसमें डाइवर्सिटी है, उसमें मेंटल वेलबींग है। सो इंक्लूजन पे थोड़ी सी बात करें। हाउ have you started working on it, and how much is your organization promoting and working on inclusion? Uh-huh. As I mentioned earlier, that women, the young leaders, right? So it's trans as well, but वो normal नहीं है, इस तरह से है. But yeah, these are the things. And also, from the rural backgrounds, or you can say not very capable backgrounds, you can say, तो उनको मौके दे देना आना, और इस तरह से कि अगर वो पर्सनली केपेबल हैं तो हाउ डू यू पुट इनटू द पोजीशन, और उनको वो वहां पर रखते हैं. सो इफ यू लाइक टू टॉक अबाउट दिस in perspective of your organization. Yes. I think in some of the organizations, they have trainings. Mm-hmm. They have ideas. They have ideas of law. Is you are doing a good. Somewhere I have say humans. They can't be more productive ideas. Something. So I have to. Are you of the view that women cannot give more productive idea? They can, okay. But sometimes the organizations think that women cannot do. Somewhere. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Like organization में मैंने experience है, I think 3 years. Yeah. Most of the organizations, maybe sometimes corporate sectors में भी rights नहीं दिए जाते हैं and males and females को. Males को favor किया जाता है कि उनको मोटिवेट भी किया जाता है कि जैसे अब आई एम ऑन द पोजीशन ऑफ एचआर, वैसे के साथ 3 साल से काम कर रही हूँ. Female, I cannot travel in field work. I not go in remote areas. मैं remote areas में जाके काम नहीं कर सकती. मैं ये नहीं कर, मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी मैनेजमेंट में इंश्योर हमें किया जाता है और साथ मोटिवेट किया जाता है. इवन आई विल टॉक अबाउट माई सीईओ कि वो भी इस चीज में, मतलब वो हमेशा इक्वल राइट्स, मोटिवेशन पंप करेंगे, ड्रैग करेंगे, नो गो अपॉर्चुनिटी है. इवन इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स बहुत सी ऐसी आती है
अभी तक मैंने अटेंड नहीं की, बट मैंने इस चीज को लाइव एग्जांपल है देखा है कि उन्होंने वुमेन को ही एम्पावरमेंट किया वहां पे भी। यंग लीडर्स, यंग बच्चों को, यंग लड़कियों को, शायद उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आज मेरे में जो कॉन्फिडेंस है, मैं मतलब सिटी टू सिटी अकेले भी ट्रैवल कर लेती हूँ, लेट नाइट भी ट्रैवल करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ पीपीआई। एंड दिस इज वेरी ट्रू कि ये कॉन्फिडेंस देने वाला मुझे पीपीआई है। रिमोट एरियाज में जहाँ पे शायद एक ऑर्डिनरी लड़की, एक ऑर्डिनरी फीमेल शायद डरेगी जाते हुए कि मैं अकेली कैसे जाऊँ, लेकिन पीपीआई इतना आपको कॉन्फिडेंस देता है, इतना आपको सिक्योर फील कराता है, और आपको खुद के ऊपर बिलीव करना सिखाता है कि नो, यू यू कैन डू इट। तो एग्जाम्पल्स है, अभी जैसे मेरी प्रमोशन हुई है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया मुझे मेरे सीईओ ने, ऐसा नहीं, पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे चेक एंड बैलेंस किया कि वाकई में क्या मैं तैयार हूँ मेंटली, देखा कि इसको तैयार कैसे करना है इसके लिए। उसके बाद लाइक दिस इज आई थिंक और पीके लाइफ saying मैनेजमेंट के सामने बैठ के कि whatever I am today, I'm because of my organization. Right. To repeat and sum it up, that like she was a raw, और उस रॉ को लेकर पहले उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है inclusivity की वजह से, right? Like he included and then he encouraged, and not only CEO, but already ऐसा culture, ऐसा environment वहां पर create हो चुका है that the whole team would be working on this thing, है ना? और Has played a vital role, major role. awesome. Awesome. So I know you will, I don't think that you can do this. Wow. I think dealing I with like that mixed statement. matters, Thank you. mixed matter for males as well and for me females as well. Yeah. Not like oh, I'm just a female nature. Hmm. Hmm. Great. So it is written here, stats दिया गया वो ये है, इंक्लूजन अगर की जाती है ना, तो आपकी जो एंगेजमेंट है एम्प्लॉयज की, वो 93% तक इंक्रीज कर जाती है। सी, लाइक आपकी एग्जाम्पल फ्रॉम द रियल लाइफ सिनेरियो, कि अभी आप वहां पर इंक्लूड ना किए जाते उस तरह से। इंक्लूसिविटी wasn't to hire you. Inclusivity is about giving you the opportunity to explore yourself, right? To practice and bring on the table your talents and let them be refined. उनको पॉलिश किया गया, अब उसकी वजह से you are promoted. Already, isn't it improved? कंपनी की जो रेपो है वो भी बनी है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी ग्रोथ है, वो और ज्यादा हो गई है। अब आपके अंडर कितनी और फीमेल्स आई होंगी, और इसी तरह से कितने और ज्यादा इलाके हैं जो काम कर रहे हैं। यू बिकम इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी। और इनकी सिंसेरिटी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्रीज हुई होगी विद दिस बिहेवियर। मोमेंट, अ मोमेंट प्लीज, यहाँ भी बात हो रही है। निदा, यू टॉक फर्स्ट, सॉरी सर। या कैन आई स्पीक नाउ? प्लीज प्लीज। या इनकी सिंसेरिटी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हुई होगी, उसकी हाँ, डेडिकेशन टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन और इंक्रीज हुई होगी विद दिस बिहेवियर। एग्जैक्टली. Exactly. The words we are getting to hear from her, this is like a home for her now. She feels safe and secure. She does not want to move anywhere. जो बातें अभी लग रही है उसकी वजह से, है ना? Yeah. So अभी सर प्लीज आप कहिएगा, इनके सीनियर बैठे हुए हैं यहाँ पर, अभी वो बताएंगे। We have only 18 versus 15. But we having an expressive project. Even if we have more than 50 modality. So let's keep having that. Awesome. See, so this is how the inclusion environment, brings about a difference where it makes people feel valued. Next is diversity. So, Nida, would you like to talk about diversity, what it is in the organizations, and how do you, um, appreciate it? I'll share an example with you. We were hiring for sales executives.
एंड हम्म। वी वर डूइंग दैट फॉर एन एरिया जो कि कोरंगी का एरिया था. वी वर डूइंग हायरिंग फॉर दैट. And there was this guy who was transgender. He came in and he came for an interview. और वहाँ का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऐसा था नहीं कि ट्रांसजेंडर को हायर किया जाता. बट देन उसकी स्किल्स ऐसी थी दैट वी डिसाइडेड दैट वी शुड प्रमोट हिम. इट्स ओके. और उसको हमने हायर किया और उसको हमने प्रमोट भी किया. और उसकी स्किल्स वाकई में इतनी अच्छी थी कि उसने आगे फर्दर ग्रो किया. Awesome, thank you. मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी. आपके ख्वाजा सरा जो है, ये अगर इनकी हिस्ट्री में जाएं तो ये बड़ा लाइक वैल्यूड और अच्छी जगहों पे महलों में होते थे, है ना. सो अब उनको इतना ज्यादा वो कर दिया गया है. लाइक बीइंग ट्रांसजेंडर बाय नेचर इज नॉट देयर फॉल्ट एट ऑल. सो वो कहाँ जाएं, वो क्या करें. और यही एक बात कि जब हम डाइवर्सिटी को वेलकम नहीं करते हैं तो वो मांगने पे मजबूर हो रहे हैं. वो उन चीजों में और सोसाइटी में करप्शन बढ़ रही है. दे डोंट वांट टू स्टडी, दे डोंट वांट टू बी एजुकेटेड. लेकिन जहां हम उनको मौका दे रहे हैं वहां पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में पीपल वैल्यू जो है वो भी प्रमोट हो रही है. राइट. Like they are the creature of the creator, number one. So we are valuing fellow human being. मैं यहाँ पे ये बात करना चाहती हूँ, the whole in the whole world, what actually you are born to do and who actually you are, right? So you are the topmost creation. राइट. और अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस में सब कुछ कर देते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं पैसे के एतबार से, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के एतबार से, ठीक है, लेकिन अगर लोगों में वैल्यू ऐड करने के एतबार से हमने कुछ नहीं किया, और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दुनिया में, आई थिंक वी हैव डन नथिंग. राइट. सो द पर्पस ऑफ अ पर्सन इज टू ऐड वैल्यू टू द अदर पर्सन्स लाइफ. और जब हम बात करते हैं आपकी इस पोजीशन की, तो मी बीइंग फ्रॉम द लीडरशिप पर्सपेक्टिव, मैं ये बात करूंगी कि लीडर इज अ पर्सन जो दूसरों में उसकी वैल्यू ऐड करता है. और जो एचआर के लोग हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के वो लीडर्स हैं जो जब उनको रिक्रूट करते हैं, तो आजकल तो रिक्रूटिंग में आप लोग बहुत सारे सवाल नहीं कर रहे होते, है ना. यू आर आस्किंग लाइक जनरल क्वेश्चंस नहीं कर रहे होते हैं जो वैसे होते थे. यू वुड बी आस्किंग द रैंडम थिंग्स जिसमें जाकर आप एक्चुअली उनको देख रहे होते हैं कि हाउ मच टैलेंट दे हैव एंड व्हाट एक्चुअली दे कैन ऑफर टू योर ऑर्गेनाइजेशन. ये देख रहे होते हैं ना. और आप ये देख रहे होते हैं कि लॉन्ग रन में ये शख्स कितना प्रोडक्टिव हो सकता है. एंड इट्स नॉट ओनली दैट यू आर वांटिंग देम कि वो सिर्फ इतना सा आए कि वो जिस पोजीशन के लिए आ रहे हैं उसी पे फिट होते हो. यू वांट थिंग्स इन देम जो एक्स्ट्रा हो. राइट. और मल्टी टैलेंटेड टाइप. यस सर प्लीज. या या It's not about getting with putting the technology learner, या but it's helping you where they can या learn. एग्जैक्टली exactly. और जब आप उनको ये सब कुछ देख के हायर करते हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप आने वाले वक्त में उसको रिफाइन करेंगे, है ना, उस रॉ को. और फिर वहां से जो है वो यू आर पॉलिशिंग देम, और उस पॉलिश करने में यू आर एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू देम. सो व्हाई नॉट द ट्रांसजेंडर्स, व्हाई नॉट द डिफरेंट रेसेस, व्हाई नॉट सीइंग दैट the disability does not mean, right, that they like. अभी तो आपको पता है कि ये वर्ड भी नहीं यूज किया जाता है. वहां पर डिसेबल वर्ड जो है अभी कंडेम किया जाता है. सो द वर्ड एक्चुअली इज बीइंग यूज्ड एज डिफरेंटली एबल. राइट. कि अगर ये एक डिसेबिलिटी है तो उसमें दूसरी एबिलिटी भी है. इसलिए रादर ये वर्ड जो किसी भी तरह की लाइक इवन लाइक हम बात कर रहे हैं ना फेयर वर्क प्लेस की हवाले से, तो ऐसे वर्ड्स भी कंडेम किए जा रहे हैं जो वर्ड्स वैल्यू ऐड नहीं करते, जो डिस्करेजिंग वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स जो हैं वो किसी को पिलिटल करते हैं.
सो इवन इनका भी ख्याल अभी रखा जा रहा है, इसलिए डिफरेंटली एबल्ड लोगों को साथ में लेके आना और उनकी बात करनी। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब डाइवर्स टीम आपके पास आती है तो वहां भी ये स्टैट्स लिखे गए हैं कि डाइवर्स टीम आउट परफॉर्म बाय 35%। एक जैसी सी टीम होगी तो उसकी परफॉर्मेंस फर्क है, लेकिन डाइवर्स टीम जिसमें आप कह लें आप फीमेल्स को ऐड कर लेते हैं, अगर ट्रांसजेंडर है आप उनको ऐड कर लेते हैं, जैसे निदा ने अभी अभी शेयर किया है कि वहां मौका दिया गया, एंड आई एम सीइंग कि कराची में बहुत ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। राइट, मैं मैम गजाला शफीक को भी जानती हूँ, शी इज वर्किंग। तो आप देखें कि वो कितना उस आइसोलेशन में है ट्रांसजेंडर्स, और वहां से निकल के आ रहे हैं और कितना चीज फर्क हो रही है। सो इट्स नॉट अबाउट दिस अलोन, लाइक डिसेबिलिटीज के साथ जो लोग हैं वो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, हम उनकी उस एबिलिटी को देख नहीं पा रहे होते हैं, या कई बर्तबा डिसेबल डिसेबल सुन के अपने लिए वो उस एबिलिटी को अपनी एनहेंस नहीं कर पा रहे होते हैं या उसको दिखा नहीं पा रहे होते हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं, मेंटल वेलबींग पे हल्की सी बात करते हैं, बट ब्रदर जेम्स इज गोइंग टू एलैबोरेट इट। सो यहाँ पर है सपोर्टिंग एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल हेल्थ। ये कल भी बात हो रही थी कि पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं था, लेकिन नाउ इट इज हैपनिंग, और अभी इस चीज का ख्याल किया जाता है। तो अगर कोई लाइक नहीं आया और या आ रहा है और वो बहुत साइलेंट हो गया, बहुत खामोश हो गया है, तो वो एम्प्लॉय जो पहले बड़ा मतलब चिल था, बड़ा अच्छे से सबके साथ बात करने, लेकिन अगर एक फेज आ गया और वो बड़ा क्वाइट हो गया, तो ये नोटेबल बात है, ये नोटिस किया जाना चाहिए कि क्या चल रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो गई है, तो उसको डांटने की जरूरत नहीं है, बिहाइंड द सीन्स जाने की, स्क्रीन के सामने जो नजर आ रहा है उससे पीछे जाने की जरूरत है। एंड आई रिमेम्बर, यहाँ पे क्विकली मैं बताऊंगी, हमारे एचआर मीटअप होता है क्वार्टरली, और वहां पर एक पैनलिस्ट आई, एचआर एक्सपर्ट, एंड शी सेड अभी कल ही आई रिसीव्ड अ ह्यूज बुके विद द नोट ऑफ थैंक्स, और कहती हैं कि क्या स्टोरी है उसके पीछे। वो ये है कि 2 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले, आई थिंक 2 हफ्ते पहले उनके कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई थे, और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो गई, सब कुछ, यू नो, शी टुक हर आउट ऑफ द एनवायरमेंट, और उस एनवायरमेंट से वो बाहर ले गई ओवर द कॉफी, और वो हंस रही थी, कहती है मेरे तो इतने पैसे भी नहीं लगे, चंद 100 रुपए ही लग गए। एंड यू नो शी टुक हिम आउट, और जाके वहां पे जो है ना वो इनफॉर्मल वे में बातचीत शुरू कर दी, और कैसे हैं, घर पे सब कैसा है, की सेहत कैसी है, सब ठीक चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई गेस्ट वगैरह तो नहीं आए हुए हैं। राइट, और इसी तरह करते करते व्हेन ही फेल्ट एंड ही केम एट ईज विथ हर, तो उसमें जाकर ही टोल्ड हर कि किस तरह से ही स्ट्रगलिंग विद हिज मैरिटल लाइफ, and he was like they were fighting every day, and they were at the edge of concluding it. And then she said how could she help him, like वो उनको ब्रेक देना चाहती हैं। What else she did, सारी बात सुनने के बाद उन्होंने उनके काम लाइट कर दिए, एंड शी asked कि आप अभी थोड़ा टाइम लें, उनको रिलैक्स किया ऑफिस की तरफ से थोड़ा, और उनके काम दूसरे साथियों को देना शुरू किए, और साथ साथ में उनकी काउंसलिंग जारी रखी। 2 weeks after, not only the marriage got saved, but she received this bouquet, right? So, like this job, what we are talking about is beyond this, कि आप जो है वो 9 to 5 पे आते हैं, और बस उसी टेबल पे या उसी चार दीवारी के अंदर जो बातें हैं, फील्ड से मुतालिका रिपोर्टिंग है और ये सब कुछ है। इट्स अबाउट एडिंग वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग्स। और अगर आपके काम के स्ट्रेस में सर दर्द होता है, दूसरे के भी होता है। अगर आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन नहीं देख सकते और आप अफेक्ट होते हैं, तो दूसरा भी होता है। अगर आपकी फैमिली है तो दूसरों की भी फैमिली है। नॉट अ मस्ट एवरीवन इज मैरिड, बट दे हैव देयर ओन चैलेंजेस।
right? So it is really important to know this thing. Okay, one could be going through this mental sickness, mental trouble, कोई trauma हो सकता है. So वो सारी चीजों में, सारे सीजन में we need to help them out with this. और पहले इस पे नहीं हो रहा, लेकिन अभी इस पे काम हो रहा है. अब अगेन आप ये देखें कि जो स्टैट्स यहाँ पे शेयर किए गए हैं, it's alarming. है ना? It's terrible. $1 trillion are lost annually. Why? From depression, anxiety globally. The most important thing I think is everything. Once the one of your body Hmm. and what you see, we more talk about the negativity every day, every moment. Hmm. That makes you feel better. Exactly. So, like इस पे हम आगे जाके solutions पे भी बात करते हैं. पर आई थिंक यस, ये वाली सारी बातें, और उसमें आकर ये भी आ जाता है कि अगर की कंसल्टेशन कोई चाहिए तो वो सजेस्ट करते हुए हम भी हिचकिचाते हैं, और कोई ऐसी कंसल्टेशंस लेते हुए भी हिचकिचाते हैं, है ना? कि पता नहीं जी इसको क्या हो गया. क्या लोग सोचेंगे. एक ये बड़ा मसला है यहाँ पर कि दूसरे के दिमाग से बहुत सोचा जाता है कि दूसरा क्या सोचेगा उससे ज्यादा. सो ग्रीवेंस हैंडलिंग पे पूरा टॉपिक है आगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं जी. सो वेल, मेरे पास ठीक है. आप लोग का ग्रीवेंस हैंडलिंग में क्या एक्सपीरियंस है? गो अहेड. Sometimes it's only feelings so हम्म. not all happening after the हम्म. coming up. हम्म. What is happening, not in not about. हम्म. Even as a group, you next time you do some conversation. हम्म. Is it over? No, I let you come and maybe we will. Let's talk about My question is from here कि like ये बड़ा वो हो जाता है कि आप तो फिर स्टिल ये बात आ जाती है कि लाइक अगर जब आपने सेटल किया है तो मेनी टाइम्स जो है वो अपेरेंटली तो सेटल हो गया है, कहीं ना कहीं किसी के दिल में वो है कि लाइक यू हैव फेवर्ड समवन एल्स. तो ये बहुत क्रूशियल जॉब है, राइट? लाइक यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो हाउ डू यू हैंडल दैट स्टिल? I think just experience same with it. Yesterday I was dealing with a matter, previous handling my organization. I was saying हम्म. इश्यू सामने आया स्टाफ में, वो यहाँ से जाती मैं पहले इसको सॉल्व किया, तो उसमें ये था कि अगर someone has any complaint or other person or other staff member, तो ये सबसे पहले जरूरी है कि दोनों को इक्वल राइट्स मिले, दोनों की मेंटल सेटिस्फेक्शन बड़ी जरूरी है. उसको ये ना फील हो कि कोई फेवर ज्यादा किया जा रहा है. जो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स है, ऑफिशियली अगर हम उसको हैंडल करें, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन दोनों को इक्वली ट्रीट करूं, कहीं पे किसी एक को ज्यादा फेवर ना हो, ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स के मुताबिक. You are a female. My question is, sorry, I'm listening. We are listening. My question is, do you favor women? And I understand, but when I'm asking, मेरा मतलब ये है कि over bias होके. ओवरस्ली भी बस हाँ बिल्कुल इक्वालिटी की बेसिस पर जो है मैं अगर जहाँ पे ये देखती हूँ कि फीमेल्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो वहाँ पे भी मेल्स के साथ भी आई थिंक ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए. Yeah. उनको भी
कहीं ना कहीं देखना है उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को देखना चाहिए। हम फीमेल्स को फेवर करते हैं कि अगर फीमेल्स का रेशियो बहुत ऊपर ले जाते हैं और मेल्स जो है उनकी डिग्निटी को वो अफेक्ट होती है चीज। तो फिर बात है ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स की लिए जो शेयर इक्वालिटी मेल्स के लिए जो राइट्स है वो भी फीमेल्स के लिए। जब हम पर्सनल स्पेस में जाके मुझे अगर दोनों काउंसिल करना पड़ता है सेपरेटली उनके मुताबिक, मतलब एज ए न्यूट्रल पर्सन, बिकॉज यू नो एचआर का कोई जो एक स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता, मतलब उनको मेल्स के साथ मेल्स की तरह बात करनी होती है, उनको उस लेवल पे डील करना होता है, फीमेल्स को फीमेल्स की तरह। तो आई मैं पर्सनल स्पेस पे भी उसके बाद कोशिश होती है कि उनको सेटिस्फेक्शन दूं, और ताकि जो बीच में कोई ग्रज है या कोई बात आ जाए कि नहीं, वो क्रिएट ना हो, क्योंकि फिर वो टीम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे। तो ऐसे तो रोज केसेस आते हैं हमारे पास। तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करें, वेरी इंपॉर्टेंट। So that's my critical question to everyone. um, इसको और से सोचें और देखें, क्या आपको लगता है कि खातन जो है वो जरा ज्यादा ग्रीव ओरिएंटेड होती by default? Yeah, like sometimes more attention seeker, और इसमें आकर इस तरह से, you know, yes, this is the realistic approach I'm talking with. Although I'm female. सेंसिटिविटी ज्यादा होती Mm-hmm. है, ग्रीवेंस के बात करें तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे लीड करती है, ज्यादा शिकायत में ज्यादा इजाफा मैं यही मतलब हाँ, सेंसिटिविटी। हाँ, तो मैं ऑफिस में काम करता था ना, तो एक फीमेल और एक मेल जो है फ्लैश आते हैं। हम्म, अब वो जो मेल है ना वो राइट, फीमेल राइट है नहीं। या अब वो ना मेल भी से आके पूछता है, अलग अलग परिवार की ना, ये इशू है हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है तो ऑफिस से पेश पर चला गया। अब आपके ख्याल में किसकी हाथ में आता होगा? मैंने कहा कि मैं बताऊं आप बिल्कुल राइट है, लेकिन फैसला उसके हाथ में होगा। क्यों? उन्होंने थोड़ी देर बाद मार्शल करना होगा। मैं यही जानना चाहती हूँ। हम अपने आप को सिंपलाइज करने के लिए या रोकड़ जब मीडिया को बनाते लड़ाई होगी, हम सीओ के सामने चले जाते हैं, उस सीओ के सामने चले जाते हैं रोकड़े तो मैं जीता। और अगर नहीं होगी और हमारे से बोलने भी फिर पॉसिबल है कि कोई फिर फैसला हो जाए। अगर वो फीमेल का मामला लगा, अगर जरा नहीं होना है ना, तो ये इंटेंशनली नहीं होगी कि कोई राइट, राइट, राइट। सो हम ये देखते हैं अगेन, यहाँ पर स्टैट्स हैं, वो ये है 70% ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट फेयर ट्रीटमेंट इज क्रूशियल फॉर लॉयल्टी। So a poor process erodes trust, causing disengagement and high turnover. Okay. वो मेकअप का क्या होता है वो एक्सपेंसिव, देखा अभी मैं सोना शुरू हुआ। So this is when the environment is, but still you have to go with the situation. आगे देखते हैं जी, the high cost of unaddressed grievances, इसको हम देखेंगे जी। अब में से आप इसको थोड़ा पढ़ते जाए। $1 ट्रिलियन की बात है। financial loss, हाँ, annual loss from voluntary turnover in US lawsuit defense post Q3 average of like 75 pounds and total for 5,125. या सो आप देखिए, डिफेंस डिफेंस में ही जो है ना, लॉ सूट्स के, वो इतना पैसा लग जाता है, तो ये लॉस है एक्चुअली। तो सबसे पहले कि जब ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया जाता, तो हमारे यहाँ तो कोई कम ही निकल के सू करता है ना, लेकिन वहां पे ये बात हो रही है अगेन, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट हम बात कर रहे हैं ग्लोबली, अगर इस चीज को हम देखें तो जहां जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जहां लोग जाते हैं और बात कर सकते हैं, तो ये है जो फाइनेंशियल कॉस्ट एनुअली आ रही है। सो अगर यहाँ होना शुरू हो जाए तो आई डोंट नो फिर वहां मतलब कितना ज्यादा इसमें इजाफा हो जाए। जी नेक्स्ट प्लीज।
about 70% is like low morale. Or this simply when grievances are ignored. Productivity drops 20 to 30%. कोई वाकया, कोई ऐसी बात जो आप इससे रिलेटेड सुना सकते हैं, बता सकते हैं? मैंने कहा I was in Northern International, हम्म वहाँ हमें जॉब में जॉब की वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर को हमारे सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर में हायर कर दिया। हम्म तो उस पूरी बिल्डिंग में कॉल सेंटर पर फर्स्ट फ्लोर पे एग्जाम के लिए रिसर्च करते हैं। तो आप पूरी बिल्डिंग को पता था कि ये सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर तो वो उसमें जब भी उसने कॉल फिर वो पब्लिक वॉचिंग का बारे में कुछ ऑफिस के अंदर का लेकिन वो सिविल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई है इंडियन प्लेयर्स के नीचे तो हम लोग जब देखते हैं यहाँ पे काम करते हैं उसमें तो इस वजह से आई फील कि उसका ऑब्वियसली हम्म डाउन हुआ। एग्जैक्टली और उसी मोराल के डाउन होने की वजह से फिर वो वापस उस पेशे में चले जाते हैं, राइट, जिसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। और फिर इसी तरह से है, अगर हम बात करें वुमेन की, तो वो कई मर्तबा में इसमें चली जाती हैं। फिर कई मर्तबा ये है, लाइक आई नो अ गाय एंड यू नो ही इज क्वालिफाइड, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में भी लाइक बीएस किया है। इसी तरह से ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो लाइक कम्युनिटी वेलफेयर के हवाले से है, बट यू नो ही स्टटर्स। सो नेचुरली उनका मसला है कि वो हकला के बात करते हैं। अब उसको कितनी देर लग जाती है अपनी बात करने में, और इसकी वजह से कई जगहों से लाइक ही इज बीन रिजेक्टेड एट द इंटरव्यू। कई जगहों पे ही वाज रिजेक्टेड फॉर द पोजीशन। और इस तरह से वेयर बाय लाइक आई नो हिम पर्सनली, वेयर आई sit with him, तो उसमें आई हैव हर्ड इतने ग्रेट एंड ब्राइट नहीं है कि वो बैठे हुए हैं, वो टाइम जाया कर रहे हैं, जबकि वो जवान जो है ही हैज सो मेनी मतलब थिंग्स एंड एबिलिटीज टू ऑफर। सो इस वजह से ये चीज हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस में अगर लाइक ऐसी बात आती है, अनएड्रेस्ड ग्रीवेंसेस हैं, हम एक्चुअली उस पर फोकस्ड हैं, तो वहां पर आकर फिर क्या है, मोरालिटी डाउन हो जाता है कि 70% यहाँ पर बात हो रही है कि वहां पर प्रोडक्टिविटी 20 से 30% इफेक्ट हो जाती है, राइट। सो अगर आप ये हैंडल नहीं करते हैं तो वो आपको लगता है कि शायद ऐसे ही आई गई बात हो गई है, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो दिल में रहे। या या इस तरह का हम उसको इग्नोर नहीं नहीं बोलेगा उसकी मोटिवेशन है जैसे हम उसको मोटिवेट करना है कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू दिस इज तो उसको वो मोटिवेशन करेंगे उससे उसको दूर करना है इंस्टेड कि वो करे वो मोटिवेट करता है। मैं आई वाज वर्किंग विद द हॉस्पिटल वो कहते हैं कि मरीज से नहीं मस्त से मतलब करते हैं मरीज से मतलब नहीं होना चाहिए चीजों से मतलब होनी चाहिए इंसान से मतलब नहीं। जैसे कहा जाता है कि खुदा गुनहगार से प्यार करता है, गुनाह से नफरत। या सो आगे रेप्यूटेशनल डैमेज, जी प्लीज। ये ओवरऑल बात है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर ग्रीवेंस हैंडलिंग नहीं हुई है तो ये बात वहां तक नहीं रहेगी। कोई भी शख्स है वो घर जाता है, उसका फ्रेंड्स का सर्कल है, और फिर कई बार क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो है और करीब की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ना कोई ताल्लुक वास्ता रखती है, वहां पर उसके राब्ते ताल्लुकात हैं। तो किस तरह से बातें फिर फैलती भी हैं
और इट्स नेचुरल, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उसको बाहर को निकालना है ना, वो अंदर नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसने। और ये चीजें फिर ग्रेजुअली, और फिर अगर आपने एक बार नहीं किया है, एक के साथ नहीं किया है, दूसरे के साथ नहीं, तो फिर ये चीज बढ़ती चली जाती है। जी सर, आप यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहते वो हैं? या या हम्म सो या नेक्स्ट प्लीज। हम्म सो लिटिगेशन रिस्क, कितने ज्यादा मामले ऐसे हैं जो केसेस में चले जाते हैं, और जब वहां पर केसेस में हैंडल हो रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ब्लैकलिस्ट भी हो सकती है, राइट। सो नेगेटिविटी पे आपसे बात कर रहे थे, तो मैं वहां पे ये एक स्टेटमेंट जो बोली जाती है ना, थिंक पॉजिटिव डू पॉजिटिव हैव पॉजिटिव, थिंक नेगेटिव डू नेगेटिव हैव नेगेटिव। सो Ma'am, ये हो जाता है। यस, गो अहेड प्लीज नेता। do we have any such example जहाँ पर organization blacklist हुई हो in Pakistan? तो है सर, आप बताएंगे या आप बताएंगे? आप लोग ज्यादा तजर्बेकार है ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के हवाले से। ब्लैक लिस्ट हुई हो कोई ऑर्गेनाइजेशन? I don't have a case study, but yes, I am bringing the matters on the table. Our discussion basis को इसीलिए रखे so that I have the experts sitting here, they can share. So I hope आपको आवाज आ रही है। जी प्लीज सर। हम्म हम्म So would you like to mention the name? It's Balochistan AIDS. Can you hear me? Did you get to hear the name? Balochistan AIDS Network जो है। All right, because I wanted to see कि पाकिस्तान में किस तरीके से हो रहा है, एक्चुअल में blacklist हो भी रही है ऑर्गेनाइजेशन for mishandling grievances. रीजन भी बताने लगे हैं डैनियल साहब। मुझे आवाज नहीं आ रही डैनियल साहब की। अच्छा, एक सेकंड को इसको होल्ड कर लेता हूँ। जी मिस निदा, अभी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वाह। बिल्कुल। उनका रीजन क्या था? तो जी एड्स जो है, मतलब जो भी मरीज थे या जो भी इफेक्टीज होते थे पेशेंट्स, तो उनका नाम जो है वो डिस्क्लोज करने की इजाजत नहीं होती, वो करना भी नहीं चाहिए। लाइक कि जी वो फिर क्या करते थे कि जी उस डाटा को लेके दे आस्क देम कि जी हम आपके नाम पे जो है वो फंडिंग ले रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। फेक उनके साथ जो है नेगोशिएशंस करके और उसको उस डाटा को वो रीयूज करते थे मुख्तलिफ फंडिंग्स के लिए। कि जी एक्स वाई जी एक शख्स है, तो उसकी एक डोनर से ले लिया, आप दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, और तो उसका नाम जो है डिस्क्लोज कर दिया जाता था। और सबको पता होता था कि जी फला मिस्टर फला फला जो है ही इज अफेक्टेड विद एड्स। तो एक तो ये है कि जो उसके माशरे में कोई प्रॉब्लम आ जाता था कि नहीं, वो मतलब लोग बोलते थे नहीं इसको एड्स है, इससे दूर रहो, ये करो वो करो। तो उस हवाले से उसकी रिपोर्ट हुई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, इट इज इन इस्लामाबाद, और उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। सो आई नो That's great. Yeah, and now I remember about another organization. I don't know if you know the name, Exact, और ये यहीं पर थी इस्लामाबाद पे। और they started as a telecommunication company, right? और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के तौर पे उन्होंने यहाँ शुरू किया। लेटर दे टर्न्ड आउट टू बी यू नो एन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो यूनिवर्सिटीज के साथ आपको राब्ते करवाती है, डिस्टेंट लर्निंग होती है यहीं से, फिर वो आपको डिग्रीज इशू करते हैं
ये सारे मामले, सो इफ यू रिमेम्बर, तो दे वर ब्लैकलिस्टेड एज वेल, सो उन पर भी ये काम हुआ था एग्जैक्ट। और उनका तो बाकायदा लाइक उसी से अर्न करके उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग अपनी बना ली हुई थी, या ये जिस तरफ गीगा मॉल है उस रोड पे, और इतनी बड़ी बिल्डिंग, एंड दे वर वेरी वेल नोन। उन्हीं में से कुछ लोगों ने फिर ये पोल चैनल जो है वो शुरू किया है। सो जो है बहुत कुछ था जो वो इस तरह, फिर डिग्री वेरिफिकेशन उन्होंने कहना शुरू कर दी। खुद ही डिग्रीज देते थे और बाद में दूसरी तरफ कॉल आ जाती थी, जी ये डिग्री वेरीफाई करवाएं, फिर एक वो जो है नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाता था। तो इस तरह से लाइक दे वर अर्निंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द पीपल, या that the CEO of that company is still in the jail. इन द जेल, या। सो ये एक और एग्जाम्पल है। सो आई थिंक हम अभी आगे बढ़ते हैं, और या इस पे हम बात कर रहे थे। जी, पिलर्स ऑफ एन इंक्लूसिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म। सो ये पहला पिलर जो है इट्स एक्सेसिबिलिटी, और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसपे अभी दानियल साहब ने भी बात की है, और फिर फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, नॉन रिटेलिएशन पॉलिसी। तो इस पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। एक्सेसिबिलिटी, जी। नॉट ओनली रीडिंग, बट लाइक आई एम गिविंग यू द टाइम, आप देखें इसको। ये पिलर है इंक्लूसिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म का। सो इसको देखें, इसके मुताबिक कोई एग्जांपल है तो सीनियर शेयर कर सकते हैं प्लीज। हम्म। कि हमारे CEO है, इसमें हमें ज्यादा ओवर लो पॉलिसी हम्म। फॉर एवरीबॉडी, हम्म। तो उनके पास मे भी किसी भी टाइम चल रहे हैं, सिर्फ चीज में बात करते हैं। We will always leave this work. हम्म। So that person, whether he is whether he is a book or हम्म। whether he is a senior manager. हम्म। Talk to me, problem क्या है? हम्म। So he always listens. हम्म। और हमें कहा गया कि जी इट्स मैनेजर, हमें कहा गया है कि जी आपने अपने दरवाजे बंद नहीं रखे, हम्म। दरवाजे खुले होने चाहिए। हम्म। एटलीस्ट लोग आप वो इतना होना चाहिए कि एक्सेस तो आपके पास होनी चाहिए, हम्म। उनके पास भी खाली होनी चाहिए। हम्म। So that is accessibility. It is to use channel. That is a great channel for us. हम किसी भी channel के लिए वो कर रहे हैं। तो ऐसा भी हुआ है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया मेरे रात को 10 बजे अगर हम्म। राइट, लिसन टू। मुझे रात को 10 बजे अगर मुझे कोई काम आ गया तो अरे ना ठीक मुझे मुझे कॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हम्म। आई कॉल। हम्म। तो देखिए, पहली चीज ही ये है कि आप एक्सेसिबल हो। और अगर आप एक्सेसिबल ही नहीं है, आपने इतना एक वो कहें कि बैरियर रखा हुआ है आपके और एम्प्लॉय के बीच में, टीम के बीच में, कि वो सोच भी नहीं सकते आप तक आने का, तो ग्रीवेंस हैंडलिंग तो दूर की बात रहेगी। किसी भी तरह का मुझे कॉल करे, मुझे कॉल नहीं आ सकता, लेकिन काम बंदा हम्म। आई कॉल है। हम्म। जिसकी वेंडर से बात कर रहे हैं ना, मेरी बात करता हूँ, वेंडर से जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब मुझे ओपन करना, या। एचआर के अंदर एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं ग्लास डोर पॉलिसी, जो लोग इम्प्लीमेंट किया जाता है कि आपने देखा ग्लास किसी भी कमरे के बाहर डोर बना भी होगा ना, तो ट्रांसपेरेंट होता है नॉर्मली। और ये जो कमरों की जो स्टेटमेंट है पॉलिसी है खत्म होती जा रही है। लोग दुनिया भर में इसको अपना रहे हैं ग्लास डोर पॉलिसी को, कि लोगों की एक दूसरे तक एक्सेस हो जाए इजीली ना। मेंटली भी कोई बैरियर ऐसा ना हो कि कोई दरवाजा नॉक करते हुए सोचे अंदर जाने से और इसको एक बड़ी जो एचआर कंसल्टिंग फर्म है दुनिया भर में, यूके में है, उसने इसको अपना इस ट्रेडमार्क को पेटेंट भी करवा दिया है। ग्लास डोर कभी भी यूरोप में अप्लाई करेगा ना जॉब के लिए, कैरियर के लिए, तो ग्लास डोर के जरिए से वो कर सकता है।
काफी हद तक पर ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी भी है अदरवाइज अप्लाई करते हैं, मेरे मैंने काफी अप्लाई किया वहां से। ऑर्गेनाइजेशन पे ये बलूचिस्तान में जिसका डैनियल साहब ने जिक्र किया, तो रीजन क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी। तो वो था। सो यस, अगर आप किसी भी तरह की कोई आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर है, क्या है? इम्प्लीमेंट क्लियर पॉलिसीज प्रोटेक्टिंग रिपोर्टर आइडेंटिटी। सो एट टाइम्स क्या है, आपको किसी ने कोई बात बताई है ना, तो उसकी बात को भी अंडरकवर रखना और उसके नेम को स्पेशली, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। I think in HR role, या because this is an HR training, so basically like each other questions. एग्जैक्टली। Charity is very not practice as well, मुझे लगता है because जिस रोल में हम हैं HR प्रोफेशन में, इसमें आपको बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है, जो कि एक चैलेंज होता है आपके लिए रखना। स्टाफ और बहुत सी चीजें जो इसके ऊपर काफी ज्यादा चैलेंजेस देखते हैं। बहुत हमें कुछ चीजें होती है जो हम नहीं हैंड ओवर कर सकते, कुछ डिपार्टमेंट्स के मदद करनी पड़ती है। अगर वो किसी भी तरह से लीक हो जाते हैं इंफॉर्मेशन, तो हमें उसको हैंडल करना काफी हमारे लिए चैलेंज होता है। इसके ऊपर जरा आई वांट टू डिटेल डिस्कशन। Exactly. Take your time. Let's do it. And I believe ये एक ऐसी चीज है जिसमें आकर एक चीज हम कहते हैं ना, वर्क प्लेस रिलेशनशिप पे। सो वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो होता ही है, लेकिन वर्क प्लेस रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाती है, और उसमें आकर फिर कई मर्तबा पीपल थिंक लाइक दे आर वेरी क्लोज टू यू, और ये बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। यू नो, अगर कहीं पर भी हल्की सी भी बात लीक आउट हो जाती है। So I'm not going to go in details, but like I have experienced कि ये वाली चीजें different organizations में, कि मतलब it was really surprising कि how come you know it? ये बात तो सिर्फ वहां पता थी। ये तो वहां पर। In March, when they asked me what it is, I remember the concept of the payroll to those qualities. In I, I got those papers from his table. He went downstairs, he got those papers, and he got what himself. He knew that this document is not better. You have to return those. Why do you want to do that? Yeah. Because settings are more, I think, these are system confidential. Yes. But I think it's for me. Because I setting it's for her. But when I setting, if that comes to everybody. So उसकी इतनी है तो मेरी इतनी क्यों नहीं? Maybe it has some another responsibility, another thing, another turnover. जी उसकी इतनी कर गई है, तो दूसरी को क्यों पता होनी चाहिए? That is problem for HR, problem for organization, especially problem for persons. And if I get an amount in cash, and I'm going to know, if somebody knows, he knows it. आपको उसको तनख्वाह मिली है, वो लेके जा रहा है, लाखों रुपए उसकी जेब में होगा, वो रास्ते में कोई भी मिस हो सकता है उसकी जिंदगी को खतरा भी हो सकता है। एग्जैक्टली। फिर कैरेक्टर पे बात आ जाती है, कई चीजें ऐसी हैं, है ना, इस तरह के मैटर्स जो रिजॉल्व करने पड़ते हैं। या या Many things, long-term contracts, short-term agreements, insurances, agreements, liabilities. quotations cannot we are getting any quotations from the vendors. Yeah. Because everybody knows that it is giving
बस अगर तो ये चीज दे रहा है तो ये तीन पोजीशन पर ही किसी को बता रहा है ना वो हजारों रुपए की दे रहा है तो 500 को करो Exactly. Yeah. तो ये तो जो payment documents, speaking the documents, तो ये चीजें मतलब दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट होते हैं उनसे चीजों की challenges. This is a very common challenge for us. Like we are dealing with it since 3 years. उसको हम जिस तरह handle करें हाँ बात कर रहे हैं लाइक मैं किसी से बात करूँ सर ऐसे ही ऐसे 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 फलाना ने ये कह रहे फलाना ने ये कह रहे तो इसको अगर मेरा आइडिया है कि ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं तो वो जवाब नहीं देगा वहां पे बैठा हुआ है ये कोर्ट में रखेंगे तो रिटन क्योंकि आपने इधर आके ये बात की थी तो आप ऐसा ही हुआ आप ऐसा हो गया उसकी अगली बात हमने सुनी नहीं थी हमने तो वहां तक सुनी जो वहां पर हुई उससे अगली बात तो हमारे पास दूसरी की हुई वो उसको कोट कर रहे हैं That is not good practices. इस तरह के challenges organization में इसलिए फिर हम इसको ये देखते हैं कि like you not have that workplace relationship, but you have to have the pro relationship, right? Professional relationship रहना एक वो otherwise workplace relationship जो है वो जरूरी नहीं है कि वो professional relationship ही है. You are there, but maybe you are not dealing with the things professionally. You have gone into the deeper things जो आपने friendliness में और इस तरह से कर दिया है. प्रो से हट जाते हैं. सो इन दिस प्रो से हट नहीं सकते. नेक्स्ट है फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी. या जरा आप इस पे बात करें प्लीज. ये ग्रीवेंस मैकेनिज्म का पिलर है. important. Okay, so then you talk very much and correct. You need to करना होता है impartial है. ये बताना भी है ना. तो आपके जो सिस्टम है उसके लोगों का ट्रस्ट होना जरूरी है. ना साइड नहीं ले रहे आप किसी की. अगर कभी भी जो फेयरनेस है ना वो होती है तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका आपके अंदर सिस्टम कैसे खराब हो गया है ना साफ रहते नहीं है. मैं जो बता रहा था इस होटल की बात है यहाँ पे अब इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है लोगों को एक आदमी मैनेजमेंट से एक आदमी जो जो मैंने ऑप्शन किए अब वो जो करें उसके मैंने कुछ लोगों से कुछ इसके कल मैं वैसे बैठा हूँ वो तो कर रहे हैं मैनेजमेंट ये स्टाफ है और जो रिटर्निंग गेस्ट तो मुझे हम दोबारा जाएंगे गेस्ट ये तो ये जगह है डिजाइन लेकिन तो फाइल में आया है या आपको एक कहना ये सरप्राइज किसको मिलेगा ओनर को मिलेगा ऐसा है जो प्रॉपर्टी इसने एस्टेब्लिश की के सालों की मेहनत के बाद प्रॉपर्टी आउट ऑफ पार्टनरशिप शिफ्ट हो गया है जो बिजनेस इसमें बनाया एस्टेब्लिश की एक को डेवलप की उसके पर ट्रस्ट है कि अभी भी कुछ आप अंदर तक आप सबसे जा रही तो लेकिन जब अगर उठेगा लोगों को उठाएगा उसके पता लगेगा कि कितना जरूरत है आपको उसकी कितनी बड़ी तो प्राइस करनी पड़ेगी इससे बिजनेस का क्या है साफ उसकी जो प्राइस सर्विस से खराब की है उसकी प्राइस को एग्जैक्टली ये हो सकता है लोग अपने गरीब साहब को देखे ना जो लोग अपनी गरीब साहब के पास खुद ही देखेंगे तो उसकी प्राइस नहीं देखेगा आप कैसे देंगे अपनी बेटी को लोगों को बताएंगे एक्सपीरियंस के लोगों को बताएंगे उन लोगों को बताएंगे अपने घर में कस्टमर है ना वो लोगों को बताएंगे आज कुछ अपने लोग आएंगे यहाँ. I think same for the organization. फेवरिज्म होगा कभी भी लोग आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा वो डाउटफुल होंगे और आपकी रेपुटेशन भी इफेक्ट होगी उससे. Exactly. That's a problem. Yeah.
जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ स्टार्ट होती है। और जब स्टाफ आपका अस्सलाम वालेकुम, टीम में मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। क्विकली समराइज समराइज करके रिपीट कर दें। तो या मिस्टर आपको आवाज आ रही है? अब हेलो थोड़ी सी आ रही है, बीच में बिल्कुल रुक गई थी आवाज, अब आ रही है। यस। जी। ये जो पॉइंट है, पिलर है हमारे पास, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे इसको देखें तो मुझे लगता है कि जो फेवरिज्म है एंड ट्रांसपेरेंसी, ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में फेवरिज्म है तो कभी भी अ, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, आपकी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं। आपके साथ उनके रिलेशनशिप अच्छा नहीं बिल्ड हो सकता, और उसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकती। और विद टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन की तरफ जाएगी, और आपकी रेपुटेशन भी साइड बाय साइड जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन की तरफ जाएगी। तो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी, इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। इफ it is for senior management, it should be for the second line management as well. किसी को भी वो एक होता है ना, एहसास कमतरी जो है वो आई थिंक एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी उसका वो आपको फीलिंग नहीं देनी चाहिए। वी शुड ट्रीट एवरीवन ऑन इक्वालिटी बेसिस। क्यों सर डैनियल? ये चीजें हम डिस्कस करते हैं पीपीआई में भी। अच्छा। हम्म तो कराची में वो देखकर मेरे पास कंप्लेन आई, जैसे मैंने अपने घर में चीजें रखी थी तो अब वो नहीं है, तो मैं घर में पूछा था तो अब वो नहीं है। मैं अपना ड्राइवर था, वो उसने हम्म घर से रजिस्टर किया। हम्म मैंने उनको बताया सर, आपका जो वो बुला देता है, वो हम्म बंदा छुट्टी में था, हम्म लेकिन नहीं वो गरीब था, वो ओवर टाइम कर रहा होगा, तो तो नहीं, तो कम्युनिकेशन तो गलत हो गया, हम्म मतलब वो प्रॉब्लम नहीं उसकी जो ये मैं उसको छेड़ूं इसलिए कि उसने कुछ किया है, और रिकॉर्ड में ऑफ है। वो खाली नहीं ऐसे कैसे हम्म दूसरे ये हमारे जो क्लासेस हैं उसके थ्रू करना चाहते हो खाली किसी को होगा तो जो कुछ गाड़ी के अंदर होता है वो भी हम्म तो उस चीज़ में तो सिर्फ हम्म नहीं दे रही है हम्म उसी तरह से हम्म बाहर पता चला कि वो अपने घर में भूल गया है वो चीज़ हम्म वो उन्होंने देखा कि मैं नहीं बोलूँ लेकिन वो अपने घर में भूल गया है। हम्म। बिल्कुल। तो ये इस पे जो अभी डैनियल साहब ने बात की है, अ, इनकी बात को बढ़ाते हुए जारा की फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी पे, तो अमूमन अगर चीजें आगे पीछे हो जाए तो वो फौरन से जो है वो कह लें कि आपका जो वर्किंग स्टाफ है, ऑफिस बॉयज वगैरह, उस पे चली जाती बात, बट यू हैव टू मैनेज दैट टू। सो अभी हम नॉन रिटेलिएशन पॉलिसी, दिस इज द फोर्थ पिलर ऑफ इंक्लूसिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म। सो निदा, आप इस पे बात करेंगे? Non-retaliation policy, what it is? It is actually to provide explicit protection for whistleblowers. लोग विस्ल ब्लो करते ही नहीं है, बताना नहीं चाहते, इसीलिए कि फिर उन्हें डर होता है कि अगर मैंने बताया मेरी अपनी पोजीशन जो है वो इनसिक्योर जब लग रही हो, तो फिर why would somebody do this? Yes, please. इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक तो जो रीजन होता है वो ये होता है कि उनको यही होता है कि बाकी लोग, रेस्ट ऑफ द पीपल या जिसके अगेंस्ट ये बात की जा रही है, दे विल गो अगेंस्ट मी ना, मतलब उनके एक ऑफिस
पॉलिटिक्स से लोग अपने आप को सेव करने के लिए इस चीज से बचकर चलना चाह रहे होते हैं। तो अगर इसका सेव हो तो हम हम्म एचआर पोर्टल्स वगैरह बना सकते हैं, जिसमें कोई कंप्लेन अगर डाल रहा हो तो नंबर, आइडेंटिटी, एम्प्लॉय की आईडी नंबर ना आ रहा हो। कुछ इस तरीके से हो सकता है। दूसरा जो चीज हमने एक इनकरेज की थी वो ये की थी कि वो हम्म अगर कोई भी बात है वो आकर शेयर करे, हर चीज, मतलब ओपन डोर पॉलिसी रखी थी हमने। हमने कहा था आप मतलब अगर किसी और डिपार्टमेंट का भी आपके माइंड में कोई चीज है या आपसे कोई आपका फ्रेंड वगैरह डिस्कस कर रहा है, तो आप यहाँ पर आकर हमसे शेयर कर सकते हो, और अपना नाम, मतलब उस आपका नाम कहीं कोट ना किया जाएगा, अदर देन सीईओ और एचआर। आपका नाम कहीं पे भी कोट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज मिसकंडक्ट हो रही है या कोई चीज अगेंस्ट हो रही है या अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है कहीं पे, तो आप किसी डिपार्टमेंट में भी, तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। देन हम इसको खुद ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। Okay. So you had this policy, right? और उस पॉलिसी का आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। अदरवाइज व्हाई वुड समबडी टेक करेज, और वो क्यों वो करेंगे? क्योंकि हर एक को यही होता है कि लाइक फॉर नाउ आई नीड द जॉब। और अगर कुछ ऐसा होता भी है कई बार सिचुएशंस में, इट्स लाइक इट्स नॉट ओनली कोई हरासमेंट का केस है तो उसी में किसी ने बात करनी है। समटाइम्स somebody is doing something with the funds, with the procurements, with the other things, right? सो इतनी सारी चीजें हैं। सो उसमें इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि जो है वो विसल ब्लोअर जो है वो सिक्योर फील करता हुआ जो है वो किसी भी बात को प्रोसीड कर सके। सो हम आगे कभी बढ़ते कभी हैं। दीज आर या ये समटाइम ऐसा होता है कि हम अपना जो एक्शन है वो इस तरीके से लेके अगले को पता भी ना चले कि हमने वो एक्शन लिया है। हम्म एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो नाउ अभी हम बात करते हैं डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन। सो व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से इसको जो है वो इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है? जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इट्स अबाउट रेस एज वेल। सो कैसे इसको ऐसे ग्रीवेंसेस को इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है? I'd like your input, please. यहाँ पे सिंपली कहो है, लाइक इट्स ऑब्वियस, बट आई वांट कि अगर कोई केस स्टडी है जो आप शेयर कर सकते हैं। इसके हमारे रेशल रेशल या ये रोल है। इसमें हमारे यहाँ पर इतना काम नहीं हुआ कि दुनिया भर में काम है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल दी थी यूएसए, या जो हमारी चीजें सपोर्ट होती है। यस ये लोग का कल्चर है हमारे, यस हम तो करते भी है ना। अगर एक बार बोल के रहना तो अपना है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पर पुलिस वाले इनको हमारे एग्जैक्टली। ना भाई कितना अवेयरनेस है, लेकिन लोगों ने नहीं किया ना। ठीक है, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। कौन सी चीजों में और अगर बात है हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन दुनिया में भी इतना सब खत्म होना चाहिए। लेकिन जॉब अगर आपने एडवर्टाइज की तो उसके साथ एज भी इसमें जो एज के लोग हैं वो अप्लाई ना करें, वो से जॉब अक्सर रखा हुआ है। ये भी डिस्क्रिमिनेशन में कंसिडर किया जाता है। और तो लोग ऐसी चीजें नहीं होती। हाँ, पर ऐसी जॉब ऐसी नहीं है कि आपने सेमेस्टर को लेना है या आपको फॉर्म वर्क में लेना, उसे आपको वहाँ पर बता दिया जाता है। लेकिन कभी भी दुनिया में आप देखिए जैसे तो रिटायरमेंट की एज भी बढ़ी। और जर्मनी में हमारे हमारे प्रोग्राम है अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी जर्मनी में हमारे वो लोग शामिल होते हैं प्रोग्राम में। वो बता रहे थे कि उन्होंने सिचुएशन में ये कर दिया रिटायरमेंट की सिचुएशन में ये कर दिया, क्योंकि लोगों के हेल्थ में जरूरी हमारे यहाँ पे बाबा जी वो सारे खड़े हैं 4 साल के बाद आ गए। लेकिन साल के बाद तो बोली से नहीं है, हम नहीं हम जो लाइफ सर्विसेज पर है और इसमें अब हेल्थ केयर जो स्टेटस है वो बढ़ गया है। अभी हमने एक ये जो 70 में जाके तो फिर काम करने वाला एग्जैक्टली। हमने लोगों को फायदा से लगाया है। तो बड़ा एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। संबंध सब है, कृषि सब है, बिल्कुल इस तरह एक्टिविटी एंगेज होते हैं। और जब आप किसी को क्रिटिसाइज लगाते हैं तो समझ के वो बिल्कुल करना पड़ता है। ये चीजें हैं
डिसेबिलिटी की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, जेंडर की बात करते हैं, आप की बात करते हैं, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होती है हमारे सोसाइटी में। सिस्टम में अगर देखें डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन, हर एक में जो फर्स्ट स्टेटमेंट में लगाया हुआ है, स्टेटमेंट में ये रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि हर एटीएम बैंकिंग एक्सेसिबल हो उन लोगों के लिए जो व्हील चेयर का है। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि कई बैंक ने वो जो रैंप बनाया, देखिए रैंप, उस रैंप का हम नॉर्मल बंदर नहीं कर सकते। नॉर्मल बंदर सही पाँव के साथ होकर कि वो लोहे के प्लेट में लगा करते हैं, तो आप सोचिए कि व्हील चेयर वाला कैसे चलेगा वहाँ। और वो काफी स्लो, हाँ जी, उसका स्टीप स्लो। जैसे हमारे समझ नहीं आ रहा है इस तरह, मतलब आम आदमी मेरे जैसा बंदा उसको भी बड़े स्ट्रगल के साथ पकड़ पकड़ के जाएगा, उसको भी ड्राइवर से देखा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि व्हील चेयर तो हमारे यहाँ इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा, जिसकी जरूरत है कि हम अंडरस्टैंड करें कि नहीं यूज कर रहा है तो सही तरह से करते हैं। या कल्चरल कॉम्पिटेंसी पे आई लाइक कि हम उस पे लाजमी बात करें, है ना। या ये भी है कल्चर की बात भी करते हैं हम। यहाँ पे हमारे सामने एग्जाम्पल है, सिंधी है, बलूची है, पठान है। बलूचिस्तान में कितना ज्यादा बिछुआ है। डिफरेंट कल्चर्स एचआर की जो पॉलिसी है माइंड पे ये रिलेट करते हैं, लाइक ड्रेस कोड एज वेल, वो इसमें आती है लाइक वो अगर अपने कल्चर के मुताबिक वेयरिंग करते हैं, जैसे लाखों भाई है सर, ठीक है, अब होता है कभी कभी वो सिंधी मतलब स्टाइल में आते हैं, तो ऐसे में उसको भी तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है तो कोई लाइक करता है ड्रेस कोड के ऊपर। या क्योंकि कई बार जो है ना, लाइक इट कॉजेज अ ग्रीवेंस, राइट। क्योंकि कई बार जो है लाइक इफ समबडी इज वेयरिंग, तो मे बी इट्स लाइक द प्राइड, वो उसमें प्राइड फील कर रहा है ना, और वो पहन के आ रहा है और जानबूझ के, और दूसरी उसके साथ में कोई दूसरे कल्चर से, दूसरी नेशन से है, और वो स्पेशली उसके सामने पहन के आ रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं, सो दे आर गिवन अ प्राइड सिग्नल उनको, सो दिस श्योरली कैन ग्रीव द अदर पर्सन। इसमें दो बातें हैं, लेकिन ये डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट तरीके से आता है। तो क्या है कि किसी ने अगर किसी शख्स ने धोती पहनी है तो इसमें और अगर किसी ने पैंट शर्ट पहना हुआ, फीमेल ने पैंट शर्ट पहनी हुई है, वो भी उनके लिए प्रॉब्लम है। तो वो चीजें जो है हमारी पॉलिसी में है, वो टाइम इज कि एक ड्रेस कोड जो हमने बनाया हुआ है, वो that will not violate the other cultures. It's that. Something really good. If there's one of the reason in our segment, the short and short part. इस reason जो है कोड सेट किए होते हैं। sometimes ये होता है, अभी फिर तो रिलीज है स्कूल में टीचर्स जो है चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, सबके लिए एक ऐसा यूनिफॉर्म ड्रेस कोड हो। क्यों? ताकि वो फिर डिस्क्रिमिनेशन कल्चरली भी और मेंटली भी ना आ सके कि आपने ज्यादा का खादी का बड़ा ब्रांडेड फूड पहन लिया, किसी और ने लोअर पहन लिया, क्योंकि जिसके पास नहीं है जो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये भी है जिस फूड या रूल से भी मुतयन किए जाते हैं ताकि किसी किस्म की इस तरह की चीजें का इंस्टिगेट होने का मौका ना आए। ये तो होती है। और ऑफिस में देखिए मैं बता रहा था, हम तो ऑफिस में रिप्रेजेंट कर रहे थे ना किसी लोगों को। अब मेरे साथ मिलने आते हैं, मैं आपसे मिलने आता हूँ, मैं वेल ड्रेस हो गया तो मैं वेल ड्रेस ये कोट पैंट सूट अपने लिए पहन के नहीं आया, मैं आपके प्रोटोकॉल में पहन के मैंने आपको एक्सपेक्ट किया। अब जैसे कि मसाला पड़ते हैं, ट्रम्प की जबरदस्ती के साथ मुलाकात हुई थी ना, ये पहले तो आपके लोगों को गुस्सा इस बात पे आया ना, ये प्रेसिडेंट से मिलने आया था, प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल होता है, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, आपने टी शर्ट में कुछ नहीं किया। शुरू का प्रोटोकॉल है, हर चीज करती है, आप मुझसे मिलने आते हैं जैसे क्वीन को मिलते थे सब लोग, तो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, मुझे भी पता है सब कुछ है, लेकिन आप मेरे मेरे मुझे मिलने का तरीके का ख्याल नहीं किया। ड्रेस तो आप अपने लिए बैठ के करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए उसको क्या करता है, जैसे आप किसी की शादी नहीं करते, इतना ख्याल रखिए जाता है, उसको प्रोटोकॉल होता है।
कैजुअल में चले हम्म, आप मुझे दिया yeah, फिर उसको क्या फील होगा उस वो आपको कैसे फील कराएगा yeah, दो तीन तरह के होते हैं yeah. Zara wants to say something. And I think it was so that हमारे एक एग्जाम्पल है अगर हम ये ड्रेसिंग करके आ रहे हैं हमारे गेस्ट भी आते हैं समटाइम्स पार्टनर्स फ्रेंड्स होते हैं तो लोग देखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रोटोकॉल है क्या डिसिप्लिन है जिनको इसी से अगर हम कुछ भी बड़ा एक बात है सर कुछ भी करना है सब कुछ means the short story of female just say theory the coordinator the teacher was dress code was हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे ड्रेस कोड से That's true. that should be motivated observe करना ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो Yeah, yeah. how respect you have for the others Others, exactly. I'm really not sure and you have to go in front of Hmm, in young you have to go in front of everyone we want to make progress because that is not I feel not appropriate yeah, yeah, in that exactly. so this kind of Yeah. So अभी जैसे non-profit organizations where like they are or even सिर्फ वही नहीं है like when we have to go to the field है ना तो वहां पर भी है कि जब we are meeting the people और जहां भी जा रहे हैं so that culture yeah so ये cultural competency जो है that should be yeah yeah ऐसा होता है हमारा जो होता है पाकिस्तानी हमारे मुंबई से ज्यादा तो वो लड़का नहीं लेते हैं मतलब रिमोट एरिया वो सिखाने से गर्मी में उन्हें ठंडी के थोड़े बड़े लगे होते हैं yeah हमने को शॉर्ट्स वाला भी एक yes स्टेरियो फेस किया है so exactly देख के खुश होते हैं yeah so अभी quickly हम next पे हैं next slide पे है addressing mental well-being related grievances so मैं start यहाँ पर निदा से लेना चाहूंगी workload stress के बारे में और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है या सो ज़ारा हंस रही है यहाँ से ले लेना चाहिए स्टार्ट बट निदा प्लीज ओके वर्कलोड स्ट्रेस स्पेशली काफी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से होता है कि स्टाफ जो होता है वो इवन जॉब सिक्योर भी नहीं फील कर रहा होता और वो इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि उससे पहले वो बेचारा दूसरी सर्च करना शुरू हो जाता है ये कह के कि हाँ वी वोंट बी एबल टू पे दिस आई नो इन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ की कल एक बंदी का मेरे पास कॉल है एंड शी सेड इफ देयर इज एनी स्पेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन और जहाँ ताकि मैं वहां पर ज्वाइन कर सकूं बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट किया हुआ है इन्होंने जॉब से रिलेटेड हमें और डेडलाइंस जो है वो प्रैक्टिकल डेडलाइंस नहीं होती तो इसकी वजह से और भी मतलब अगर इट्स नॉट जस्ट वर्कलोड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर उनका इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट किया हुआ होता है उन्होंने या वो टॉक्सिक कल्चर इतना ज्यादा होता है कि इसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है तो काउंसलिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट भी नहीं है बाज ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से लोग अपना जो है पोटेंशियल एम्प्लॉय या हम एसेट कहते हैं वो लूज कर देते हैं टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है और सैडली यहाँ पर जो है इस वक्त जॉब मार्केट इतनी सेचुरेट हुई हुई है कि जो सेठिया कंपनीज है वहां पर तो यही कॉन्सेप्ट है कि ठीक है एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा दे डोंट थिंक एज एन एम्प्लॉय एज अ लॉन्ग टर्म एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन right thank you so much yes Zara bullying and harassment yeah Okay. बच्चों को
बल्कि एक मिनट रहिएगा, दो चार कमरे वाले खड़े हैं, हम आगे जाके नेक्स्ट डे जाके बताते हैं, हमसे बात करते हैं, या फिर चलिए किसी ने बात किया किसी की कलर के ऊपर, किसी की और चीज के ऊपर, वैसे किसी की कैपेसिटी के ऊपर, किसी के मार्क्स के ऊपर। अच्छा, ऐसा है कि लाइक आप अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को भी कोड करते हो और एग्जाम्पल है बुलिंग की, तो खैर अभी तक इतनी कोई किसी कंप्लेन नहीं आई हमारे पास, लेकिन हाँ, हरासमेंट से रिलेटेड मैंने इश्यूज फेस किए हैं। और हरासमेंट पॉलिसीज जो है वो आई थिंक बड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज ये चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मेंटेन करती है। और इसमें आप जो फीमेल्स मैं इसमें मैं थोड़ी सी फेवर देना चाहूंगी, बिकॉज हरासमेंट विक्टिम बन रहा होता है ज्यादा तो लोग फीमेल जेंडर होता है, ऐसा ऐसा ही होता है। Cases reported are by females or yeah, yeah. Mm, लेकिन जो बुलेट की बात करते हैं ना, बहुत से बुलेट ऐसी होती है जिसको तो बुलेट समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑफिस में जो लोग उनके बीच में जुगतबाजी होती है, किसी एक और के yeah, दूसरे मारना शुरू कर देते हैं, yeah, वो भी एक सॉर्ट ऑफ बुलिंग की होती है। yeah. ठीक है, अभी कुछ एक बुलिंग था हमारे ऑफिस में ना, तो उसने जो अच्छा काम किया, तो दूसरे ने उसको कमेंट कर दिया, यू आर मैड एंड ना, मैं तो एक स्लैंग लैंग्वेज की वर्ड यूज किया है, इसकी तारीफ करने के लिए मेरी तारीफ करना, उसको समझ नहीं आया, वो समझा कि जैसे पढ़ा हुआ है, मैं मतलब भेजने की तरह है, हालांकि अक्सर बात होगी Yeah. कम्युनिकेशन मैट है, हाँ, फिर तो समझाया बाकी लेकिन मेरा आपने ऐसे, लेकिन जिसने ये वर्ड का था उसको भी समझाया हाँ, कि ऐसे ही हमारे दिन से कोई इन्वेस्टिगेट हो या फिर और बात करनी, yeah. जब उसको तो ये बताया गया, समझाया कि मैट का मतलब एमएडी का ये था कि देखिए अगर वो तारीफ की जाए, इंग्लिश में का मुझे इस पर भी चीज चाहिए। तो हरासमेंट को कंट्रोल करना ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर्स का तो पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना जरूर है कि ये हर जगह चीज पाई जाती है, हर सेक्टर में, चाहे वो कॉर्पोरेट है, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है। जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा इंटरेक्शन है लोगों के साथ, तो मुझे यही पता लगे, बिकॉज मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी इस इशू को फेस किया है। मुझे लगता है कि हरासमेंट के लिए कहीं ना कहीं वुमेन जो है वो एकदम बन जाती हैं, और ये नहीं है, मेल्स के साथ भी कहीं ना कहीं होता है, लेकिन आ, मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए बहुत सख्त पॉलिसी होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, एंड सडन, बिल्कुल जल्दी, बिल्कुल प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए इन चीजों को, बिकॉज ये जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को जो है एक्चुअली प्रमोट करती है जी। अगर वो एक दफा आप उसको बहुत नॉर्मल ले लेते हैं ना, तो फिर वो चीज आहिस्ता 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 दर्ज होना शुरू होती है, वो बहुत नॉर्मल होना शुरू होती है। अब वो ही फिर कल्चर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन पर, वो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होती है चीज। Decision. Yeah. For the female should be there. Yeah. So defaulter is defaulter. Yeah. Yeah. Because not mindful or higher, important is important, and it should be a zero tolerance. Yeah. I think we should if we are giving a one that to me, and sometimes we are misuses, not in our organization, but sometimes it is misuses. So we need to have as much as possible, such a evil. Yeah. Yes. Yeah. Harassment is not only the sexual harassment. GG. Harassment is over the misuse of powers. You are कोई भी हमारी मेल हो सकता है, वो मेल हो सकता है, ईमेल हो सकती है, आप उसको गलत करा रहे हैं, भाई तो महिला को मेल कैसे कर रही है, तो मैंने जो रखा हुआ है वो सिर्फ मेरे को बोलने का रखा हुआ है, मैं ही नहीं जो तुम्हारी नौकरी चाहते रखा हूँ, नो दैट इज नॉट गुड, वो उनकी अपनी लाइफ है,
वो अपना काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा है क्या, तो मेरी वजह से हो रही है। क्यों? One thing more, I want to just make clear is a perspective. Harassment की क्या दृष्टि होती है? Harassment में क्या क्या चीज लगाई जाती है? बिकॉज ये बड़ी कंफ्यूजन है जब हम एक इशू फॉर एग्जांपल आता है सामने तो कहा जाता है दिस इज नॉट हरासमेंट, दिस इज बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं आप, दे आर लोग उसको बहुत और चीजों में ले जाते हैं, तो क्लियरेंस जरूर होनी चाहिए। हरासमेंट या किधर नहीं, सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, देर आर मेनी काइंड ऑफ हरासमेंट है ना, तो बहुत चीजें लाई करती हैं जिसके ऊपर बात ही नहीं की जाती। जस्ट हम अगर किसी चीज पे एक्शन ले सकते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट है, वो भी कोई बहुत मतलब आगे बढ़ के कोई बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके नहीं सकता है, तो आई थिंक ये चीज एड्रेस होना बहुत जरूरी है। या मतलब एक शख्स है, हम नजर आ रहा है, इस सामने नहीं बोला, लेकिन हम अगर बस प्रूफ नहीं है, जब प्रूफ नहीं है तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते। Yep. Yep. Sector management का कोई प्रॉब्लम हुआ, it is really possible. YouTube के बाद इसके बाद हम मैच करेंगे। Exactly. क्या Harvey Weinstein just उसके बाद इसमें बात नहीं yeah. अब तक अब तक लोग बता रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, हमारे साथ ये हुआ था उस Yeah. इतना ना स्पीकर का कल्चर है, तो बात करने का कल्चर है, फिर भी कितने तरह के काम Yeah. हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और अपने एम्प्लॉयज में ऑफिसेस हमें इतना फ्रीडम देना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स को, अपने बच्चों को, कि वो एक चीज को डिस्कस करें, वो बोल सकें। हमारे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हो जाती है स्कूल में बाहर कहीं भी, उनको माँ बाप ने वो स्पेस नहीं दिया बताने कि बेटा Exactly. चुप करो, तुम नहीं, तुम इस तरह से तुम अजीब बात करो नहीं, Hmm. ऐसे तुम In fact, sorry, sir. I cut you. एक फ्रेंडशिप वाला एक माहौल, अगर कोई चीज है तो फ्री में एक दूसरे के साथ आदमी डिस्कस कर सकते हैं, इवन इन द ऑफिस, इवन इन द फ्रीडम जो है वो अंदर की तरफ से ही होना चाहिए कि नहीं ये है। अब वो इन बात कर, हम अपने माँ बाप से खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन हमने स्पेस दिया कि हमारे बच्चे जो है हमसे बात कर सकें। Yeah. देखा जाए, this is a harassment too. Like, if a woman is not ready, so why should you just go and talk to her about her dressing? आपको ये सूट कर रहा है और ये अच्छा लग रहा है और इस तरह से है. So this is added into this harassment as well. और वहां पर आकर जो है, अगर कह लें कि वो विसल ब्लोअर बनती है कि दिस गाय केम टू मी एंड सेड these things, तो वहां पर आ जाती बात के ये कंजर्वेटिव माइंड और इस तरह, तो ये वाली चीजें सोच कर ही इस चीज को कई बार बताया नहीं जाता, राइट? सो इस तरह से है कि लाइक वो ऑलरेडी जो है कल्चर इस तरह का है कि माइंड में पहले ही वो शख्स सोचेगा कि मैंने ये चीजें बताकर तो मैं ही ना बुरा बनूं इनकी नजर में जो है, तो वो अभी जो एक मॉडर्निज्म आ चुकी हुई है ना, कि मॉडर्न हो गए हैं, उस मॉडर्निज्म में कई मर्तबा हरासमेंट को एड्रेस नहीं किया जा सकता। आई गेस हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हाईलाइट किए जाए ये की पॉइंट्स। दैट्स ट्रू। एक और चीज भी है कि ऑर्गेनाइजेशन में हरासमेंट के टॉपिक को बहुत मुझे लगता है दबाया जाता है, क्योंकि अगर ये बात हुई तो स्टाफ जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आएगा और फिर ऐसे केसेस निकालेगा बाहर, तो इस चीज को ना दबाया जाता है। तो लगता है कि इस विधान को ये हमें
अवेयरनेस सेशंस रखने चाहिए। एग्जैक्टली। और बाकायदा तौर पर जहाँ हम बात कर रहे हैं मेंटल वेलबींग की, तो उसके लिए हम और जो है वो अब अगर सोच रहे हैं ergonomics वगैरह का, जो एक्सरसाइजेज होती हैं, है ना, तो हम अगर उन चीजों को सोच रहे हैं कि हम इंट्रोड्यूस करवाएं अपने वर्क कल्चर एनवायरनमेंट में, तो फिर उसके साथ हमें जरूरत है कि हम बाकायदा ये हरासमेंट के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं, ये सारे अवेयरनेस के सेशंस करें। बुलिंग में क्या क्या आ जाता है, और उसमें आकर हमने देखा कि इट्स नॉट अबाउट द वुमेन अलोन। वो मतलब वहां पर भी होता है कि जुगतबाजी वाला एक एनवायरनमेंट बन जाता है, और किसी की किसी बात को, ड्रेसेस को, शूज को पकड़ के, उसके तरीकेकार को, उसके बोलने के अंदाज को पकड़ के बॉडी शेमिंग शुरू हो जाती है। ये सो मेनी थिंग्स। जी सर। अभी इसमें मैं 3-4 चीजों को रिलेट करूंगा, तो मैं फिर टेंशन लेती या पूरा आप ये अगर हमने किसी ईमेल में अपनी बात कर दी, बहुत ही नरम है, ये बैकवर्ड है, यस या लेकिन बैकवर्ड है कि सब पता नहीं तमाम की तरह हाँ इस तरीके से हाँ आपके बात हाँ और मतलब इसका बात क्या है, हाँ वो दूसरे की वजह उसके ऊपर बस शुरू कर देंगे, उनका वो फलानी चाहते हैं, वो बस शिकायत करती है फलानी की है, वो बेचारी जो है वो बात नहीं कर पाती। फिर मैंने बात करूंगी एक बजे जो मुझे ये वापस सुननी पड़ेगी, दूसरे के लिए मैं पूरा ऑफिस, ये पूरा जो कल्चर है वो उससे सब बात क्या फलाना है, देखो वो जाके उसकी बात कर दी, हालांकि वो ऐसा है नहीं है, उसने बेचारे ने कुछ नहीं किया होगा, या उसने किया भी होगा, कसूर बात है। हम्म। और यहाँ पे फिर ये चीज के लाइक, is she always being harassed by male? The opposite sex, no. So ये वाले मामला के नैरो माइंड कहना या इस तरह की चीजें, तो कई मर्तबा ये लाइक सेम जेंडर की तरफ से ज्यादा आ रही होती हैं, और वो ज्यादा वो किया जा सकता है कि ये नैरो माइंडेड है, ये कंजर्वेटिव है, ये इस तरह के इलाके से आई है, इसलिए ये इस तरह के, ये इस फैमिली है, और ये चीजें सब। सो इसको लाइक क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि व्हाट इंक्लूड्स हरासमेंट, और फिर उस हरासमेंट को कैसे आपने जो है रिपोर्ट करना है, कैसे आपने फिर यहाँ से कैसे एड्रेस किया जाएगा एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से। न्यूरो डाइवर्सिटी सपोर्ट जो है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या अपना और देखिए ये भी हम क्या कर रहे होते हैं, एक ग्रीवेंस का पॉइंट रेज कर रहे होते हैं, लेकिन हर एक चीज की कैपेसिटी डिफरेंट है। हम्म स्कूल में बच्चों की ना एक हर एक की वैल्यू भी है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है ना, हर एक की कैपेसिटी डिफरेंट है, किसी की स्किल का क्या नहीं। और आपने ऐसा कंडीसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि सब लोग इक्वली उसमें फेस में आ सके ना। हम जब कोई कोर्स जैसे हम यूपी को हैदराबाद करने का प्लान कर रहे थे, हमने क्या किया था कि हर एक लर्निंग की फेस क्या है, स्पीड क्या है, तब हमने ऐसा कंटेंट डिजाइन किया, ऐसा कंटेंट डिलीवर किया कि सब एक लेवल पे आके अंडरस्टैंड कर सके चीजों को ना, हमारा पर्सपेक्टिव है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट में ये चीजें भी क्रिएट करनी है कि जो वहाँ पे न्यूरो डाइवर्सिटी है, समझने की सलाहियतें, सीखने की सलाहियतें, अंडरस्टैंड करने की सलाहियतें, देखने की सलाहियतें, ठीक है, उन सब में सब इक्वली बराबर बराबर। अगर किसी ने आईएलटीएस का एग्जाम देने की तैयारी की हो या कोशिश की हो, तो वो ब्रिटिश काउंसिल या जो भी है वो आपसे पूछती है कि उस जगह पर आपको किसी किस्म की स्पेशल सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है कि आपको ज्यादा टाइम चाहिए, पूछिए। नॉर्मल लोगों के लिए अगर 40 मिनट्स है, आप 60 मिनट तक आ रहा है, तो आपसे पूछते हैं, हो सकता है आप 60 मिनट्स तक आ रहा है, तो पूछते हैं आपको बड़े लेटर में पावर चाहिए, कोई पूछती है आपका पेपर कैसे, पेपर तो नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कोई चीज तो नहीं चाहिए, विजुअल या इस तरह की कोई आप एड तो नहीं चाहिए, तो आपकी इस डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना है, वो करने का हम भी कर सकते हैं अपनी वर्क एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि सब लोग एक तरह की अंडरस्टैंडिंग के साथ मूव कर सके, और किसी वजह से कोई ये ना हो सके, कोई इस सिग्नल में आ जाए कि यार पानी फटाफट कर लेते हैं, मैं कर नहीं सकता, वो व्हाइट बोर्ड है, मैं उससे जाता हूँ क्योंकि मुझसे नजर नहीं आता, उनको ये करते हैं, नहीं नजर आने का मतलब सीधी बात है, ये लोग हेजिटेट करते हैं, वो आप उनको नजर नहीं आ रहा पर आपने सीट पे बैठे रहते हैं, ट्रेनर को पता चल जाएगा ना
इसको प्रॉब्लम हो गया, कहते हैं आप आगे चला। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको दर्द मेरी आवाज का एक एक लफ्ज मुझे लेकिन किसी को ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। वो इस तरह से बात करते हैं कि वो आवाज के लायक मछली नहीं है, अल्फाज एकदम मछली नहीं है, और आप हैं बॉस, आप बॉस हैं, सीनियर है, तो हम कह नहीं सकते कि कैन यू प्लीज रिपीट। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको अपने कल्चर में देखना आता और इसको एक इस रूप से भी देख सकते हैं, इन द फैमिली मदर प्लेज दिस रोल। है। यस। और जो है ना, सब बच्चे नहीं बोलते, हर एक नहीं बताता अपना मसला, राइट? सो एचआर हैज दिस जॉब कि वो सिर्फ ये नहीं है कि लाइक एवरी पर्सन इज कमिंग टू देम, और सिर्फ हम यही देखते रहे कि कैसे हमने फिजिबल बनाना है उस एनवायरनमेंट को, कि वो अपने सारे हकूक से वाकिफ हों, और फिर वो खुद आप तक पहुंचे, और फिर आप उनके मामले को एड्रेस करें। बल्कि दिस इज ऑन यू एज वेल। जब हम न्यूरो डाइवर्सिटी सपोर्ट की बात करते हैं, तो इट इज ऑन यू एज वेल दैट बीइंग एचआर पर्सन यू आर सर्विंग एज द मदर इन द ऑर्गेनाइजेशन, right? And you gotta figure out that what is troubling who. ठीक है? सो अगर उसके पीछे, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दी ऑलरेडी, एक एचआर कंसल्टेंट की, जो हमारे उस पैनल पे थी, तो लाइक शी फिगर्ड आउट कि इसकी प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो गई है, ये खामोश क्यों हो गया है, क्या इसके चैलेंजेस आना शुरू हो गए हैं। सो दिस इज वेयर आपको, कि अगर इसको बात करने की जरूरत है, किसी से ये बात नहीं कर रहा है, या कोई सिचुएशन इसकी चल रही है, सो यू गिव देम द स्पेस जहां पर वो बोले, वो आप उनसे जाकर सुन सके, ठीक है? और फिर जो है वो आप देख सके कि क्या किया जा सकता है सिचुएशन को बदलने के हवाले से। जी, स्टिक, कोई है एग्जाम्पल? जी, examples हैं। हाँ, इसलिए मुझे इशारे कर रहे हैं हाँ, कि यू क्योंकि ऐसा ही है, मुझे लग रहा है हमारा बड़ा फोकस रहता है इसके स्टाफ में, देखते हैं बहुत से लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, और पेरेंट्स के साथ, के साथ, और हम ऑब्जर्व जब भी करते हैं, तो हम पर्सनल कैपेसिटी में जाने से बात करते हैं, पर्सनली जनरल बताने से कोशिश होती है कि रेस्पिरेटरी चीज़ें करने के साथ मिलकर, और प्रोफेशनली भी हम उनको देखते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के मतलब देखते हैं पॉलिसीज और हर चीज़ को हम कहाँ किस मतलब उनकी फर्स्ट पर्सन से हम इशू को सॉल्व करते हैं, वो स्ट्रेस है, वर्कलोड से रिलेटेड, या कोई इशू है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, व्हाटएवर, इस चीज़ को तो हम नहीं हैंडल कर रहे हैं, एग्जैक्टली, है ना? इट्स रियली a motherly role. It's not के you are just about the job, you are about their mental well-being, you are about their productivity beyond that, कि वो सिर्फ यही नहीं है कि जितना यहाँ पे कर रहे हैं, but otherwise like maintaining their smile. Yeah. शाम को एक साथ सब बाहर चलते हैं, हम्म वो कैसे मोबाइल से बाहर निकला, वो जाने वाला, हाँ बता क्या सब चल रहा है। हम्म अब उस पर मेंटल उसका मतलब नहीं चल रहा है, हम वापस में नहीं हम करके बोल सकते हैं। कोई रीजन मेरे पास एग्जांपल मैं सपोर्ट स्टाफ को हैंडल करती हूँ, और सेलेक्ट होने के लिए सारा सपोर्ट स्टाफ, तो अब उनके लिए छोटे से प्लानिंग शुरू होते हैं, जिनको अपना प्रॉब्लम है वो आएंगे, फिर बैठेंगे, सारा उसका बताना है मुझे, जब उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल जाता है कि आज इनको कोई प्रॉब्लम है, फिर सर ओके सर इनका कोई मसला है, मसला सुनते हैं, कब बैठते हैं, फिर उस मसला हमें बताते हैं, फिर हम उनके लिए मतलब दी बेस्ट करते हैं जाके। तो ऐसा तो ज्यादा मैं तो सपोर्टिव स्टाफ के साथ ज्यादा डील कर रही होती हूँ, बिकॉज आई थिंक प्रोफेशनली चीजें वो आसान है, जो हमसे थोड़ा सा कहते हैं ना, एक तो सेकंड लाइन से नीचे जो स्टाफ आता है उनको हैंडल करना काफी डिफिकल्ट होता है इसमें, क्योंकि अगर उनका कोई इस तरह फैमिली या मैरिटल इश्यूज भी होते हैं, तो या कुछ भी है, तो वो फिर उनकी सुनना पूरी स्टोरी, फिर उनको ये फील कराना कि नहीं यू आर नॉट अलोन, हम आपके साथ हैं, फिर उनको कंफर्ट जोन देना, फिर जो आप उनके लिए कर सकते हैं समटाइम छुट्टी दे देना उनको, क्यों सर डैनी, आपका सपोर्टिव स्टाफ सारा यही तो होता है रोज उनके साथ।
हम्म, क्या हो गया? हाँ हम्म, जब आप नीचे चलते हैं ये ऊपर वापस या एनवायरनमेंट चेंज करना, क्वाइट स्पेस देना। हम्म, 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 या, क्या हो वो क्या करूं? अब कि ये हम्म, हम तो हफ्ते में 3-4 दफा जाते हैं खाना खाने, तो इस तरह से पूरा होटल वाले हैं हम्म, खाने के घर में डालते हैं हम्म, हम्म। एक साथ फ्री होकर के। हाँ अच्छा, आपस में लड़ भी लेते हैं गए तो वह है। Yeah. Difference of opinion actually. तो हम लोगों की चीजें हो जाती है वहाँ, मतलब बहुत सी चीज होती है जैसे ये वो यही मतलब हमारा ये होता है, सर कहते हैं ये इसको फेवर नहीं, कहते नहीं इसको ऐसे फेवर नहीं देंगे हम, इसकी ये चीज अभी कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियली हमें देखना, हम किसी को फेवर नहीं देंगे, क्योंकि जो सीनियर्स है ना वो कहीं ना कहीं थोड़े से वो हो जाते हैं, लेकिन वो चीज आपकी सेकंड लाइन मैनेजमेंट के साथ जाके वो ज्यादती हो जाती है, तो इस चीज को मैं फिर इंश्योर रखती हूँ कि नहीं, ज्यादती नहीं होगी किसी के साथ, इक्वालिटी के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, Fairness रहे हैं। बहुत जरूरी है, जैसे पहले होता है। तो वो चीजें थोड़ी सी चलती रहती है, और celebrate करते हैं हम दोनों का आपस में मतलब बस फिर उसको रिजॉल्व करना होता है ना। या, या, that's good. Stigma reduction, इस पे I'd like निदा आप प्लीज थोड़ी सी बात कीजिए। I really want you to stay involved and keep you involved, लेकिन वो थोड़ा सा वॉइस का हो जाता है कि जरा दूर से जब आवाज आती तो आप तक शायद नहीं पहुंचती है, बट आपकी आवाज यहाँ सब सुन सकते हैं। यस निदा, स्टिग्मा रिडक्शन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। स्टिग्मा रिडक्शन, आई थिंक अगर हम ओपन कम्युनिकेशन चैलेंज रखें तो इट माइट हेल्प अस कि ये रिड्यूस हो सके। या, या, या मैं आपको इसकी एक एग्जांपल इस तरीके से बताती हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा था जो कि थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन में था, और या, उसका नाम ही जो मतलब जो ऑफिस बॉयज होते हैं उन्होंने उनकी एक लैंग्वेज होती है जो ये बिल्कुल ही लेमैन होता है, तो व्हाट दे डिड उसका नाम इन्होंने कालू रख दिया था। आई एम नॉट सेइंग, मैं रेफर नहीं कर रही, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ कि उसका नाम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए उसको वो कल्लू कल्लू करके बात कर रहे होते थे, वो कल्लू को बुला लो या वो कल्लू को। एंड देन मैंने उन्हीं को बुला के मैंने इनको सिर्फ एक एग्जांपल पूछा, मैं कहा हाउ वुड यू फील अगर मैं आप लोगों से इस तरीके से बात करूं, मतलब मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ तो आप अपने से छोटे को क्यों नहीं दे रहे हो वो चीज। या, या, बिल्कुल। मतलब और डीप डाउन कहीं ना कहीं तो वो हर्ट करेगा ना आपको। तो बोला नहीं वो हमारा दोस्त है उसको फील नहीं होता। तो मैं कहा क्यों नहीं होता, हो सकता है आपके सामने नहीं हो रहा हो, हम्म, या आपके बिल्कुल। साथ वो एक एसोसिएशन चाह रहा है तो इसके लिए नहीं हो रहा हो, लेकिन घर जाकर हम्म, होता हो। हम्म, एग्जैक्टली exactly. और कई बार जो है जब हम ये बात कर रहे हैं लाइक सपोर्टिव स्टाफ की, तो दिस इज देयर वे ऑफ हैंडलिंग, जो है ना वो इस तरह से हैंडल कर रहे होते हैं कि वो स्माइल कर देते हैं, राइट, बिकॉज दे डोंट नो कि वो और क्या करें। So this is actually their set response in their mind कि बस ठीक है ये करके तो बात को टाल देना है। तो इस वजह से थैंक यू सो मच, सच a great example. So हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। So we have just talked about
मेंटल वेलबींग रिलेटेड ग्रीवेंसेस कि उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है. सो अभी इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं. ऑलमोस्ट इट्स ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस एम्पावरिंग द वर्कफोर्स. सो उसमें मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, बाय स्टैंडर्ड इंटरवेंशन, साइकोलॉजिकल सेफ्टी. जब हमने बात की है ना ये सारे ग्रीवेंसेस की, तो एक्चुअली बीच में बार बार पहले आ रही थी ट्रेनिंग, तो आई नो कि हम उस तरफ को जा रहे हैं. सो इस पे हमने ये देखना है कि जो मैनेजर्स हैं उनके लेवल पर ट्रेनिंग्स, बिकॉज दे आर लीडिंग. तो अभी फिर पहले हम यही देखें कि हमारे वो लीडर जो है, क्या हमने उनको इक्विप कर लिया, उनको अवेयरनेस दे ली है हमने, जो है उनके साथ जो ग्रीवेंसेस हैं उसके बारे में प्रोप्रियटली, प्रॉम्प्टली सब उनके साथ बात कर ली और उनको बता दिया, उनको मालूम है. सो जब उनको पता है, बिकॉज दे आर द टीम लीडर, राइट, वो ग्रुप लीड कर रहे हैं, तो उनको पता है, और वो जब वो चीजें कर सकेंगे तो फिर उसके बाद आगे चीजें बेहतर. सो अक्सर जो होता है वो क्या होता है कि हम कहते हैं जी आवे का आवा बिगड़ा होगा, ऊपर से ही चीजें इस तरह की हो रही हैं. सो जरूरत क्या है ऑर्गेनाइजेशंस में, जब ऊपर से यानी मैनेजर्स और ये सब हैंडल कर रहे हैं, तो हम वहां से चीजों को फिर दुरुस्त करना शुरू करें. एम्प्लॉय ट्रेनिंग. सो हम सिर्फ इतने पे ख्याल नहीं रखें कि हम उनकी ट्रेनिंग कर देते हैं. कर भी सकता है या नहीं कर सकता, राइट. सो एम्प्लॉय की पड़ेगा इसका, और मुझे जो है ना वो सपोर्ट की जाएगी, कॉन्फिडेंशियल मेरा नाम रखा जाएगा, और अगर मैं बताता हूँ तो मेरी जॉब सिक्योर है. सबसे बड़ी सिक्योरिटी उसको यही चाहिए है. तो उसके राइट्स उसको मिलते हैं, ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो बात कर देता और बाद में उसी को निकाल भी दिया जाएगा. सो ये सारी चीजों के हवाले से ट्रेनिंग, बाय स्टैंडर्ड इंटरवेंशन. सो अभी ये है कि जो आप जो कोलिग्स देखते हैं हमारे के लिए, हमें उनको किस तरह से एम्पावर करना है. उसमें ये है कि empower colleagues to safely intervene or report problematic behavior effectively and without fear. अगर किसी ने देखा है तो वो खामोश ना रहे, हम इसके बारे में भी अवेयरनेस दें. राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस. तो जो बायस्टैंडर्स है, लाइक जिस किसी ने अगर देखी है वो बात, जो कोई विटनेस कर सकता है वो विटनेस करे. लोग अक्सर इस पे इनसिक्योर हो जाते हैं, यार मैंने बताया, मैं क्यों किसी मामले में कूदूं, है ना, मैं दूसरे के मसले में क्यों पढूं, जबकि शायद उसके हल्के से कई बार, you know, the person who is grieving, like who has the issue, the person who is like going through some mental sickness, the person जिसका कोई इशू चल रहा है, वो ये देख रहा होता है, जैसे आपने अभी कहा सर, कि मोस्टली हरासमेंट केसेस जो हैं इनका रिकॉर्ड नहीं है, इनका कोई प्रूफ नहीं है एक्चुअली, है ना. तो अगर कोई बाय स्टैंडर्ड ऐसा हो, बाय स्टैंडर्ड कोई ऐसा हो हल्का सा उसके साथ में, लाइक ना बायस होकर, लेकिन न्यूट्रली अगर वो उसके साथ ऐड करता है, तो उस टाइम वो जो सिचुएशन से गुजरा है, मे बी द पर्सन वुड बी सीकिंग हेल्प, सिर्फ इतनी सी कि कोई विटनेस कर दे मेरी बात को, कोई सही करे. Yeah. So next is psychological safety. तो ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना, है ना, सारा ये एचआर का काम, जो कंपनी का कल्चर है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, क्या मुनासिब है क्या नामुनासिब है, ड्रेस कोड, लैंग्वेज,
राइट। अब क्या कौन सी लैंग्वेज, इवन लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। उर्दू है, इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, व्हाई आर यू कमिंग विद योर दूसरी दूसरी लैंग्वेज जिससे डिस्टर्ब हो रही हैं चीजें, है ना। सो ये सारी बातें, दिस इज अबाउट द साइकोलॉजिकल सेफ्टी। और ये कल्चर जो है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द HRP, राइट। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग्स है जिसका पता होना। अब जब हमने कल लॉज की बात की, इतने डिटेल्ड लॉज, अब आप देखिए HR के लोगों को पता चल जाए और उनको पता है, लेकिन अब आगे एम्प्लॉय को नहीं पता उसके अपने राइट्स और ये सब कुछ, राइट। तो क्या फायदा ये सारी इतनी मोटी किताबें या मुसवदे, मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट यू हैव, राइट, जब एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि वेयर ही कैन बेनिफिट फ्रॉम दोस। सो अब आप सारी पॉलिसीज बना लें कि हरासमेंट का केस है तो ये हो जाएगा, वेलबींग के लिए हम ये करने जा रहे हैं, बट यू आर नॉट कंडक्टिंग एनी अवेयरनेस सेशन, एनी ट्रेनिंग, राइट। उसमें आपके साथ आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, और मोस्टली आप ही लोग हैंडल कर रहे होते हैं उसको, लाइक HR ही में से होता है वो भी। सो अब उसमें फिर अपने इस डिपार्टमेंट को हर जगह एक्टिव बनाने की जरूरत है। Learning, development and empowerment, right? Through trainings and awareness. So ये आप ही यानी HRP के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने इस डिपार्टमेंट को, अपनी इस एरिया को और एक्टिव करें, so that their employees know it all. और आगे बढ़ते हैं। Zara, you in agreement? अभी हम क्विकली देखते हैं कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज एंड मेजरेबल इम्पैक्ट क्या है, राइट। सो उसमें हम देखते हैं डाइवर्सिटी ऑडिट्स, जिसमें आप रिव्यू करें हायरिंग को, प्रमोशन को, पे एक्विटी डेटा को, ताकि फेयरनेस रहे, है ना। और फिर उसके बाद अर्ली इंटरवेंशन, जो भी मामला है, यहाँ पर जारा ने ये बात की थी, क्विक पकड़ हो उसकी, राइट। और यहाँ भी जब ओवरऑल आई बिलीव एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, जब देर हो जाती है और डिले हो जाते हैं ना, तो चीजें बढ़ जाती है, वो राई का पहाड़ बन जाता है। इसलिए जितना जल्दी उसको पकड़ा जाए, उतना जल्दी जो है वो जो है वो दवा हो सकेगी मर्ज की। फिर उसके बाद डेटा एनालिटिक्स, इसमें आकर है कि ग्रीवेंस की टाइप्स हैं फिर, है ना। तो वो टाइप्स पे हम देखें कि कौन सी टाइप के ग्रीवेंस है, रेजोल्यूशन का टाइम जो है। सो कैन एनीवन टेल मी रेजोल्यूशन का एक टाइम है मैक्सिमम क्या? अच्छा, कोई भी ग्रीवेंस है, यू हैव एनी आइडिया? 30 days, ठीक है। सो इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए जो भी कोई एक्सट्रीम ग्रीवेंस है। और अगर आप उसे देख रहे हैं तो 30 days इज द मैक्सिमम टाइम, इससे ऊपर नहीं उसको लेकर जाना चाहिए। Some misconduct हम्म you have to report that incident हम्म within 24 hours. जब इस पीरियड के अंदर अंदर आपने ये एक्स्ट्रा को इन्फॉर्म करना है, या ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स दे हम्म जो मैनेजर के पास उनको इन्फॉर्म करना है, अगर वो दोनों नहीं है, then you have to report this. That should be done within 24 hours. Right. And here I agree with you. It varies from situation to situation, and it also varies from organization to organization, the policy. But it is a set policy, जिसके मुताबिक like 30 days जो ग्रीवेंस है उसको एड्रेस कर लिया जाए, उसको हैंडल कर लिया जाए। हम रेगुलर क्लाइमेट सॉरी मेंटोरशिप प्रोग्राम्स की बात करते हैं। सो इसमें है कि जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन की, जब हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की और मेंटल वेलबींग की, तो फिर ये है कि इसके हवाले से हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स जो हैं ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज में आते हैं और इसका मेजरेबल इम्पैक्ट है। क्योंकि जब आप ये करते हैं, जैसे आपने बताया, लाइक फॉर योर CO, कोई कोई भी है, वन कैन रीच डायरेक्टली, आप 24 hours में वो मामले ले लेते हैं। मिस निदा ने यहाँ पर बताया कि हाउ शी बिन हैंडलिंग द थिंग्स, और इस तरह से तो लाइक शी मेंटोर्ड दोस गाइस जो उनको
लाइक वो जो ऑफिस बॉय है उसको जो तंग कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर बाकायदा मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होना शुरू हों, बाकायदा ये ट्रेनिंग्स हो, चीजें सामने लाई जाए, तो दिस इज रियली गुड। और फिर उसके बाद है रेगुलर क्लाइमेट सर्वे। तो ये क्लाइमेट जो है ये फिर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है, जिसमें एनुअल सर्वेस होने चाहिए हैं। फिर उसके बाद है ये एनुअल सर्वेस क्या करते हैं, दे आइडेंटिफाई सिस्टमिक इश्यूज एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। हमने ये किया था, ये इम्प्रूवमेंट आई थी, फर्दर जो है इस पे और क्या किया जा सकता है। सो उसको रोका ना जाए कि जरूरी कोई मामला हमारे साथ होगा तभी जाकर हम उसको देखेंगे, बल्कि उसको अपने लाइक रेगुलरिटी में जो है ऐसे सर्विस को शामिल करने का क्लाइमेट सेट किया जाए। सो ये है। सो दिस इज हाउ वी आर जस्ट कंक्लूडिंग। तो ये है कि ये कॉर्नरस्टोन है ग्रीवेंस हैंडलिंग, लेकिन इफेक्टिव ग्रीवेंस हैंडलिंग, इंक्लूसिविटी में, डाइवर्सिटी में, मेंटल वेलबींग में। और हमने यहाँ पे बात की आपके एम्प्लॉय प्रोटेक्ट हो जाते हैं, राइट, और टर्नओवर कम हो जाता है, आपकी रेप्यूटेशन बढ़ जाती है जब आप आपके वही लोग आपके साथ सालों से हैं। और फिर ऑलरेडी फिर परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बढ़ेगा। इस वजह से चीजें फेयर क्लियर रहनी चाहिए हैं, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए है। और फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रेनिंग्स में, डेटास में हमें करनी चाहिए है। और हमें देखना है, प्रोएक्टिवली मेजर करते रहना है कि सक्सेस हमारी क्या है। सो इसी से फिर हमारा जो है वो इंक्लूसिव और डाइवर्स वर्क प्लेस जो है वो बनेगा। थैंक यू सो मच। So are we taking 2-3 minutes, 5 minutes break? Almost 5 minutes to read it. Okay. No smokes. Thank you so much. Really? Uh, Thank Very enjoyed and it was very practical as a very good discussion. Uh-huh. Nida, if you are saying it's not audible, so for now we all are going quiet for 5 minutes. It's a 5 minutes break, and then we are starting off with the next session. Yes,
कि क्या थे, क्या क्यों थे, क्या था, विजडम। वो प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि हमारा विजडम और उसके विजडम में डिफरेंस। हम करंट सिचुएशन के अपने चीजें को देख रहे हैं, ये आने वाले सालों के ऊपर चीजें कर रही है। मैं शेयर करूँ तो हमारा ऑफिस में मसला रहते हैं, जितनी प्रेयर, जितनी स्टोरियाँ क्रिएट हो गए, न्यूज़ जैसे गोवा में और बड़े बड़े काम, बहुत बड़े काम हो रहे हैं, तो मुश्किल जा रही है बहुत सारी, है ना। मतलब यहाँ दिख रहा है जो न्यूज़ की ग्रुप क्या से ना कि बेसिकली कुछ लोग के साथ हम यहाँ लाइक हमारे उस पे थोड़ा हमारे जो बड़े हैं उस वाली एज पे हम देख रहे होंगे इसको, बड़े बड़े स्ट्रगल करनी पड़ेगा, वो उतने आसानी से नहीं सुनते थे जितना इस टाइम ये न्यूज़ जो है ना ये रिस्पॉन्ड कर रही है और अकॉर्डिंग टू द वर्ड, क्योंकि मैं जब 300 पहले थी वो देखती थी, हाँ बहुत रिसर्च हो रही थी, कोई क्लास में भी हर मैं आपको बस ये बोलती थी, सिर्फ जब मैं आई तो 6 मंथ्स में मुझे शुरुआत की वजह से उनके साथ क्यों से कितने साल बाद आज इमेजिन करती थी कि शायद मैं तो चाहती तो आ जाए बहुत अच्छा, कुछ भी डिफरेंट होती है, लोगों के दिल बदल गए, ऐसे ही हम देखते हैं। there many things बहुत चीजें मैं यही कहती कि मतलब हम इंसान होते हैं खुदा हम बदल हम इतना डिजर्व नहीं करते इस टाइम से खुदा हम इधर रहते इंसान है। लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ के सिर्फ 16-17 के बाद सारी बात करेंगे कहाँ हफ्ते बाद वो चीज होती है। अगर सिर्फ आपको अगर प्रोफेशनल है वो इंक्लूड से है कुछ तो मैं सिर्फ आपको वैसे सर ऐसे मैंने मांगा है और जब होता है कहते हैं तुमने तो नहीं मांगा था तुमने दे दिया है। कभी कभी आपको दूसरा उठा देते कि नहीं मतलब हम तो इंसान इस काबिल नहीं है, लेकिन खुदा का फजल देखिए कि हमारे सिर्फ पीछे बातों को ऐसे कभी नहीं करते ऐसे सुन लेते हैं दूसरे सवाल बड़ा जी सिर्फ नोटिस कर कोई जॉब चली गई। अब मैं जॉब तो जॉब कंटिन्यू
Fresh. मतलब हर की वो सुनता है, जब उससे ज्यादा पढ़ाई होते हैं ना, तो डायरेक्ट फिर आप जी। Great. Thank you very much, dear participant. Now we are going to have another session, and that will be an interactive session related to the strategies to maintain mental well-being. Mental well-being is very much important. कि अगर mental well-being अगर आप अचीव नहीं करते, mental health अचीव नहीं करते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना. इवन मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कि कोई बड़े से बड़ा कोई नामी गिरामी रेसलर होगा, पहलवान हो, वो स्ट्रांग हो फिजिकली, लेकिन मेंटली अगर वो डिफीटेड हो जाए ना, तो समझें कि फिजिकली वो कुछ भी नहीं कर सकता. तो स्पिरिट वेल बीइंग और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के वर्क एनवायरनमेंट में, कि आप बर्न आउट नहीं हो. तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है ब्रदर जेम्स से कि टू टेक दिस सेशन. नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग ब्रदर जेम्स टू प्लीज फैसिलिटेट द सेशन. वी आर वेलकमिंग यू ब्रदर. Okay, good afternoon, everyone. Thank you very much for joining this session. We are grateful that you have given us the opportunity to serve you, interact with you, at the same time learn from your experience as well. At Tilty, we learn from each other. You know, this session many times we facilitate, but at the same time we learn from our participants as well. So thank you for joining us, and I believe like the last session that you're gonna contribute as well. You're gonna talk and we're gonna learn from each other. I'm audible to everyone, right? Brother, you are audible to us. Okay, good. Thank you. Yes, you are. Okay, thank you, Nida. The world is very busy, no? This our day is very busy. Every day we think, oh, I finished my homework or cooking, I finished my cleaning the home. But again, after 1 day, 2 days later, we can say, oh, I need to clean it again. You know, you think you have little time to go take some break, and then something come out and say, oh, sorry, I cannot take break. It happened. Finding the balance in our world is very hard. So when you do not have uh, the balance, that it can create a lot of problem as well. So because of that, we are talking about that employee well-being and mental health. So in this session that we're gonna emphasize the mental health and the well-being of the workplace. We're gonna discuss about the stress management and the key definition and effective strategies for creating a supportive work environment. And we know that creating a supportive environment, I need to get involved, but many times my co-worker, my boss, my team members, my manager, you know, other people, HR department, we need to get involved as well, because one person cannot do every single things. So I believe that we're gonna learn many things from this session, and I believe that you're gonna contribute so that we can learn together. So some of the things we're gonna learn to the objectives, that basics, awareness, that we're gonna raise the awareness of our mental health, the basic awareness level, we're gonna talk about it. At the same time, we're gonna equip ourselves, the employee, with some of the tools. At the same time, we're gonna foster a supportive environment, and that is
we're gonna understand my position, but at the same time, I'm gonna understand the other people, how my colleagues they are going through, and how I can be a big help for them. I can support them for their mental well-being. So this is some of the things we're gonna learn. So would you please tell me some of the things that you're understanding about these statements from the Martin Luther King Jr.? Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. When you hear this statement, what is coming in your mind? What do you think about it? Justice anywhere is a threat to justice everywhere. Any comment from your side related to this? Uh, Anywhere is a threat to justice everywhere. And many times we see the small things and we avoid it. We say, oh, it is not about me. It is going through another person, their life. So I no need to get involved. Many times we try to avoid many things, right? But Brother this, Zara is having her point of view on this statement, and she is going to okay, share. okay, Jara. Um, Good afternoon. Good afternoon, Jara. I want to say that related to organization perspective, favorism, I think favorism, if I will relate it to favorism, if there favorism exists in different matters and in different in dealing of the employees, in dealing with employees, if we do favorism with employees, that leads to injustice, and it will be a threat to justice in on their rights. Um, When we do favorism with one employee, so I think that will lead to injustice with other employees as well. it's true. Uh, So we should keep the equality and the equal rights for everyone, for all the employees, no matter whether they are the senior management or whether they are the second line management. and you're gonna face the favoritism. I think most of the places, as long as the leader is secure, only the secure leader, they do not do the favoritism. But if the leader is not very secure, then you're gonna face the favoritism. Uh, so how you think you're gonna deal with that? You're gonna face the injustice. You're gonna face the favoritism. Uh, but then sometimes we need to be encouraged Hmm. enough to talk about the fair. Yeah. Like if one of my senior is doing, Mhm. Yes. and one of my junior, they have both have a conflict with each other. I Mhm. would have an it, like I should be uh, have courage to talk about that. That. If I know if my senior is knows that I am doing against him, they can do anything, like anything. But if I have courage and I am on the fear, so that matters. If that not happens, the junior staff, they always thinks that this is unfair to us and it is injustice for Mhm. us. So Mhm. this is like this. Yeah, that is very true. Very true. Thank you, Daniel sir. Anyone else?
Sometimes we are just a listener to someone and we are just helping that person out in grievances and end up people considering that we are doing injustice to the rest of the people and giving attention to one particular person. Mhm. But how are you gonna deal with this situation? That's what I'm asking. We just end up clarifying things that you don't know. We are just dealing on this matter and this matter. But Mm, sometimes, people start creating stories about it then. If mm, you are giving attention to someone particularly to help their grievances out, the rest mm, of the people might end up thinking that you are being unfair to the rest of them. mm. Yeah, it happened too. It's true. It's true. What's the best way to deal with this? Yeah, think about it that if you are bold enough, if your heart is clean enough, and you think that you treat other people well, then you have the boldness and courage to talk about it. That I did not understand that why it happened. Someone deserved these things, but another person is receiving this favor. Would you please explain to every one of us so that we are not misunderstanding the situation? So talking about this is very important. That we need first place she mentioned that, yeah, we need to talk about it. Mr. Daniel also mentioned about it. It's important that we need to have the courage to talk about it. So what about this statement? Uh, what do you think about it? Worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but never gets you anywhere. Because if you keep on focusing on your problems, you won't be able to solve them. Yeah. Mhm. But how you can solve them? How you would be able to solve them? I think first thing is not to focus on the problems rather than just to focus on the solutions and the resources which we have, and Mhm. then automatically we'll end up solving the problem. Yeah, that's very true. The focus, not the problem, yeah, the how to solve it, and the resources. You mentioned it very good. The resources, not that what I have or my teammates or my office, how together we can solve the problem. And that is focus on the problem will come. Always gonna problem will be with us. Last 2000 years, problem was with us, and the next 2000 years, the problem will be with us. But how we can solve it, that is very, very important. And what resources we have and what we don't have, we can discuss about it. And that is the way we can move forward. Anyone want to share anything about it? Oh, stress management is life management. If you take control of your stress, your life will thank you for it. What do you think about this statement? Stress management is life management. Stress ultimately leads to physical health as well. Mhm. Yes. It's not just on your performance or something, it directly leads to our personal life. It leads to, it affects our personal life and it affects our mental health as well. And it affects our physical health as well. Mm. Yeah. Like migraines, for Mm. example, one of the main cause is stress. Mhm. Yeah. We cannot. So I think in organization we should practice meditation and 5 minutes stress reducing therapy. Mhm. Like in a day, start of a day, just for 5 or 10 minutes, we should just sit properly in a proper posture and raise our hands in a victory form. That's what we were told in NLP class. Mhm. So the moment you change your position or your posture like a victory form, you start getting positive energy. Mhm.
or meditation like deep inhale or exhale. Yeah. So management is very important, right? Yeah, But stress these are will just come. techniques. Yeah, stress will come, and many times stress is good also. So there are some good stress and some of the bad stress. But management is very important. Okay. What about Yes. this one? Brother, I want to tell about the stress management. The Yeah. one thing, Yeah. dialogue, I think dialogue is very important. If you think and talk about that, if you share your problem with somebody who Mm, calmly listens to you, that releases the stress. it's very true. And sometime maybe just listening to another person, but you are just listening to another person, it actually help another person to get it out, right, from their life. Yes, You're not doing yes, anything, yes. you're not suggesting anything, just listen. And that is the Just way listen. you can reduce other people's stress as well. Yes, very true. Very true. Thank you for sharing. Yes. So what do you think about this statement? If If you you don't don't, like, if you don't like something, change it. If you cannot change it, change the way you think about it. What do you think about this statement? Sorry, sorry. I think it's about creating perception. Mm, Either you change the scenario mhm, or the overall culture, or if you can't do it, then you let people think that it's good to go mhm, and make it more make positive approach in or frame make people think positive about it. mhm. You mentioned about the oral culture. Uh, why did you mention that? Oral culture? I mentioned organization culture because right now I'm thinking Okay. about organization. This is why. Oh, okay. Okay, okay. Organizational culture. Okay. Okay, sorry, I heard it. Oral culture, organizational culture. Okay. That's very true. Anyone have any thought about it? Yes. That, Changing something is not a solution. Mm, I think to change something is not a solution. We should understand it, और हमें उस कैसे कह सकते हैं सर उसको, मतलब उसको चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए और उसमें से पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखना चाहिए. चेंजिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, आई थिंक. उसको बेटरमेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ वी शुड मेक इट इम्प्रूव rather than changing. So you started driving, toward from your place to Lahore, and in the middle you saw there is something big happened, strike going on, something going Yeah, on. Yeah. So you're gonna change your route, or you're gonna go straight to the crowd or the protest? I will change my route, and but I will reach Lahore to uh, to Alternate route. join this training. Yeah, Or I will alternate, not, right? So it's a different kind of changing. or else I will go for the possible solution, that like how I can join uh, this training, Mhm. but I'll So not go back, and go for a change. you're gonna make some alternatives, right? Yeah, Yeah. So alternative that you can go over there different route. If you can go to the Lahore, or you say, oh, sorry, I cannot come. I'm gonna join online. I will prefer to join, I think, on location. I will change my route, Okay. So and I then will, you're gonna make some changes. yeah, Okay. So that is the thing. So you're talking about sometimes we need to change, right? Change yeah. the way we think, or change the way we act.
our action or our thinking, one of them, the things we need to change, if we really want the results. So sometimes change is important as well. It is a part of the solution. If you want the solution, that you need to have a change. Yes, brother, I have one example. Yes. Like, we have a half glass of water filled in front of us, Yeah. and it is not in my access to fill it out. But Mm. I Yeah. think somebody says it is half empty, Mm-hmm. but I say it is half filled. Yeah. But need to change that statement. It is not half empty. If I say it is half filled, so that negative and the positive. So it seems that I am thinking, no, I cannot change it. I'm not doing it, but I'm changing my thinking that it is not empty. It is filled half. Mm. Yeah, it's a perspective, right? How you see the things. Yes, Uh, how yeah, you see the things. it If is. somebody is doing it, but I cannot, it is not in my access to change it. But Mm, if I say, yes, he is doing, maybe somewhere he has some positive things to do it. So let's think about that. mhm. So every single one in this world who are entrepreneur or started something, as soon as they have seen some of the problem, as soon as they have seen the problem, they say, "Wow, there is an opportunity." You Yes, know, yeah. So how you see it, that wow, that oh, it is a half empty. I can fill it. Another person, so it is half full. How I can make it full as well. So it is yes, a both way. It is a good way that every problem there are some opportunities. So how we see the things, here you are in this joining this session, labor lost. You came here as a leader of your organization, of your department, or some house that you are actually leading position. You are doing something on organization things that if you go learn from that uh, sessions, that when you come back, you would be able to give something. The organization thinks very highly of you, or you thought that this is session is going to help me. There are some of the positive things you're gonna take it, and that is the things we are talking about, the mental well-being, that you gonna think about the positive things, that what we can take from this scenario. I used to work in New York City. I most of the time I talk to our team members, and then I said that my manager was not very good to me or the other employees, and he actually created a lot of hard time for us. And that is the time I decided, if I become a manager, if I become a leader, if I start my own organization or the company, I am not going to do some of the things that my manager is doing, and it is very hurtful for our employee, our team members, So how you take the things is very, very important. You can be bitter about the situation, or you can get better. That yeah, I want to be a better person from this situation. I don't want to take the bitter. I don't want to take the negative lessons from that. But if I have the opportunity, I'm gonna make it better for other people's lives. So, thank you. So, would you please take your pen or paper? Would you please write it down? What color you see here? Just write it down. What colors you see it here? Two colors, three colors, four colors, five colors. Um, just be real. Just write it down. Okay, neither you were in a different place than other people. Uh, would you please share what color you see here? Aqua, gray,
Skin, black, beige. Okay, aqua, green, black, green, peach. Okay, Beige, yeah. and Skin pink. color. You see the pink color. No, I didn't see pink. You did not see pink. Is there No, any? I think you see now. I think you changed the slide or something. Okay, this one, right? Is there anyone? Is okay. Again, repeat, Nida, please. Yeah. Again, repeat what color you see. Right now, I can see aqua, gray, skin color, black, Okay, and phone color, okay, the good. beige color. Yeah. Okay, is there anyone see the different color? Anyone? Who can see the pink color? Now I can see pink, And any other? Yes, pink and white. Anyone wrote before the pink color or no? Yes, No, I Yeah. have written. Okay. Who is that wrote the pink? What? Okay. Whether it's please, I have written pink, white, skin, and black. Okay. Pink, gray, black. So, Ms. Nida, did you see that someone sees the different than you see? yeah, Yeah. Now you understand, right? yeah, You first slide, you did not see any pink. Right? This when we talk about it, write it down. You did not see any pink. I did not see any pink. But exactly. some people have seen this pink. Yes, That's very yes. strange. That very strange, right? It's the way we see things. Yeah, actually, it's true to some people. The situation they see little different than we see in reality. Many times, the way you see that everyone do not see the, and it is true. This is the practical we did. That some people have seen the pink when you did not see any pink. But maybe average, in average, within 100 people, almost 17 people see the pink. Can you imagine that 17 people around you, within 100 people, they see the situation very differently than you and me, we see it. So this is a little bit work, and it is helping us to understand that around us, not everyone sees the situation in the same way. Anyone want to share anything about this slide? Anyone? People have their own way of handling things and seeing things. Mm-hmm. Yes. A pain which might be little to me might be huge for someone, Mm. and how is associating with that pain Mm-hmm. or the situation, even its happiness. Yes. Our our background is different, our experiences is different, right? Every single one of us here, we came from different backgrounds, different places, different education system. Some of our family environment also different. Um, some of our we grown up with the educated family. Some of us that our mom and dad or grandma, grandpa was not very educated, but they still given us the opportunity that, hey, I did not go to the school, but I want my children go to the school. The environment was different. And then many time I think about my own children. My children, we have enough food. They have enough food at home, but they don't want to eat, you know. But some people, some of the houses, maybe they do not have the food, enough food. They like to eat, but they do not have enough food. So I think about many times that wow, we have the food. We are actually pushing our children eat, but they don't want to eat. So it's different.
world we face currently is different. Opportunity for everyone is not same. Many of you that favoritism and other things, cultural background, educational background, many things we face differently. So we see the world very differently, very different than other people. So we need to think about it that the way I see the things, maybe my colleague is seeing the things very differently. We should not judge instantly. We should not judge instantly. We need to understand that, hey, you mentioned that you see the pink, why you think it, I did not see the pink, why you see the pink, and how I understand the perspective you are actually giving. So we need to try to put our feet into their shoes, and then maybe it is going to help us. What do you think about this statement? The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. The greatest weapon against stress. The simple phenomena, I will do it, I can do it, and I'll deal with it. Mhm. How you can honor other people's perspective, other people's opinion, how you can honor that, but at the same time, you know that you know the truth, you know that what you see that maybe it is right. So sometimes it can be very difficult for you. You know that you are right, but other people you need to honor their perspective as well. How it is possible? By not making a judgment just by seeing the scenario, but by understanding the scenario from their perception. Yes. Mm. And make them understand that it's okay, I'm not judging them, but we are leading towards a solution. We just need to solve this out. Mhm. We need to, many times we need to agree with the disagreement, right? That I agree that you are seeing the things in a different way than I see. We are agree with about it. That is the way we can honor other people, but at the same time, respectfully, we can disagree with other people as Like well. there's no gray, black, or white. It's just a different way of seeing things. Yes, very true. So stress acts as an accelerator. It will push you either forward or backward, but you choose which direction. What do you think about this statement? Okay, I'll share an example. Mhm. Okay, I joined an organization last month, and first 2 weeks are good, but other 2 weeks were so bad. Like I found so many negative things about it that it was actually triggering me. I Mhm. didn't want to go. I was not feeling happy to go over there. Mhm. And finally, during in a probation period, I just resigned and said that I don't want to continue over here. Mhm. So in some way, we can say that it put me backward direction, Mhm. and I didn't have strength to deal with it. On the other hand, I choose mental peace more over the things which Mhm. were going over there. Mhm. Yeah. So So career wise, it put me backward. yeah, but a little break, sometime it help you to see many option, other direction, and instead of putting yourself physically, mentally, emotionally, spiritually in many different ways, and you gonna harm yourself if you stay over there in that environment, some of the toxic environment. But it is better for your health, for to evaluate the situation, or maybe you will have little bit uh, different direction. And I believe this course is going to help you to find some of the solution that you did the good things, or you can think about it as well. So
although many times we think about that, oh, I'm going backward, but solitude before the multitude is very, very important. Yeah, you got my point? That you take a little break before going to the multitude is very important. So sometimes it is not that you going backward, you just staying the place, and now you are trying to make the judgment which direction I'm gonna go. You did not backward, you just stopped to in your journey that now which direction I'm gonna go. So it is a stoppage. I would not say that it is a backward. Yes. Like sorry, in development sector, in NGOs, we always use the term it's learning. Yes, So yes, so every time we learn from the problems also. We learn from yeah, many things which are going on. yeah, So if we just give up that we are just I cannot do now. So that is not the solution. So we have to think that this is a learning. In the future, I have to avoid this and mm, move forward. yeah. No, we have Chelsea, we have a course and we call it sometimes we win, sometimes we learn. And Yes. if not, we fail. Sometimes we win, sometimes we learn. It's a very good. That's true. Yeah, excellent quote. Yeah. So I believe that you are learning stage as well, and it is going to help you, to make the right choices of the decision as well. Inshallah, yes. Okay, so enough. So now let's think about the mental health. It refers to the cognitive, behavioral, and emotional well-being. It is about how individuals think, feel, and behave. These three things: think, feel, and behave. Behave is like action. The term mental health can also imply the absence of a mental disorder. Mental health affects daily living, relationship, and physical health. It is affect our daily living. Mental health, our relationship with each other, with a scenario, with a different kind of relationship. It's not only with the people that we are working with, but with the relationship with the scenario or relationship with the future, uh, the things is coming with that thing. Oh, I cannot take a risk on that. I'm not gonna go. So many times we avoid the things as well, and the physical health as well. So understanding mental health, so it is our affect our thinking, our feeling, our behavior. That means our action. Um, so depression. We already know about it. The depression many times is symptoms like persistent sadness, lack of interest, feeling worthiness, that not feeling worthiness. You think, oh, I cannot do this. Worthlessness. That is the depression. That this can be exacerbated or even tricked by the work environments. That if you do not like the environment, work environment, then persistent sadness, lack of interest, a feeling of worthlessness. So that, oh, I'm here, no one value my work. So if you think that you are saying something, no one is giving you the priority, no one listening to you, no one think that, oh, shut up, this kind of things, then a depression can come. And fatigue can severely impact the employee's productivity, that you already mentioned about it, that productivity uh, it can affect, and also the ability to engage with the team member. And the stress, when you talk about the stress, it refers to the body's response to any demand or challenges. Stress can be triggered by both good and bad experiences. In many cases, it helps one to stay focused, energetic, and alert. However, stress overwhelms one's ability to cope. It can impact on health, mood, productivity, relationship,
and quality of life. We're going to come back to the stress again. Stress can be defined as a state of worry or mental tension caused by a difficult situation. Stress is a natural human response that comes up to address challenges and threats in our life. Everyone experiences stress to some degree. Everyone. No one in this world, is said, "Oh, I don't have any stress," and that would not be a true statement. So let's think about, when you think about the understanding stress, the stress is the body's response to any demand or challenge, both positive and negative. Stress can be good. Is there anyone here that you can share something about that, how stress can be good? Anyone? Yes, I can. Okay, please. Like before exam, I feel eustress, a positive stress, Hmm. and I get worried. Oh God, will I be able to do it? This makes me, this persuades me to study. This Hmm. is an old example, right? Yeah. And then I worked hard and tried to get better grades. Hmm. But on the other side, I would say it's a distress when before exam I used to start doing vomitings and all. Oh God, I have a paper, or especially a financial management. I used to vomit a lot, and this used to create. It used to affect my health, and the problem during exam. And finally, I passed that exam with bad grade, the financial management, and it made me realize, okay, fine, there's a U stress and this is a bad stress. Yeah. So Yeah. Yeah, my son, as many time I tell them, they go study, 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 and he's a smart boy. The smart people do not study a lot. So many time he's get overwhelmed when the exam comes. So wow, I need to. So many time I saw him that actually he get up at night and study, study. But one time he was so stressed that actually he forgot that his timing of the exam. He thought it is an afternoon, but it was his exam was in the morning time. So sometimes stress can help you to study a little bit more focused, a little bit more, right? The positive effect that we can see the second slide, says the positive effects of stress. In moderate amount, stress help us stay focused, energetic, and alert. So it's a moderate amount of stress. But negative impact, the stress, excessive stress can overwhelm our coping abilities and affect physical and mental health. And importance of the managing stress effectively is crucial for maintaining health, productivity, and quality of life. Here, that how many of you think that uh, oh, I can handle the stress. Good amount of stress, I can handle it. How many of you think that you can do it? I can, but depends upon what topic it is or what subject it's related to. The stress is about what subject. If it's about some the health of someone whom I love most, then it's not the stress I can deal with. So I Mm-hmm. think it depends upon the scenario as well. Yes, yeah, it is definitely. Anyone else? Somehow we can. Yeah. And some of you, because of your experience with going through a lot of things, that now you can think, oh, it does not matter, we would be able to work it out, or we would be able to handle it. Some of you already went through a lot of stress, right? Yes, I think in admin and HR job we are running through the stress every day. Yeah, yeah, Every that, day, it's about every Some moment. of the things that come at the spot. We need a vehicle to travel. Oh, there is no vehicle, so yeah. we need to arrange that. So it is another type of stress we have. I think in HR role, in admin role, there is no deadline. Mm-hmm. We have
You and have it to prepare every moment for yeah anything, for any work, for any task. and There it is is no specific deadline. Yeah. that's true. That's true. And it is not about your personal life. It is other people's life also affect your life, right? Yeah. When you are in So HR field, you need to listen a lot of things from every single one, and many negative things from a lot of other team members. So it can affect uh, your life as well. and it takes a lot of patience, courage, and mental comfort level, Yeah. many things, because we are not even dealing this stress every day. It's about every moment. The Mm. next moment, we don't know how much stress is coming towards us, and we have to deal with it no matter what we are dealing in our personal life or in our brain or in our heart. It Mhm. doesn't matter. We have to deal it, and we have to manage with stress, and we have to take good out of that stress. Oh, We that. have to win that situation. Yeah, very true. I have a friend who is a doctor, and one day he told me that James, believe me that many times the patients come is so much blood, so much pain, and it make us overwhelmed. And I sometimes I just go inside my office and then 15-20 minutes I do not come out. And many time the patients they are thinking about, oh, doctor left us not doing taking care of us. And is it that it is sometimes it is overwhelming for the doctor even, although we are doctor, but it's still, it affect us. So sometimes the patients do not understand that why doctor is not coming, why doctor is not showing up. Is that we need to take care of ourselves. Otherwise, if we do not take care of ourselves, we would not be able to take care of the patients. So many time my also personal perspective it changed when he told me that many times I said, oh, doctor, he did not show up 1 hour, did not show up, why? So now my understanding after listening to him that I said, okay, now I understand that doctor they also need take some time out so that they can treat the patients with open-minded, with any kind of judgmental situation or any kind of negative, thoughts. So it's very, very important. Same thing need to do the HR field people that sometimes you need to withdraw yourself so that you can judge the situation from a new perspective. And it's very, very important. Anyone? Yes, very true. I would just want to share one example that what I used to do when I get tired after like handling many issues, the stress related to work, sometimes overwork, workloads, over work timings. So I just go downstairs in basement and just sleep for um, I think half an hour. And after that, I come up again in my office and just start my work. So this is how I handle, because I think it's very important when you are handling a lot of people of an organization of 100 staff. So I Yes. think you have to deal with 100 brains, mindsets, 100 one person has a lot of issues. He's so I think there is a lot of stress challenges with which you have to deal with. So it's very important for yourself first to get relaxed, for yourself to be in a good position so you can deal with that stress and that issues, and you can give them the appropriate solutions and correct and guidance, counseling, whatever they want, Yes, very good. whatever they need at that moment. Mansur Sab, can we take 20 more minutes? Can we go till 2 o'clock? Mansur Sab, Yes, brother. can we take 20 minutes? Uh, Brother, we can have few more minutes Okay, around uh, is 10 10 2 minutes p.m. till 2 p.m. Yeah, Yeah, actually, if we can conclude this in more 10 minutes or 15 minutes, 10. that will be better. Okay, okay, we'll do that. Thank you. Thank 10, you. as per the audience demand.
नहीं, अच्छा आपको क्या चाहिए? We can go. Yeah, we can go. Brother, we can go. We are in Public the demand. session. Yeah. So Okay, we can let's We have unlimited time right now. okay. Yeah. Okay. Okay, great. Yeah. So yeah, this is a step. We don't want to create too much stress and too much anxiety as well. So, but it is important to talk about it. So anxiety is an emotion characterized by the feeling of the tension, worriness, and thoughts. The physical challenges like increased blood pressure. People with anxiety disorder usually have the recurring intrusive thoughts and concerns. They may avoid certain situations out of worry. Anxiety disorder differs from the normal feeling and nervousness and anxiousness and involved excessive fear or anxiety. So we're gonna come a little bit anxiety about it as well. Um, but it is anxious, excessive fear and anxiety. No? It comes in our life. Oh, what is gonna happen? Oh, I think I am not able to do this kind of things. My um, exam is coming. Oh, I need to. My boss told me to give the project, finish the project in time, and I'm not able to do. There is a lot of things that happen. So anxiety, it characterized by the tension and worriness, and it is different from the normal nervousness. And it is the presence of intrusive thoughts. Some of the thoughts is right, some of the thoughts is not right. You are excessive thinking. And this kind of things, anxiety, it's many times it created the avoidance of the worry triggers. So anyone have any experience about the anxiety that you faced? And from that anxiety that you face some mental or physical challenges. Anyone want to share any real story? Related to anxiety. First time, I was in a not college yet, intermediate. I finished and then I went for a visa office, an American visa office, and that I'm gonna face the visa officer. Uh, that day, I remember that I did not sleep very well. I was thinking about how I'm gonna answer the question. My English was not very good, and what is the things that they're gonna ask me? All these things, I do not have the enough finances. I was not able to show my bank statement. I did not have uh, any property or houses in my own name or anything. So it was really anxiety, creating a lot of stress over me. And then what happened? Um, I went out um, at night time, to have a cup of tea in near store. And when I came my home, actually I saw the robber came and robbed my home, taken every single things what I had. And the next morning I supposed to go to the interview, and I do not have one shirt and one pant. Mansur Saab, it was really, really very crazy day for me. I need to go to my neighbor house and then I borrow a shirt because I did not have and at 9 o'clock in the morning and that shop is not open. I need to go to my neighbor house, borrow a shirt and went for the interview. Can you imagine that my situation was really very tough on that day? Any anyone have any stories like that? Okay, let's go. Happened to me too. Before coming to Lahore, I booked a ticket Mm, on 12:30 a.m. mm, To travel the night, and all of a sudden,
at the 11th I got the message that my bus is cancelled to Yeah. Lahore. Then I go to the railway station where I find that there is no seat over there on Mm. that train, even in any class. Mhm. Then I moved to the depot and I got a ticket over there. On that time, It, it is a creates anxiety. Yeah, create many yeah, things. Now yeah, we need yeah, to. yeah, yeah, I think, because I have to be here to start the session at time. Okay, this video, we're gonna watch a little video. You just focus on the video, okay? Masusap, is everyone can see the screen? Yeah, the screen is visible to us. Okay, okay, just do not think any other thing. Just focus on the video, okay? And just enjoy. Okay, how do you feel now? Mesmerizing. Okay, is there, you feel little bit relaxed? Yes. Definitely. Definitely. Um, so sometimes the changing the scenario, not changing the place, it can help us, right? When you go through many stress, not only workplace, at home, sometimes you get overwhelmed with the children demand, your family demand, your father-in-law's that side, yeah, you know, your own family member, your brother and sister, aunt, uncle, your children, all this overwhelm us many times. But taking some time for yourself is very important, right? How many of you really have the opportunity to take some time out for yourselves? I had an opportunity, not right now, but previously I used to go for solo traveling, and Mhm. it was amazing. That's very good. That's very good. So, um, you know, well-being, when you're talking about the well-being, it is we're talking about that our physical aspect, our mental health, and our emotional, our life satisfaction, all this area. Physical aspect is well-being include the physical health, emphasizing the fitness, nutrition, our self-care. And when you're talking about the healthcare importance, the mental health plays a critical role in overall well-being, influencing the mood and anxiety level. That mental health, if our mental health is not very good, and sometimes our mood it changes a lot, right? I can see my son, his mood change very often. You know, sometimes it's very good playing, and then playing with the sister, and then also started fighting with the sister and brother.
change very quickly. And then again playing, then going, eating, and helping each other. Then again, oh, I want the same ball. Both of them want the same ball, although they have their own ball, but still they want what. So mood it changes, sometime for the adult as well. So when you're talking about the emotional well-being, emotional stability is very crucial. It allows the one to manage feeling effectively and life satisfaction, being content with the life and having a sense of purpose contributes significantly to well-being. Life satisfaction, it can be different for different people. And sometimes some people say, oh, I was able to do something for other people. There is a satisfaction, that I don't need any credit from the behind. You were able to help some people. I remember that, one time I was able to help someone to buy a taxi, and that family actually do not know that we helped them to buy a taxi, but somehow they got it, a taxi, they got it, got the key, and the family, they drove inside the taxi. Full family is there. They're laughing, going for the ice cream. And the day I was so happy that, this family have a little bit hope, little bit more joy. The family came together. They are crying, all these things. It make us satisfied when you see the other people are going through the joy as well. Is there any one of you have that kind of some of the things that you did intentionally, unintentionally, make other people feel very happy, and how you During COVID, yes. during COVID, in my previous organization, they were terminating. We got a list of we got a list of people whom they were planning to terminate, especially Mm-hmm. the managers, because obviously it was COVID and it was hard time for everyone. Mm-hmm. So I decided with my CEO and I said, let's not terminate them. We make another strategy. We should uh, reduce the salary of high earning people, Mm-hmm. and let's keep them all retained over here, so that in this hard time at least we should not terminate our staff. And I think they will be a future asset for us. And my boss agreed with me, and today they are managers in that organization, the people whom they were terminating. Mm-hmm. Yeah, thank you for your contribution. That's really, really very good. Anyone else that your some of the contribution for the mental health of the organization or for the employee or for your team members? Yes, recently we arranged a retreat for our staff for their peace, for their mental health improvement. As you know, we are from PPI, and I we have staff of now one more than 100. Mm-hmm. The number has increased now from 15 to now it's now crossing the 100 as well. So um, we have arranged retreat to Naran and Kahan Mm-hmm. um, by the end of May. Yeah, in the beginning of this month. So the reviews from the staff members was that they were feeling very refreshed to start over again for their work, for the for uh, for their responsibilities, for their deadlines, for their tasks. So I think the working for or for the betterment of the mental health for the staff, we should sometimes uh, have to arrange such kind of events, Mm-hmm. and we have to give such opportunities so that staff should feel relief and release from the work burden. Mm-hmm. And yeah, Come we back with are, new energy, right? Come back yeah, to work with a new restore energy. that energy. Yes. Yeah, that's very important. Very important.
And Mansoor Saab is very good at organizing this kind of event. If you don't know, he loves, this kind of things organized for our organization as well. We have so Yeah. many, yes, as well. It's, We also arrange sometimes birthday parties as well, mm, sometimes just dinners as well for the staff to just have a meeting, a get together to feel fresh and feel free from the workload. yeah. Because I believe going in the same routine always lead to an overburden situations time, and so I think it's very important to Important. have such kind of activities, and I think HR played a vital role in these in managing these activities. Mm. That's true. Very true. Thank you for sharing. I hope that other organization, they will do the same thing for their employees so that, refresh them and then Yeah. also come back to work with a new energy, new hope, new perspective, right? Break always help us to see the things in a different way, right? So, Yeah. yeah. So, physically, that you already mentioned about it, that stress, anxiety, and depression in the workplace, many times the physically we feel fatigue, headache. Ms. Nida also mentioned this kind of things, rapid heartbeat, and worsening of the pre-existing condition. Emotional feelings, the sadness, DPR, anxiety, anger, many time anger issue also, irritability, and also mental confusion, forgetfulness, difficulty concentrating or making the decision. That is there anyone here that who forget many things? I have a very good friend, very very good friend. He's so talented, and Pakistan knows him very well, and Christian society. But he forget many things. But he never forget the songs, writing, or anything, poetry, other things. uh, Many times people forget a different way, different things, but it is not from always the stress or depression, but some people just naturally forget the things, if they leave their car key in the taxi, sometime their glass they are looking for, although they are top of their head it is their eyeglass, but it's still looking for many things. And you will see, or already from some of your own relatives or friends, the funny things happen also. Uh, but we are not talking about these things, but we are talking about the real things that our stress, anxiety, depression it caused. And it can be very stressful for some people, and it can long-term harm. It can happen to your body as well. Sometimes you cannot eat enough, you cannot sleep, and you cannot make the decision. All these things it can happen from our stress and anxiety. And sometimes some of your boss said you something, and you got so hurt, and you say, oh, why he said that, I made a one time mistake, he knows me long time, but someone told you something, and it was really stuck in your heart, and you are very, regretful. I say, wow, why I did these things, and why my friend or my boss told me this kind of things. I feel stupid, and you are so stressed that you cannot sleep. Is there anyone went through this kind of situation? We all went through in a small or bigger way. So some of the, yeah, share some of the symptoms of the depression. Any depression. Symptoms of the And depression. What kind of symptom we can see that from the depression it can come?
comfort. We feel comfort by being alone, sitting alone, working alone, by not talking to anyone, by not communicating with anyone, by not even listening to anyone. We just want to be in our space. I think this is also kind of depression because we don't want to communicate and we don't want to tolerate other person, their interaction with us, their involvement. That's very true. Very true. So there is a emotional, some of the symptoms, and a physical symptom, right? Sadness, anxious, empty mood, feeling hopelessness, pessimism, irritability, feeling sometimes the guilt, worthlessness, and physically you can, we already talked about it, that difficulty sleeping, getting up, early morning getting up, it's very difficult as well. Sometimes you oversleep, and a headache happen, cramps happen, and digestive problem as well, and you cannot think clearly as well. And symptoms of the anxiety. Anyone? Symptoms of anxiety. We feel I think breathing issues, panic attacks, Yeah. confusion, angerness, Angerness. angry behavior, feeling of irritation. stomach churning, Yeah, it can, yes. Shivering. So worry, yeah. Feeling tense most of the time and difficulty controlling the worry or fear. The anxiety, one of the most important things is that difficulty controlling the worry or the fear. What is going to happen? What is going to happen? Sometime. And my mom, she used to worry, oh, when I'm gonna come back home. Oh, what is gonna happen when it's going dark? My mom was constantly worried about me, you know. But I always tell my mom, you cannot actually going further by worrying every time. But one worriness finished. When I came back home, oh, wow, glad you came back home. Then my mom started worrying about my brother, and then finish my brother come back, my mom started worrying about my sister. Constantly we have seen my mom worrying, but good, she was like that, but she loved us so very much that always worried, why not is coming back, is getting dark and these things. And some people, they always worry, and constant fear, something happens, something can happen, or robber can happen, you know other things. So, but some people, this anxiety, it can troubling them, sweating, and nausea, abnormal disorder, rapid heartbeat, all these things can happen. Some of the things is very normal. For some, it can be very stressful as well. And then, so performance that impact, decrease our productivity, and increased our absenteeism, and then quality of work, that it decrease as well, and energy level. All these things, it can happen, that affect our mental or physical well-being, our performance at work, and impact our mental health on the job satisfaction. At the same time, we already talked about it, that the mental health affects our satisfaction, that no, we don't get satisfied very quickly as well. Disconnection from job, from our personal roles, our accountability in that area also affect.
lack of organizational support, that is also effect that we do not get. And when an organization is not helping us, that we sometimes absent is very frequent, and also increase our turnover rates. All these things area impact our mental health and our job satisfaction. One of the statistics, it says that when you go through that mental or emotional stress, or it impact your performance and your satisfaction, that decrease concentration 75% time, it decreased your concentration. 60% time it decreased your, it increased your absenteeism. At the same time, 80% time reduced the job satisfaction, and 65% time increased the turnover. So it is a very big things, that if we are not satisfied with our job and other things, it can affect not only us as a person, but it affect the organization, affect our health, affect our mental health as well. And then I'm gonna. So some of the strategy we need to have how we can improve. Is there a few points can you mention that how we can take some strategy that it can improve our well-being, mental or physical well-being? What kind of providing awareness sessions by providing awareness sessions on different topics that will lead to improve and to maintain a peaceful mental health for the employees. Trainings, developing trainings, yes, and as I mentioned before, arranging some good retreats for the staff, yes, some good activities, some hiking trips and all that comes in the retreat. So where we can just get out of that workload and just spend time with each other, knowing each other in a good way, and spending a quality time with each other, and restoring our mental health and improving it. Wow, So you that want mention to it very good, that knowing each other actually help us, right? The bond we can create, knowing each other, knowing the background stories. The many time when my son and daughter does something, I don't get very angry very quickly because I know them. But sometimes other kids do something, I get angry. And so why are you doing this kind of thing? So knowing actually each other, it always helps. So promote the, and you also mentioned about the training is very important, and that for our mental well-being. At the same time, to increase our productivity, our creativeness, right, and talent gifts in that area. So we need to take some strategies as well. So just think, imagine you are holding a glass of water. If you hold it for a minute, it's no problem. All right, 1 minute holding a glass is no problem. But if you hold it for 1 hour, you will have an edge in your arm. 1 hour. But if you hold it for a day, and your arm will be feel numb and paralyzed. That it is. So it started from the very simple things. Holding a glass of water is nothing. It's not it. But holding it for a minute, no problem. But if you hold it 1 hour, it started, making an H in your arm. Holding it is gonna be numb and paralyzed.
your thumb. So the weight of the glass does not change, but the longer you hold it, the heavier it becomes. The stress and worries in life are like the glass of water, right? The more you hold, the more amount of time, then it's actually increase the stress and worriness. So think about them for a while. Yeah, no, nothing happens. Think about them for a bit longer, they begin to hurt. Think about them all day long, you will feel paralyzed and incapable of doing things. So little think you think about it, it's no problem. But that worriness, tension, all the things, anxiety, all these things, that the longer you started thinking about it, it began to hurt you. The longer you do it, it became paralyzed. You bring the fear in your anxiety in your life and helping you incapable, that you are not capable of doing many, many things. So because of that, that we need to, from this session, that we can learn that other people maybe will go through, but now we know that we should not keep it, hold it, the grudge against other people, unforgiveness against other people, judgmental mentality. We should not hold it against other people. And the more longer we hold it, it actually paralyzed us, not another person, it paralyzed us, bring the fear in our life. We are uh, getting traumatized in different ways. So it's very important. The stress management is very, very important, that we need to take out the stress from our life, so that we live a healthy life and happy life. The journey of 1,000 miles begins with a single steps. So journey of 1,000 miles begins with a single steps. So today, if you make some commitment that I'm not going to allow the stress today, Miss Nida, you're not going to be worried about all the things, is past. I'm going to take some single steps, positive steps. I'm not going to be bitter. I'm going to be a better person. And we can see that things started happening in our life. As soon as we see the change inside of you, inside of us, other people would be able to see it as well. So, yeah, so let's cut some of the negativity, our failure, our regret, and leave our comfort zone, so that we can improve our health, increase our productivity. We have the better relationship with other people as well. Anything is keeping us, uh, go forward, we need to start cutting that kind of things. And it is going to be very helpful for our well-being, mental well-being as well. So managing the stress at home and workplace, we need to make the balance. It is I who need to choose. It is not my boss. It is not gonna be other person is going to make the decision. I need to make the decision. Anyone want to say anything? I've heard that we should divide our day in 8 hours. 8 hours for friends and family, 8 hours for office, and 8 hours for ourselves for sleep. Mhm. But 8 And hours this way it will be balanced. and another 8 hour you need to take rest. Yeah. Proper is a 20, it's a 20 hours. If you work your life, but also you need to take rest. It's very important as well. Anyone else? So prioritize self-care, time management, set some boundaries, practice the gratitude. It also help balance the nutrition, sufficient sleep. And I would say that time it is possible to be capable. At the same time, you're gonna get lost. Sometime you're gonna smile, but still you're gonna struggle. Sometime you're gonna be kind, but also sometime you're gonna set boundaries. Sometimes you're gonna be vulnerable, but you're gonna be powerful at the same time. Sometimes you are very successful, but you can be traumatized.
Sometimes you are extravagant, but you can feel lonely. Sometimes you are very valuable, but sometimes you can be flawed. Sometimes you think, oh, I'm very introvert, but another time you can be extrovert and reaching out to other people. Sometimes you can be very loving, but another time you can be questioning that love as well. So inside of us, we have this kind of things. So you need to set the balance when you are capable, when you are lost, all right? When you are loving, when you are questioning. So think about this kind of things. We're gonna face both of the things in our life. And I will say a supportive work environment. Create it. Create a supportive work environment. And it is important that we support other people is also going to support us as well. And mental health and the well-being among the employees is very, very important. So building the resilience that you know how to solve the problem and foster some optimism, develop some positive mindset, and seek the social support. And that is the way we can help ourselves, we can help our family and our society as well. Okay. Sometimes we need someone to simply be there, not to fix anything or to do anything in particular, but just to let us feel that we are cared for and supported. And sometimes just be grateful that someone actually helped you to find the job. Someone was there for you when you went through some of the very tough time in your life. If you are grateful, then you can see that it give you a satisfaction as well in your life. So when you get a chance, write it down, some of the people name that these people, they helped me in my life. If you write it down and just make a call and tell them that, hey, I'm grateful that you did it for me, these things. And see that person will be encouraged and your heart uh, will bring a lot of satisfaction for yourself as well. So, okay, find some balance in your busy life. Take some time for yourself so that you would be able to help other people as well. Yeah, God placed you in a very crucial position, very important position God has given you. And I believe that it is not for yourself that you are in this position. You're gonna bring the satisfaction to other people's life as well. So find the balance in your life and encourage other people as well. Enhance the employee well-being. Thank you for giving us the opportunity to facilitate this session, and we hope that your uh, experience with Tilty is better, and just let us know how we can serve you more better. Any kind of feedback, if you can give it to Ms. Tabitha or Mansur Sab, it is going to be very helpful for our organization that how we can serve you or the future our clients a little better. So your feedback will be very highly appreciated. Anyone want to say anything? If not, Anything Mansur you want Sab. to add? Yeah, okay. Thank you, brother. Thank you very much. We are open to the WhatsApp group, and you are also have been added at that group. As if someone is having any question related to the topic related to this training, you can ask and you can share that question in that WhatsApp group at any time. I must appreciate it was excellent session. This was an excellent session and really very motivating. Thank you. Thank Thank you. you. You Okay. want to add something? Thank you, brother, for amazing session. It is a really important topic, and I think there is much need to discuss and to find the possible solutions for this on this topic for mental health for the professionals. Yes. So we need to talk Thank, about it. thank you, brother. Thank you very much. Thank you. Thank you for participating. Thank you.
You want to add something? Thank you, sir. It was very amazing session. Okay. Thank you. Thank you for participation. Thank you so much, brother. Thank you, Sister Jim. Thank you, Mansur Saab, again. Yeah. Thank you very much, brother. My name is Sean here, Mansoor Usman, and there are females talking to you. That will create a confusion for other people to watch out. Thank you. Okay. Thank you, brother, for having such a wonderful session. Yeah, thank you. Okay. Thank you. And we are going to have a lunch break, and then we'll get resumed after that lunch break. Thank you, brother. Have a nice day. Yeah, thank you. We'll be resuming at what time? At three is okay. Zara, and other three come another time नहीं है. तो फिर हम इसको ठीक है 3 बजे इसको रिज्यूम कर लेते हैं Three. बस ठीक है जी. आप अपनी ठीक है. We'll be resuming at 3 then? Yeah, three. At three. All right. Thank you. Thank you very much. Take care.
अस्सलाम वालेकुम, क्लास स्टार्ट हुई है।
थर्सडे है, 3 जुलाई तो 6:13 को बुलाना है। हाँ, बोल होगी। अच्छा तो है। उस आई थिंक इसलिए टू स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वो दोनों जारा को उसको मैं
सर प्लीज अगर आप उधर ही कन्वीनियंट है तो अच्छा अच्छा सैंडविच सुबह ये हेल्दी है बिस्किट्स मैं वॉशरूम गया रिमोट दिखाएंगे मेरा ये वाला एसी वाला, इनसे कह रहा हूँ कि एडजस्टमेंट कर दो। देखिए एसी ठीक चल रहा है, कुछ है कुछ इसमें हीट वाला ना चल गया हो। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं बहुत कम रिटर्न जब जाते हैं ना। ओके जी, थैंक यू वेरी मच डियर पार्टिसिपेंट। क्या तो लोग वापस आ गए? पानी की बोतल ले लो। अब आज के दिन में जो हम डिस्कस करी जा रहे हैं वो यही है कि ग्रीवेंसेस को कैसे हैंडल करना है, वर्क प्लेस को कैसे इम्प्रूव करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर एम्प्लॉयज आवर पीपल। तो उसी में फिर आपने ग्रीवेंसेस को बहुत डिटेल के साथ स्टडी किया, और साथ में जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे हों, काम कर रहे हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा हो, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोग हों, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से बैठ के काम कर रहे हो, तो वहाँ पे एक चीज जो इनएविटेबल है, नागजीर है या अल्टीमेट है, वो डेट इज द राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और क्रिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना। ठीक है। इफ टू पर्सन आर वर्किंग ऑन द सेम टास्क, तो इसका मतलब ये होता है कि वन इज यूजलेस। एक ही सोच के साथ दो तरह की लोग, एक काम पे दो बंदे काम कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि फिर एक की जरूरत नहीं है ना। तो दिस इज नेचुरल कि आपके बीच में, लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार हो, और फिर आप इख्तिलाफ राय कर भी सकें, और इख्तिलाफ राय को डिफेंड भी कर सकें, और उसको वो बता भी सकें कि हाँ भाई ये हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और ये आपके होने का, आपके एग्जिस्टेंस का, आपके यानी कि स्टैंस का बता देता है कि आपकी भी कोई अपनी ओपिनियन है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा जोक शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि एक, आपको पता है ना फौज में डिफरेंट रैंक होते हैं, ऑफिसर्स रैंक भी होते हैं और वो दूसरे रैंक भी होते हैं ना। जो ऑफिसर्स रैंक के पास जो जवानों का स्टाफ का ना, तो एक मेजर साहब या कर्नल साहब ना, कर्नल साहब की उधर मेस को विजिट कर रहे हैं, साथ साथ उनके एक हवलदार भी थे। तो कर्नल साहब ने पूछा कि अच्छा जी, आज क्या पका हुआ है? तो हवलदार ने बताया पूछ के शेफ से कि आज करेले पके हुए हैं। कर्नल साहब ने कहा क्या जबरदस्त चीज है करेले, क्या कितनी अच्छी चीज है करेले, मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ। हवलदार ने कहा जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई बड़ी चीज है, मैंने तो आज घर में भी करेले बनाए हैं, मैं तो सुबह भी करेलों से नाश्ता करके आया हूँ, घर जाके भी करेले खाऊंगा, और तो मेरा तो है कि पूरा हफ्ता करेले ही खाऊंगा ना। तो खुश हो गए कर्नल साहब, तो कर्नल साहब चले गए। थोड़े दिन बाद फिर विजिट पे है ना, को हफ्ते बाद ना, तो उनसे पूछते हैं कि हवलदार वही साहब था, तो कहते हैं जी क्या पका है आज? हवलदार साहब कहते हैं कि जी आज करेले पके हैं। कहते हैं यार कर्नल साहब वही करना था। यार ये क्या तरीका कार है, कि पहले भी करेले पके हुए, आप भी करेले पे, करेले भी वो खाने वाली चीज है। करेले भी वो खाने वाली चीज है यार, ऐसे बस। कहते हैं, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने तो करेले बिल्कुल बैन कर दिए हैं, मैंने तो घर में बीवी को भी मना कर दिया करेले कभी नहीं पकाना ना। तो कर्नल साहब उठ के कहते हैं यार ये क्या मसला हो गया, अभी पिछले हफ्ते मैं आपके साथ आया था, तो आप कह रहे थे कि करेले ये चीज नहीं, वो है, मैं नाश्ता भी इससे करता हूँ, मैंने पूरे हफ्ते में बनाना है, तो अब आप कह रहे हैं कि करेले बिल्कुल मैंने बैन कर दिए। तो वो सलूट मार के कहता है कर्नल साहब को हवलदार कि सर मैंने नौकरी आपके साथ करनी है, करेलों के साथ नहीं करनी। ठीक है, करेलों के साथ नौकरी नहीं करनी, मेरी जॉब तो आपके साथ है। तो वर्क प्लेस के अंदर ना कन्फ्लिक्ट और जो आपकी ओपिनियन है ना उसका होना जरूरी है। ठीक है। जब ओपिनियन, आप अपनी अपनी ओपिनियन देंगे, उमर साहब, डैनियल साहब और जारा एंड कविता जलाल, सब लोग डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे होते हैं ना,
अपनी अपनी ओपिनियन देंगे, आपकी ओपिनियन है, आपकी एग्जिस्टेंस है, आपकी मौजूदगी है। हमें दूसरों की जो ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको वेटेज देनी है ना। तो ज़ाहिर है उसको अंडरस्टैंड कर। अब लेकिन ओपिनियन और इस तरह की चीजों पे ना फिर बहुत सी चीजें क्रिएट होती हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती हैं? प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करती हैं कि फिर लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते, राइट। तो जब बर्दाश्त नहीं करते तो फिर क्या होता है? हमने तो वर्क प्लेस को एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है जी। फिर आपका क्या होगा? वर्क प्लेस पे जो साइनर्जी क्रिएट होती है वो साइनर्जी क्रिएट नहीं होगी। साइनर्जी के कंसेप्ट को समझते हैं आप? तो मैं साइनर्जी का कंसेप्ट क्या है? बेटा आप साइनर्जी को समझते हैं कि साइनर्जी क्या चीज है? आप थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे? अच्छा, साइनर्जी देखिए, हम एक बात कहते हैं ना अक्सर, एक और एक तो 11 होते हैं। हम अक्सर बात करते हैं एक और एक 11। अगर देखा जाए पॉजिटिविटी, जी, साइनर्जी, साइनर्जी की बात। जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, सिनर्जी एनवायरनमेंट इज लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो पूरा टीम के साथ कोऑपरेट करके कि हम्म, आप अपने गोल्स को मीट मीट कर सको। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। साइनर्जी मतलब कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव वे में काम करना, और टीम के साथ मिलकर काम करना, और टीम से काम लेना ना। सिनर्जी इस सभी के हम कहते हैं ना अक्सर एक और एक 11 होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि एक और एक 11 हो जाते हैं, एक और एक तो दो होते हैं नॉर्मली ना। लेकिन ऐसे उमैर हैं और डैनियल साहब मिलके अपनी अपनी एनर्जी के साथ कोई टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक एनर्जी डैनियल साहब की है, एक एनर्जी उमैर की है ना, ठीक है। अब इन दोनों की एनर्जी अपनी अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा, एक एनर्जी वो भी क्रिएट होगी जो आप दोनों के कोलैबोरेट करने से होगी क्रिएट, जिसको कहते हैं वैल्यू ऐड करना, ये एडिटिव फैक्टर क्रिएट करना ना। एक दूसरे को सपोर्ट के साथ भी तो होते हैं ना कि वो एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ। तो जब वर्क प्लेस है उसमें हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें कोई कंफ्लिक्ट ना हो, और हम अगर कंफ्लिक्ट हो तो उसको रिजॉल्व किया जाए और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, ताकि एज अ टीम हम काम करें। और टीम का मतलब क्या होता है? जरा टीम का मतलब क्या होता है? TEAM। यस, यस, थैंक यू। टीम तो देखिए आता है ना, टीम टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम टुगेदर एवरीवन अचीव मोर ना। तो टीम का मकसद भी ये होता है। और वर्क एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो जाएगी और इससे मिलती जुलती चीजें होंगी, तो ऑफिस का एनवायरनमेंट या वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव एनवायरनमेंट हो तो फिर कोई भी प्रोडक्टिविटी उससे इंक्रीज नहीं होती। और अल्टीमेटली फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी आप काम कर रहे हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी स्टेक पे चली जाती है, राइट। फिर एक और चीज हम करते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन की, जब हमें ग्रीवेंसेस को हैंडल करते हैं, ग्रीवेंसेस के ऊपर और डिटेल से बात हो चुकी है, ठीक है। कंफ्लिक्ट को हैंडल करते हैं, उससे अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी ना। अगर आप लोग आपस में झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, कोई ना कोई गिले शिकवे लेके जाते रहेंगे अपने हाई अप्स के पास, किसी ना किसी के पास, तो अल्टीमेटली सारा दिन तो इसी में गुजर जाएगा। सारा दिन तो इसी चीज में गुजर जाएगा। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने गोल्स हैं जो उसने अचीव करने हैं, अल्टीमेटली वो अचीव नहीं हो सकेंगे, राइट। और फिर आप देखिए, आप मुझे बताएं कि फैमिली ऐसी हो जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ आपस में फाइट करते रहते हैं, इसका उनके बच्चों पे, उस फैमिली पे क्या इम्पैक्ट आता है? नेगेटिव। क्या वो फैमिली ग्रो करेगी? वो फैमिली डेवलप होगी? उसके बच्चे किस तरह से, उनका ब्रॉटअप कैसा होगा? उनके बच्चों का ना, जो उस फैमिली में स्ट्रेस में होंगे, ठीक है, उनका मोराल डाउन होगा, कोई मोराल नहीं होगा। वो अपने आप को यूजलेस समझेंगे, वर्थलेस समझना शुरू हो जाएंगे ना। यूजलेस एंड वर्थलेस। जब आप वर्थ, कोई भी आदमी, हमने भी कभी कभी ऐसा टाइम आता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हम काम करते हैं, कोई ऐसा एक्टिव, कोई ऐसा एक्शन होता है, कोई ऐसी चीज होती है कि हमें लगता है कि यार शायद हम इस टाइम में, इस मोमेंट ऑफ टाइम में वर्थलेस है, कम माइकी का शिकार हो गए हैं, ऐसा होता है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे सीनियर सबको सुन नहीं रहे। सुन नहीं रहे। पॉसिबल ये है कि वो किसी और एडवर्सरी में हो, लेकिन ये कि हमें ये की होता है, समझ नहीं, क्यों नहीं सकते, हमें मतलब नहीं कर रहा है।
जी, बिल्कुल ना। उस वक्त हम लोगों को फील होता है कि हमें अपने कमतर होने का एहसास पैदा होता है। हो सकता है वो फॉर द टाइमिंग हो सकता है कोई और मसला हो, लेकिन जिस चीज पे हमें बिलीव करना है वो बिलीव ये है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम कितने स्ट्रांग हैं। हमारी वर्थ आपको पता है, आपकी वर्थ किसको पता है सबसे ज्यादा? बहुत पता है। जरा आप कभी शॉपिंग करने, आपका ब्रांड कौन सा फेमस जो अच्छा ब्रांड है? लाइमलाइट है। लाइमलाइट पे आप जाती हैं, कोई सूट पसंद करें आप, तो उसके ऊपर सबसे पहले क्या देखती हैं आप? प्राइस। उसका प्राइस टैग देखती है ना। प्राइस टैग जब आप देखती हैं तो फिर कभी मिसाल के तौर पे आप कितनी प्राइस हो उसकी? 15। और आपको सूट या आर्टिकल बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है ना, अच्छा लगना शुरू हो जाता है, तो कभी आप ऐसा करती हैं कि चलें जी 15 का इसका टैग है, प्राइस टैग, इस प्राइस टैग को 15 से हटा के ना, मैं तो आप चलते हैं काउंटर पे, काउंटर वाले को कहें ये लीजिए 17,000 18,000, मैं तो बहुत खुश हुई, ये तो प्राइस टैग आपने गलत लगाया हुआ है, इसकी प्राइस तो मैं तो आपको 17 18 दूंगी। शॉपकीपर आपसे कहे मैंने 15 लेना है, नहीं, ये कह दे नहीं नहीं, मैंने तो 18 से कम देने ही है। तो आपने उस सूट को जज किया उस प्राइस टैग से जो उसके ऊपर लगी हुई थी। एक प्राइस टैग हमारा भी होता है, वर्थ की बात की ना, एक हमारा भी प्राइस टैग होता है, एक एम्प्लॉय का भी प्राइस टैग है। हमने जो प्राइस टैग अपने ऊपर लगाना है ना, दूसरों ने हमें उसी प्राइस टैग के ऊपर रेट करना है, रैंक करना है, तो दूसरे हमें रैंकिंग किसी तरह से करेगा ना। तो फिर जब जरूरी है कि हम वर्थलेस फील ना करें, अगर कभी वर्थलेस फील करें तो हम अंडरस्टैंड करें कि यार ये टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, ये खत्म हो जाएगा, उसको इवेलुएट करें, ना कि खुद चले जाएं डिप्रेशन में या अपना मोराल को डाउन करें। जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं तो लोगों का मोराल भी डाउन होता है, लोगों को रिटेन करना भी आसान नहीं होता ना। ठीक है जी। और अल्टीमेटली जहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट राइज करेगा तो मे बी कोई इंडिविजुअल छोड़ के जाए, फिर वो लिटिगेशन में चला जाए, लेबर कोर्ट में चला जाए, किसी और के कोर्ट में चला जाए, कंपनसेशन कमिश्नर के पास चला जाए ना। अल्टीमेटली तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? ऑर्गेनाइजेशन को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लॉयर को हायर करना पड़ेगा, बदनामी अलग मोल लेनी पड़ेगी। आपके सामने एक केस बताता हूँ कि कुछ अर्सा पहले नेस्ले में, नेस्ले का एक वर्कर था पाकिस्तान में ना, नेस्ले का एक वर्कर था, तो उसको उसने किसी बात पे इख्तलाफ किया तो उसको वहां से उन्होंने निकाल दिया ना, कुछ केस ऐसा कोई इशू हुआ, तो वो लिटिगेशन में गया, लेकिन लिटिगेशन में उसकी उतनी दादरसी नहीं हुई, यानी उसको कुछ मिला नहीं ज्यादा, या उसको लगा कि हमारा लीगल प्रोसेस थोड़ा स्लो है, तो उसने वो कर दी, किसी कोर्ट के अंदर खड़े होकर ना अपने ऊपर आग लगा के सुसाइड कर ली ना। सुसाइड कर ली तो वो हाईलाइट हो गया इशू, हाईलाइट हुआ तो लोगों ने नस्ल को, किसान की नस्ल की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर बैशिंग की, उसको उसके ऊपर उसको सुनाया, उसके ऊपर बताया, बहुत से फोरम पे ना ये चीज डिस्कस डिस्कस हुई। उससे क्या हुआ? नस्ल की रेपुटेशन खराब हुई। फिर नस्ल वालों ने कंपनसेशन की उसकी, उस फैमिली की जाके ना, लेकिन खैर लॉस तो हो चुका था, लेकिन कंपनसेशन की, लेकिन उसकी रेप्यूट खराब हुई। जितने भी प्रोफेशनल लोग थे ना, डिफरेंट प्रोफेशनल फोरम पे जैसे लिंक्डइन है या और, वहां पे जाके उन्होंने इसको कर्ज किया, इस सारे एक्शन को ना, कि आपने ये क्या किया, वहां के नस्ल नस्ल कितना बड़ा ब्रांड है, लेकिन लोगों ने कुछ किया। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को फिर क्या करना पड़ेगा कि अगर वो नहीं करते तो फिर लीगल एक्शन में जाना पड़ेगा, बदनामी होगी, रेपुटेशन खराब हो जाएगी ना किसी भी। तो जब हम इन चीजों को हैंडल करते हैं तो हमें अल्टीमेटली क्या फायदा होता है कि लीगल रिस्क भी कम हो जाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये तो अल्टीमेट है, लोगों का मोराल हाई रहता है जब ग्रीवेंस, किसी की बात सुनी जाए, किसी की बात सुनी जाए तो उसको इस बात की तसल्ली हो जाती है कि मेरी बात को सुना तो जा रहा है एटलीस्ट। अक्सर उर्दू में बात करते कहते हैं ना कि सुनो सबकी, करो अपनी, सुनो सबकी करो अपनी। मतलब जब आप किसी की बात सुनते हैं, ग्रीवेंसेस को सुनते हैं, कन्फ्लिक्ट को सुनते हैं, और वो आप क्या कहते हैं एम्पैथिक, जो आपकी लिसनिंग है वो होती है। एक तो आप एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग, लिसनिंग के साथ सुनते हैं। हम तो जो हमदर्दाना रवैया है उसके साथ किसी की बात सुन ले तो समझ ले कि आधा तो वो इलाज हो गया वहीं पे, उसी टाइम पे ना, रिजॉल्व हो गया। जो उसका इतना गुस्सा आता है, बड़े सीनियर लोग होते हैं ना जो जो सीजन प्रोफेशनल्स हैं,
वो जब किसी से फीडबैक ले रहे होते हैं या किसी इस तरह की सिचुएशन में आते हैं तो उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, उसको दिल का गुबार निकालने देने का मौका देते हैं। आप लोग भी इस तरह करते होंगे ताकि उसका जो जोश है वो थोड़ा कम हो जाए, फिर वो थोड़ा सा सोचना शुरू कर दे, जो इमोशनल एक वो कंडीशन में है उससे बाहर निकल के आए, ताकि सोचने समझने की सलाहियतें उसकी वापस आए, चीज़ों को असेस करे, एवेलुएट करे ना, और उसके बाद रीथिंक करे, और रीथिंक करने के बाद फिर दोबारा से ट्रैक पे आ जाए। ऐसा अक्सर होता है। हम बहुत दफा क्या करते हैं, कोई डिसीजन जज्बाती होकर करने का सोच लेते हैं, फिर बाद में लेकिन अगर हमें कभी रीथिंक करने का मौका मिले, हम सोचते हैं काश कि हमने ये डिसीजन ना किया होता उस टाइम पे ना। जी। आप लोग को इस पे कोई बात करना चाहिए? आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कोई वाक्य आया हो जिस पे आपको रिग्रेट हो कि यार ये नहीं करना चाहिए, या फिर आपने रीथिंक किया, थिंकिंग के लिए खुद को टाइम दे दिया, और उसके बाद फिर दोबारा जब डिसीजन किया तो एक वो मेच्योर डिसीजन किया कभी? बहुत दफा होता है लाइफ में, बहुत दफा, मैनी टाइम, एक बहुत दफा हम करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं ना, बगैर किसी सेकंड थॉट के वो फौरन डिसीजन ले लेते हैं, फिर उनको उस डिसीजन की प्राइस पे करनी पड़ती है ना। जी जी। हम्म। आप उसके साथ बैठना पड़ेगा, डायलॉग करना पड़ेगा ना, आप उसको समझाएं। जैसे देखिए एक मसाल है ना, एक जो होती है मक्खी, वो सारे जिस्म, साफ सुथरे जिस्म को छोड़ के जहाँ पे फोड़ा फिंसी होता है ना, दाना वगैरह को जख्म होता है, वहां पे जाके बैठती है ना। ये उसकी चॉइस होती है। अब उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ बात करेंगे, चले एक बात हमारी डिस्कस हो चुकी है। ऐसा कई लोगों की आदत होती है, वो करते हैं इस तरह ना। अब एक दो बताएंगे ना, इसका बार बार रिपीट करने का क्या फायदा है? उसकी काउंसलिंग की भी जरूरत है। ठीक है। हाँ, उसके साथ आप बैठ के डायलॉग करें कि क्या ये प्रोफेशनल चीज में वन टू वन करें। ये नहीं है कि चार पांच लोगों में बैठ के करें। कहते हैं ना, अगर किसी में आपको कोई अच्छाई नजर आए ना, जैसे एक शॉप में मैं गया लाहौर में, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप हमारी सर्विस से मुतमईन है, अगर आप हमारी सर्विस से मुतमईन है तो हमें बताएं, और यानी अगर आप हमारी सर्विस से मुतमईन है तो सबको बताएं, लोगों को बताएं, लेकिन अगर आपको हमसे कोई शिकायत है तो हमें बताएं, क्योंकि हमारी इसके अलावा कोई और ब्रांच नहीं है। तो ठीक तो उन्होंने करना है ना, तो आप उसको बताएं। लेकिन जब आप ये करते हैं ना, कोई ऐसा इशू हो, तो आप किसी बहुत से लोगों को बताते चले जाएंगे ना, तो फिर वो जिसका इशू होता है ना, वो रिएक्टिव हो जाता है। वो रिएक्टिव होता है ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा माशरे में कि जब नया कोई वो आती है, कोई मिनिस्टर आता है, कोई भी हुकूमत में आता है, तो या कोई भी किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का हेड आता है ना, तो आते साथ ही वो ये कहता है कि मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो एक बड़ा सारा नारा लगाता है ना, मैं ये सब ठीक कर दूंगा। तो ये जिनको वो ठीक करने का कह रहा था ना, उनके सामने बैठ गए, वो मुंह से ऊंची आवाज से तो नहीं कह सकते, लेकिन हर बंदा दिल ही दिल में कहता था, फिर करके वो खा। तो और वो फिर अपना टेन्योर गुजार के चला जाता है ना। तो बंदा यही कहता है फिर, आज तो वोटा वो आ गया, तुरंत खाना आ गया, तो करके दिखाओ। तो करके वो खा, ठीक है ना। हाँ, वो ठीक हो गए। तो फिर इस तरह की चीजें होती है ना, तो रिएक्टिव, अगला बंदा रिएक्टिव हो जाएगा जब आप उसके साथ उसकी किसी चीज को सबके सामने हाईलाइट करेंगे ना, ऑफिस के एनवायरनमेंट में, तो वो रिएक्टिव हो गया, उसी तरह बार बार करता चला जाएगा। वो उसकी जिद बन जाएगी ना। आपने काउंसलिंग और ये कोचिंग इसलिए होती है, मेंटोरिंग इसलिए होती है, किसी चीज को आपने ग्रेजुअली रेक्टिफाई करके चीजों को ठीक करना होता है ना, उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी यही होता है, राइट? तो जब हम ग्रीवेंसेस को हैंडल करते हैं, कन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हैं, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीजें होती हैं, आपने वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अक्सर अवार्ड होते हैं, रिवॉर्ड होते हैं, जिसको कहते हैं बेस्ट प्लेस टू वर्क, बेस्ट प्लेस टू वर्क अवार्ड। ठीक है। तो हमने भी, तुम्हारा CHRP के हजारे ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें था कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के ऊपर बात करती था। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में बेस्ट प्लेस टू वर्क कौन से, कैसे देखिए, एंग्रो केमिकल है, आप सुना होगा ना एंग्रो का?
लकी कोरियन यानी आईसीआई पाकिस्तान है, बैंक अल है। तो ये सारे के सारे सर्वेज कराए जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के ऊपर, रिटेंशन के ऊपर, एम्प्लॉय एंगेजमेंट के हवाले से, ठीक है। एम्प्लॉय कितना ज्यादा एंगेज है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एम्प्लॉय डिसएंगेज तो नहीं हुआ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे पाकिस्तान पार्टनरशिप इनिशिएटिव है, जैसे निदा हमारे साथ है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिसएंगेज हो जाता है, अल्टीमेटली फिर वो क्या करेगा? ला सर ताल्लुक। वो जी बोलिए। जी वो अल्टीमेटली जॉब डिससेटिस्फेक्शन उसकी बढ़ेगी, या तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑफिस पे एज अ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लायबिलिटी के तौर पर काम कर रहा होगा, खुद भी लायबिलिटी बनता जाएगा और इवेंचुअली खुद छोड़ना भी चाहेगा। उसके लिए जो जॉब है उसकी या जो उसके गोल्स हैं वो उसके लिए टॉर्चर बनना शुरू हो जाएंगे, उसके लिए मोटिवेटिंग नहीं रहेंगे, वो इनकरेजिंग नहीं रहेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही एक अलग शो कर रही होगी ऑफिस में, और वो टर्नओवर भी बढ़ेगा, वो जॉब छोड़ना चाहेगा। जॉब छोड़ना चाहेगा, और जब तक जॉब छोड़ के स्विच नहीं करेगा ना, तो तब तक तो आपके ऊपर एक तरह का बोझ ही रहेगा, बिल्कुल, यानी वो एज अ लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी काम कर रहा होगा। जी बिल्कुल लायबिलिटी। लेकिन जो इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी देखें, तो जो एम्प्लॉय एंगेज होगा ना, उसको रोज ये पैशन होगा, यार कब सुबह हो, कब मैं ऑफिस जाऊँ, कब मैं अपने काम पे जाऊँ, कब मैं लोगों से मिलूँ अपने लोगों के साथ, ठीक है, तब मैं और एंगेज कब मैं। एम्प्लॉय का एक और चीज भी होती है, वो इवन घर पे भी ना ऑफिस को लेके डिस्कस कर रहा होता है, ही इज ऑलवेज सो एक्साइटेड अबाउट द थिंग्स जो कि वो कर रहा होता है, कि वो अपने दोस्तों में भी अपनी ऑफिस के मतलब हैप्पीली चीजों को शेयर कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा ही है जैसा आप बता रही हैं। तो अल्टीमेटली देखिए कितने बेनिफिट्स इसके साथ मिलते हैं कि जब आप लोगों की बात सुनते हैं, ग्रीवेंसेस को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, तो अल्टीमेटली फिर आपके वर्क प्लेस के ऊपर कंफ्लिक्ट भी कम से कम होते चले जाते हैं, लोगों के झगड़े खत्म होते जाते हैं ना। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा मैं, कि हम लोग एक दफा लास्ट ईयर गए थे सैर करने कुमराट। 2-3 दिन का हमारा प्लान था, हम 3 दिन गए थे। तो उससे पहले बहुत से लोगों के आपस में इख्तलाफात थे चीजों के ऊपर ना, या एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट थे, ग्रेविसेस थी। लेकिन जब हम वो वापस आए हो गए, तो बहुत सी चीजें रिजॉल्व हो गई। उस एनवायरनमेंट में एक साथ रहे, एक साथ कई टास्क हमने किए, कंप्लीट किए। तो ये इसी तरह इसीलिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट की इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ताकि लोगों के बीच में जो वो है दूरियां हैं या कन्फ्लिक्ट्स हैं या मुख्तलिफ ग्रजेस हैं, वो कम से कम हो जाए। अल्टीमेटली ये तरीके, देखिए एचआर अब बदल गया है, ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैंने सुबह भी बात की थी जब हमने सेशन की इनिशियल कर रहे थे, कि पीपल सेंट्रिक चीजें हो चुकी हैं, मशीन सेंट्रिक, सिस्टम सेंट्रिक, प्रोसेस सेंट्रिक चीजें नहीं है, पीपल सेंट्रिक। ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है। उमेर हैं, डैनियल साहब हैं, जारा हैं, ये लोग इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को के लिए परफॉर्म करना है, इनका एंगेज होना, इनका बिल्कुल इन्वॉल्व होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये तो नहीं होगा कि अगर उमेर नहीं है, तो क्या वो जो लैपटॉप पड़ा हुआ है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा हुआ है, जो भी मशीन, जो भी सिस्टम पड़े हुए हैं, वो एंगेज होंगे। काम तो उमेर ने करना है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी तो उमेर ने इंक्रीज करनी है, चाहे सिस्टम इनके पास जैसा मर्जी हो, मशीनरी जैसे मर्जी हो। इसी तरह हेनरी फोर्ड ने ये कहा था कि मुझसे आप मेरी मशीनें भी ले लें, मेरी फैक्ट्रीज भी ले लें, सब कुछ ले लें, लेकिन मेरे पास मेरी टीम रहने दें, मेरे लोग मेरे पास रहने दें। हेनरी फोर्ड, अब बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। अब देखिए, जिसको मैनेजमेंट का एक तरह का गुरु कंसिडर किया जाता है, और इसकी बहुत सी जगहों पे एग्जाम्पल आती हैं, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन लेके आया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्ट तो कम से कम 100 ईयर्स से पहले ही होगी ना, 100 ईयर्स पहले उसने बात कर दी, मोर देन 100 ईयर्स की, मेरे पास मेरे लोगों को रहने दी। जब मेरे पास मेरी टीम होगी, मेरे लोग होंगे, तो मैं अल्टीमेटली दोबारा ये एम्पायर स्टैब्लिश कर लूंगा, ठीक है। उस वक्त की एक बात कही, ठीक है। तो लोगों का जब पीपल सेंट्रिक हो गए, तो फिर हमने लोगों के जज्बात का भी ख्याल रखना है, लोगों के इमोशंस का भी ख्याल रखना है, उनकी फीलिंग्स, उनकी अटैचमेंट, उनकी सेंसिटाइजेशन, जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में केयर करनी है, और उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो इस वक्त सब लोग बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय वेलबींग की बात कर रहे हैं, मेंटल वेलबींग की बात कर रहे हैं ना। अभी आपके सामने एक रिसेंट एग्जांपल है कि अभी करीम आप लोगों ने यूज की है ना, करीम आप लोगों ने यूज की होगी, बहुत अरसे तक यूज की होगी, ठीक है। अब करीम मार्केट से आउट हो रही है। करीम मार्केट से क्यों आउट हो रही है? करीम ने के अगेंस्ट कंपटीशन आया इन ड्राइव। तो करीम
के अगेंस्ट जब कंपटीशन आया तो करीम के जो कैप्टन थे, यानी जो गाड़ियां चलाते हैं, वो करीम से सेटिस्फाई नहीं थे। करीम का जो वो कमीशन रेट था वो बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू इन ड्राइव। ठीक है, तो कमीशन रेट जरा, हम जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम भी कस्टमर हैं, लेकिन हम कस्टमर हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। हम इंटरनल कस्टमर हैं, हम इंटरनल कस्टमर हैं। हम अगर इंटरनल कस्टमर खुश होगा तो वो एक्सटर्नल कस्टमर को खुश करेगा। एक्सटर्नल कस्टमर कौन है? जो आपके पास डोनर्स है। डोनर्स आपके पास एक्सटर्नल कस्टमर है ना। या फिर आपके जो प्रोजेक्ट आप करते हैं वो आपके एक्सटर्नल कस्टमर है। आपकी शॉप है, शॉप के ऊपर आप सेल्समैन के तौर पर काम कर रहे हैं तो आप इंटरनल कस्टमर हैं। और जो आपके पास बाहर से कस्टमर आते हैं वो आपके एक्सटर्नल कस्टमर हैं। लेकिन जब इंटरनल कस्टमर यानी ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब अटैच होंगे तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और वो फिर एक्सटर्नल कस्टमर को खुश करेंगे, प्लीज करेंगे, मुतमईन करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और फिर वो पैशन के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये इंटरनल कस्टमर का जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉय है उनका मुतमईन होना जरूरी है। ठीक है, तो ग्रीवेंस की वजह से आपको फायदा क्या होगा कि आपके एम्प्लॉय की एंगेजमेंट बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस चलता चलता चला जाएगा, और फिर आपको कंप्लाइंस जो है उसको फॉलो करने का मौका मिलेगा, और लोगों के बीच में डिफरेंसेस कम से कम होते चले जाएंगे ना। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइफ लॉन्ग इंप्रूवमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो जिस सिनेरियो में हम है ना, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि मार्केटिंग को जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना। दूसरा है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट या लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आप लोगों ने डिफरेंट डिग्रीज ले ली होंगी, डिफरेंट एजुकेशन का जो है पैरामीटर्स वो ले ली होंगी, लेकिन अल्टीमेटली हम जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो रिफ्रेश करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, हमें अब इसकी हमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा ना, कोई जो फॉर्मल क्वालिफिकेशन है, कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेशन मिलेगी, लेकिन हम आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं किन किन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। और यहाँ पे जो इस स्लाइड में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, ग्रीवेंसेस के अंदर ना, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, अनफेयर कंपनसेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनसेफ वर्किंग कंडीशन, रॉन्गफुल टर्मिनेशन ना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ग्रीवेंसेस इंक्रीज होती हैं और जिसको हमने हैंडल करना होता है ना। ठीक है जी, ये वो सारी चीजें हैं जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कि कंपनसेशन एंड बेनिफिट के अंदर वो है। ठीक है जी, ये भी वर्कलोड, आप लोगों ने कभी वर्कलोड को एवेलुएट किया, जॉब एवेल्युएशन किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या जॉब एनालिसिस कभी करने का इत्तेफाक हुआ? अच्छा चलें, ठीक है, किसी भी ऑफिस में जाएं तो ऐसा होता है कि कुछ लोग बिल्कुल फारग बैठे होते हैं, कुछ लोगों के ऊपर बहुत काम का लोड होता है ना। जब भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ होती है ना, रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते करूँगा, रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन देखती है यार हमें हमारी फंडिंग नहीं हो रही है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं आ रहे, तो ये ग्लोबल ट्रेंड है। फिर वो जॉब एवेल्युएशन और जॉब एनालिसिस कराते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जॉब एवेल्युएशन करते हैं, फिर वर्कलोड को भी देखते हैं, वर्कलोड को देखते हैं, फिर असेस करते हैं किसके ऊपर कम वर्कलोड है, किसके ऊपर ज्यादा वर्कलोड है ना। ठीक है, फिर उसको फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके ऊपर, ताकि ये ना हो कि कोई बर्न आउट हो जाए, और किसी के पास काम का ना होना भी ना, वो भी उसके साथ एक तरह की वो है ज्यादती है ना, कि उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, और वो फिर इन ट्रेंड नहीं रहेगा, वो चैलेंजेस की तरफ जाएगा नहीं, उसको नए चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। जब नए चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे तो अल्टीमेटली फिर उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कम होती चली जाएगी। एक अक्सर एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सुना हुआ ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ना। अब देखिए दुनिया में जब से ये दुनिया क्रिएट हुई है, कितनी तरह की चीजें आई हैं इस दुनिया में ना, कितने तरह के जानदार इस दुनिया में आए हैं, डायनासोर से, और भी बहुत सी जिनके रूप से, बड़े बड़े दरिंदे। लेकिन सबसे सिविलाइज कौन सा है जानवर? कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो सबसे ज्यादा सिविलाइज है, जिसने सबसे ज्यादा सरवाइव किया है, जो कि जिसको कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पैरामीटर पे पूरा होता है ना, जो आज तक पहुंचा है, इस वक्त तक है, और जिसका रूल है दुनिया में।
नहीं, इंसान सर, इंसान, हम लोग है ना। हाँ, जितने भी क्रिएशन है ना, हमारा रोल है ना दुनिया में। हमने बड़े बड़े मुश्किल हालात देखे हैं और उनमें सरवाइव किया है। सरवाइव करने के बाद आज हम इस मकाम पे पहुंचे हुए हैं ना, कि हम ये इसी भी इंजॉय कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। गाड़ियों में बैठते हैं, सफर करते हैं, मर्जी की ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, इस जगह तक पहुंचे हैं सरवाइव करने की वजह से, ठीक है। तो इंसान ने ये हजारों लाखों साल का जो सफर है ना, वो तय करके इस मुकाम तक पहुंचा है। कभी दिल करता है कोट पैंट पहन लेता है, कभी टाई पहन लेता है, कभी कोई इतनी ड्रेस पहन लेता है ना, और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, मर्जी की चीजें लेके आके। तो हमारी बड़ी वैल्यू है इस दुनिया में। हमने बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया है, मुश्किलों को बर्दाश्त किया है, जंगें बर्दाश्त की हैं, आज इस मकाम पे पहुंची है। तो वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला मामला है ना, वो हम उसमें से गुजर के आए हैं। फिर हम में से भी लोग होते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। जो कि सबसे फिट होता है वो मुश्किलें बर्दाश्त करके रह जाता है। जो लोग होते हैं वो इधर उधर से वो निकल के चले जाते हैं ना, वो फिर कोई स्विच कर जाता है, कोई जॉब छोड़ देता है, कोई गिव अप कर देता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब चीजें बेसिकली क्रिएट कहाँ से होती हैं? जहाँ पे आपको कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है, जहाँ पे आपकी ग्रीवेंसेस होती हैं, तभी तभी आप सोचते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए ना, ठीक है। तो हमेशा जो कंपटीशन है ना, कट आजकल का जो कंपटीशन है, दैट इज कट थ्रॉट कंपटीशन। कट थ्रॉट कंपटीशन है कि आपने सरवाइव करना है मार्केट में, तो फिर आपको हमेशा स्टेप अहेड रहना पड़ेगा, हमेशा। चाहे आप फंड रेजिंग एजेंसी है या कुछ भी है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करना है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, अल्टीमेटली फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही बन जाए कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट ही किया जाए, या उसकी रेजोल्यूशन के ऊपर कोई काम ना किया जाए, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर नहीं सकती ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी, आप लोगों के यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, पीपीआई में, तो आप क्या करती है? सही है, आपका क्या प्रोसेस होता है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी? पहले हम इसके साथ मिलकर भी बातचीत करते हैं, इसका हाँ। हमें ऐसा भी होता है कि जब आप आपस में कोई जमा करता है, तो मुझे पता चले मसला है, तो आपको उससे रास्ता सबको उसको सही है। भी करते लग रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ, हैं। मेरा मैथ इसी पर है। उनको आपस में जिनको नहीं करते हो, हम्म। करना इट्स बेटर। मतलब वो बिल्कुल ही मतलब कहते हैं कि इस लेवल पे आ जाता है, जैसे उनका पता नहीं जैसे करने के बाद होता है। बस। और पहले तो ये देखो कि किस लेवल पे आपस में कोई सी हो रही है, चलो हो जाएगा। सेकंड ये है कि जैसे नहीं वो अगर कोई पसंद नहीं प्रॉब्लम आ गया तो उसके लिए भी हम लोग बीच में आ जाते हैं, उनका अपना लाइन मैनेजर बीच में आ जाते हैं। सही है। उनका आगे बातचीत करें, सो किसी कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी ऐसा हो कि जो हमारे लेवल और लेवल से लगे, फिर वो हम चीजों का बात करते हैं कि जी इस बंदे ने अब ये किया है, अब इस तरह बताएं कि क्या करना चाहिए, ये चीज़ है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही करते हैं। पहले तो हम देखते हैं जी इनफॉर्मल वे में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, चाय पिला दी, खाना खिला दिया, कुछ कर दिया, इस तरह की चीजें ना, डिस्कशन में बात चली जाए ना, ठीक है। तो बच्चों के साथ भी कभी कभी होता है कंफ्लिक्ट ना। तो एक बेटा है जो मेरा, वो उसको कुछ भी जूस पिला दो, कुछ आइसक्रीम पिला दो, तो वो राजी हो जाता था। तो दूसरी बेटी जो बड़ी है वो राजी नहीं होती थी जल्दी। वो उसमें कहती रहती है कि आपका जमीन सिर्फ इतना ही है कि आइसक्रीम के ऊपर, कौन के ऊपर आपने बेच दिया। और वो उसको कहता है कि देखो कितनी दफा मैंने आइसक्रीम खाई है, आपने कितनी दफा अपनी डिमांड पूरी कराई है, ठीक है। तो कल भी परसों डिस्कशन हो रही थी घर में बैठ के ना, शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है या गिदड़ की 100 साल जिंदगी बेहतर है? तो कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि गिदड़ की 100 साल जिंदगी बेहतर है, कि तो उससे तो उसको बार बार शेर बनने का मौका मिलता रहे। ठीक है। तो और सीधी सी बात है कि शेर बेचारा एक दिन आपके नारों पे के दौर पे आया और मार खा खो के चला गया, खत्म।
ये तो एंजॉय करना है, 100 साल तक मजे लेने स्ट्रेटेजी के साथ ना, तो और क्या। ये भी एक, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए असल में ना कई चीजें हैं ना जो हमारी चीज होती है लाइफ में ना, वहाँ पे हमें थोड़ा सा रैशनल होकर सोचना पड़ता है ना, जज्बाती नहीं होना पड़ता। समटाइम्स हमें दूसरों के लिए भी, दूसरों को देखते हुए भी, उनके लिए भी, उनकी वेलबींग के लिए हम लोग पहले बहुत चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इसलिए हमारा भी नहीं तो इन्हीं का बना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात नहीं, सिर्फ ज्यादा ऐसे इन दूसरों से बात, एक होता है कि आप कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, सॉर्ट आउट हो गया, महीने के अंदर आपके 3 प्रॉब्लम हो गए, हम्म, 4 प्रॉब्लम हो गए, तो मैं तो पूरे इस तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ कि लोग रोज खर्चुल नहीं करूँगा। अगर आप खर्चुल बनिए तो आप फिर कहीं के लिए रहोगे, सही है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक टाइम तक बर्दाश्त करती है किसी भी चीज को। तो अगर कोई बंदा खर्चुल हो गया, फिर उसके कॉर्पोरेट नहीं बन गई है, फिर नहीं रह गए, तो वो चीज है ना, वो उससे लड़ने के लिए बने रहते हैं। बिल्कुल, ठंडे झोंके आ गया ना वो आगे। उसको फैमिली क्या हो रहा था, केस की अभी है। हाँ, ओके, ठीक है सर। ये चीजें करके अपने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होनी चाहिए, जी क्या। उसकी सेल्फ डेवलपमेंट है ना, वो भी है। हम्म, अपने हमारे ऑफिस में तो बिल्कुल सही। खाने भी से हम्म, सब कुछ भी है, तो हमारे यार पे हाँ, इसका काम सारे शब्द का काम जिंदगी है गाइडेंस में मुझे बस पता है उन्होंने बता दिया, हम्म, मुझे मैंने ये कि जिसकी एक असली नहीं लगी, नहीं गई, इसकी 2 दिन की था। अच्छा अगले स्टेप पे चलिए। हम्म, आपको यही चेंज करती, फिर एक छुट्टी पे 2 दिन, अच्छा। फिर हमारे लिए नौकरी की, फिर हमेशा ऐसा मुझे धोखा कर देंगे बात, हम्म, अब तो चीज होती है जो किसी को जानना चाहिए। बिल्कुल सही। अब मैं एक संस्था में भी लगा, लेकिन ऐसा है, हम्म, मुझे कोई देता नहीं, कोई नहीं किया गया, ये बंदा है वो कहते हैं कि मैं वो मेरा हमेशा भी नहीं है, मैं नहीं, वो नहीं है दोनों, मैं मैं समझ के मैं कहाँ पे मैं हम्म, और एक बंदा मुझसे मैं अभी नहीं बात है, शाम को नहीं दूंगा, किसी टाइम भी करूंगा, आप स्माइल हो, आप मुझसे इस समय पे लोग बिल्कुल होंगे। कॉम्प्लेक्स स्टार्ट है, हम्म, उससे करना चाहिए, करना ही करना। इससे ऐसा होता सही है। देखिए उससे अपनी ब्रांडिंग एस्टेब्लिश कर ली ना, उसकी वो रेपुटेशन है जो उसको कैरी कर रहा है ना। है कि बहुत चीजों की बेसिस है। एक आदमी बहुत पंक्चुअल है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो कभी कभी ओकेजनली किसी वजह से लेट आता है, उसकी तो तनख्वाह नहीं काटेंगे ना, उसकी तो ब्रांडिंग है ना कि ये किसी वजह से इससे करेगा। हाँ। हम्म, 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 अब वो खाना का कहीं पे आ जाए, हम्म, वो बाकी के हाँ हाँ हाँ। वो चीज नहीं है। तो ये सारे वो चीजें हैं जिनकी वजह से ग्रीवनेस क्रिएट होता है, और इसको हमने किस तरह से। फिर एक और भी चीज ग्रीवेंस के लिए और वो करती है, आप निकला अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरीके से नहीं कर, बस पोस्ट कर रहे हैं, तो कंट्रोल कर रहे यस, ये भी बड़ा है। क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने गोल सेटिंग करवाई हुई है, ठीक है, केपीआई सेट किए हुए हैं, गोल सेट करवाए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं, अप्रेजल वगैरह से पहले जो उनकी गोल सेटिंग एक्सरसाइज होती है ईयर के स्टार्ट में, वो आपने करवाई हुई है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आस्किंग उसी पे ही होगी, आस्किंग उसी पे ही होगी। आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करवाई हुई है, स्टैब्लिश की हुई है, उसका सेटअप डेवलप किया हुआ है,
अल्टीमेटली होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल ईयर के स्टार्ट में किए रखे हुए हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं आपने ना, और उसी के ऊपर उसकी आस्किंग होगी, उसी का उसका रिव्यू होगा। आपके यहाँ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एनुअली अप्रेजल होता है ना, उसको रिव्यू कब कब करते हैं आप? नहीं, एक तो एनुअल पे जाके करते हैं ना, ईयर एंड पे। बीच में कब कब रिव्यू करते हैं? आपको ना, ये बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, बीच में भी रिव्यू करना पड़ेगा। उसके हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जिसने परफॉर्म करना है, सर्वाइव करना है, उसके लिए जरूरी है कि ईयर एंड पे रिव्यू ना करें। अप्रेजल जो दिए है ना, ये तो उसको फिर मिड ईयर में रिव्यू करें, क्वार्टर वाइज रिव्यू करें। ठीक है, क्वार्टर वाइज। अब होता क्या है, आपके पास इसी पर डिजिटल सिस्टम तो कोई नहीं होगा ना। नहीं, उसमें हमारा जो है, जैसे हमने हम मंथली ऑब्जेक्टिव, once you have done it this month, and what is the plan for the next month? For the next month, right? ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स एटलीस्ट वो लिखें, ताकि हमें पता चले कि कौन सी वन रही। राइट, बिल्कुल सही है। तो इसको रिव्यू करने की जरूरत है क्वार्टरली और मिड ईयर में भी ना। ठीक है, ताकि आपको उस रिव्यू करने का फायदा क्या होगा? उस रिव्यू करने का फायदा ये होगा कि आपके एम्प्लॉय को डायरेक्शन मिल जाएगी, आपके लोगों को डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर वो ट्रैक पे नहीं होंगे, अगर ट्रैक पे नहीं होंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगी। अब वो सारा साल तो गुजार दिया उन्होंने, ईयर एंड पे जाके उनको पता लगता है कि हमने जो किया था उसका फल ये मिल रहा है हमें। अगर तो सही मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर भी ग्रीवेंस क्रिएट होगा। वो बंदा कह सकता है, यार आप, अगर मैं गलत जा रहा था तो आपने मुझे बीच में बताया क्यों नहीं? मुझे बताया कि मैं ठीक कर लेता अपनी डायरेक्शन ना। तो पुराने तरीकों में, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे ये सिस्टम इस तरह नहीं किया जाता था, तो वहां पे अक्सर यही होता था कि उन्होंने गोल सेटिंग नहीं की होती। ईयर एंड पे जो कुछ परफॉर्म किया होता था वो तो पता होता था कि हमने क्या परफॉर्म किया, उसी को फिर वो गोल सेटिंग में ऑब्जेक्टिव डाल देते थे, हमारे जो जो अचीव करते थे उसको अपना ऑब्जेक्टिव बना सकते थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन इस तरह सर्वाइव नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह ग्रो नहीं करती ना। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अपने आपके गोल हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, टीम के गोल हैं, इंडिविजुअल के गोल हैं, और सबको एक लाइन में अलाइन होना है। और जब आप सही तरह से किसी को रिवॉर्ड नहीं करेंगे ईयर एंड पे, तो अल्टीमेटली उसका लॉस ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। उसी से कंफ्लिक्ट भी क्रिएट होगा, उसी से फिर ग्रीवेंसेस भी क्रिएट होंगी, जिनको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो सबसे पहले हमने करना क्या है जी, कंफ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करना है, क्लियरली डिफाइन द इशू और डिसएग्रीमेंट दैट इज कॉजिंग द कंफ्लिक्ट, गैदर इंफॉर्मेशन। का बैठता है ना जिरका या कोई भी इस तरह की चीज, तो वो यही करती है कि सबकी बात सुनती है। ग्रीवेंसेस कमेटीज होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रीवेंसेस कमेटीज बनी हुई है। ठीक है, ग्रीवेंसेस कमेटीज में लोग होते होंगे, उसमें बैठ के सबकी बात सुनते होंगे ना, इम्पार्शियल फेयर होके सुनते होंगे ना। तो ये जरूरी है कि हम इम्पार्शियल हों, फेयर हों, और फिर उसके बाद क्या करें, एनकरेज ऑल पार्टीज टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न। सबकी बात सुनें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके ग्रीवेंसेस क्या हैं, और उनके कन्फ्लिक्ट क्या है, वो किस बात को रेज करना चाह रहे हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ना। सबकी बात सुननी जरूरी होती है उनके हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह से होता है, शो कॉज नोटिस वगैरह जब किसी को दिए जाते हैं, वार्निंग लेटर्स दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उससे पहले पहले ये सारे के सारे प्रोसेस है, इनमें से गुजर के जाना पड़ता है। ठीक है, तो सब ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। जो कुछ भी आपने किया, मीटिंग के मिनट्स बनेंगे, डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड होंगी हर चीज ना, कि भाई आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली। जब भी आप किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एम्प्लॉय है, कोई भी पार्टी जब कोर्ट में जाएगी ना कभी भी, तो उससे पहले कोर्ट आपसे पूछेगी आपने इंटरनली क्या किया। वो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। आपने इंटरनली कुछ नहीं किया होगा, एकदम से कोई स्टेप ले लेंगे, तो अल्टीमेटली वो स्टेप फाइल बैक कर जाएगा। जैसे हम्म, जी, जिसके ऊपर फिर कोई वोट नहीं पड़ा नहीं है। सही, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपने जैसे, आप उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना, आप अपना इंटरनल स्टेप, इंटरनल प्रोसेस उसके बारे में भी बताएंगे लोगों को।
कभी भी कोई लिटिगेशन में जाएगा तो वो देखेगा कि यार अगर ऐसा होगा कि आपने इंटरनली किसी अपने प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया जो आपने खुद बनाया हुआ है, और आपके पास रिकॉर्ड में भी कोई चीज नहीं है, ना वर्बल वार्निंग का रिकॉर्ड है ना रिटन वार्निंग का रिकॉर्ड है, और आप डायरेक्ट भी टर्मिनेशन कर देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपको फिर उसकी कीमत पे करनी पड़ेगी ना, कोर्ट में जा सकता है ना। ठीक है, क्योंकि आपने ग्राउंड नहीं स्टेब्लिश की। कोर्ट तो इन सब चीजों का जायजा लेगा, ठीक है। तो फिर इसीलिए हमने रिजॉल्व कर रहे हैं कन्फ्लिक्ट को, कि ताकि ऐसी कोई चीज ना हो जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं, कोलैबोरेटली एक्सप्लोर ऑप्शन, वर्क टुगेदर टू जनरेट पोटेंशियल सॉल्यूशन फॉर compromise that address the underlying needs and concerns of all parties। ठीक है जी। ये आप सब लोगों की सुनते हैं, फिर आप, ये तो नहीं है कि किसी कभी ऐसे भी कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं ना, तो बहुत क्रॉस लेवल के नहीं होते, कोई बहुत कोई डिसिप्लिनरी एक्शन डिमांड नहीं कर रहे होते ना, वहां पे फिर आप विन विन सिचुएशन हो जाते हैं, दोनों पार्टीज को इस बात पे एग्री कराते हैं कि वो एक तरह का कंप्रोमाइज कर जाए, अपने अपने स्टांस से नीचे आए ना। ठीक है। तो फिर दोनों अपने अपने स्टांस से नीचे आते हैं, और फिर उसके लिए आप क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बहुत से लोगों की ओपिनियंस लेते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं, और मल्टीपल ऑप्शन सामने रखते हैं। आप अपने सामने भी मल्टीपल ऑप्शन रखते हैं, और फिर जो सूटेबल ऑप्शन होते हैं वो प्रेजेंट भी करते हैं उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए ना। अल्टीमेटली तो यही होता है कि आप दोनों को अपने अपने स्टांस से नीचे लेके आते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आने की कोशिश करते हैं, ताकि वो फ्लेक्सिबल हो, ताकि उस किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचे। तब फ्लेक्सिबिलिटी यही है ना कि लोग कंप्रोमाइज करेंगे, अपने अपने स्टैंड के ऊपर कंप्रोमाइज करें, और फिर उसके बाद किसी एक एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचे, और उसके ऊपर जो भी उनके बीच में तय हो जाए उसको ऊपर एग्री कर जाए। ठीक है जी। कम टू म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन। अब उसमें, तो जैसे आपके सामने आजकल की वॉर हुई है ना, ईरान इसराइल और यूएसए की, उस वॉर में क्या हुआ है? एक तरह की विन विन सिचुएशन क्रिएट किया ना हर एक के लिए, हर एक खुश हो रहा है कि चलो ठीक है जी। तो दोनों तीनों पार्टीज ने कंप्रोमाइज किया, यूएसए ने इंटरवेन किया, और उसके बाद उसने भी कह दिया चलिए शुक्र है आपने अटैक कर दिया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब लोग पीस की तरफ आए ना, क्योंकि ज्यादा जंग कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता ना। ठीक है। अगर चाहे इसराइल के ऊपर हर वक्त अगर उसको खदशा हो इसराइल के लोगों के ऊपर कि हमारे ऊपर हर रोज कोई वो आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, चाहे एक ही आने का डर हो, तो उनकी तो लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। सेम ईरान के ऊपर हो जाएगा, तो ना वो तो इकोनॉमिक वाइज ग्रो करेंगे ना किसी और तरह से ना, अनरेस्ट रहेगा सारे कंट्री में। ठीक है। इसी तरह कन्फ्लिक्ट रहेगा, अनरेस्ट होगा, एग्रीमेंट रहेगा तो अनरेस्ट रहेगा, ना आपके पास टूरिस्ट आएगा, ना आपकी कोई शॉप्स खुलेंगी, ना कोई स्कूल्स खुलेंगे, ना कोई और एक्टिविटी होगी। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होगा, कन्फ्लिक्ट रहेगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, तो फिर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं सकेगी, काम ही नहीं होगा ना। तो वो हमेशा उनके अंदर वो जो वर्किंग एनवायरमेंट, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, उनका काम की नोयत भी ऐसी हो कि एक दूसरे के साथ उनका काम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली इंटर इंटर रिलेटेड हो, तो फिर क्या होगा? फिर तो मसला है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा ना। यहाँ पे तो आपको मेडिएट करने की जरूरत है। ठीक है। तो उसके बाद जब आप एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं तो फॉलो अप एंड इवेलुएट, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीड अपॉन, बीच में कोई ना कोई बैठता है ना, जो कमेटी बैठती है उसको भी मॉनिटर भी करती है। ये ना हो कि फिर चीजें एस्केलेट हो जाए। होता है जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, तो लड़ाई के अंदर एक और लड़ाई हो जाती है, होती है कि नहीं होती? हस्बैंड वाइफ की भी होती है। आप शादी किए ना, आप तो सर है ना। सर आप ऐसे ला रहे जैसे आप अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, इसीलिए सर ला रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रैक्टिस पहले क्या क्या। तो ये देखिए वो तो तैयार करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही, पीसफुलनेस गुजारने का तरीका यही है कि आपने ओबे करना है सर।
हाँ तो और क्या, और तो कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, वही करना है और क्या। जाहिर है आपने क्या करना है, और इसके अलावा करना भी क्या है। यार खुशी से बता रहे हैं कि इसके अलावा हो भी कह सकता है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे ही होना चाहिए, देखो बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, कई चीजें वो बेयर कर रही होती है। सुबह इन्होंने भी बताया कि मदर इज द बेस्ट एचआर मैनेजर ना, तो वो देखो बहुत से काम होते हैं, तो फिर आपको ऐसी ही लाइफ गुजारनी पड़ती है ना। ठीक है, तो वहां पे भी आपको फिर एक एग्रीमेंट पे करना है, फिर आपने मॉनिटर करना है, एवेलुएट करना है, और उसको असेस करते रहना है, तो कोई झगड़ा बढ़ तो नहीं रहा, कोई मसला बढ़ तो नहीं रहा ना। क्योंकि जब मिसाल ऐसी है ना कि झगड़े के अंदर झगड़ा भी शुरू हो जाता है ना फिर। और जो लोगों के वैसे ही सेंसिटाइजेशन जिनकी हाई हो ना, वो फिर कोई ना कोई हल्की सी बात आ जाए ना, फिर वो तैयार होते हैं अपने अपने तलवारें समझ के खड़े के लिए एक दूसरे की साथ, ये सुनो, कोई ना कोई नहीं लोगों की। हम जनरल जनरल वैसे भी लड़ाई से वैसे नहीं नहीं जनरल, अब वो तो फिर खैर है, वो तो एवर रहती है ना, तो फिर तो मसला नहीं होगा, तो पॉइंट ही होता है। लेकिन हमने उसका, हाँ हमने उसका नहीं करना ना, हमें तो फिर चीजों को रिजॉल्व करना होता है ना। हमने ईट का जवाब पत्थर से थोड़ी देना होता है, ईट का जवाब पत्थर से थोड़ी देना होता है। नहीं नहीं, सीधी सी बात है, और क्या। हाँ अगर इरादा हो ना क्योंकि थोड़ी सी लड़ाई प्रॉब्लम, तो फिर हम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपने ब्रेक लेनी हो ना, ब्रेक लेनी हो, ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिए, हाँ, वो तो लेबर ही है, लेबर ही है, और क्या। हाँ, तो और क्या, हमारे वो कहते हैं ना ब्रदर जेम्स कि मैं क्या करने गया, मैं अपनी मिसेज के साथ किसी वर्कशॉप में गया, तो वहां जाके लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं वर्क कर रहा हूँ, ये मेरी बीवी शॉप कर रही है। शॉपिंग कर रही है ना, तो वर्कशॉप से है। तो बेसिकली होता यही है, देखिए ये तो, देखिए ये छोटी छोटी चीजें, हम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, लेकिन हम अपनी फैमिली वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। फैमिली में भी आप जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, ठीक है, और बाकी लोग क्या होते हैं कि उसका यूनिट होते हैं ना, हर एक की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको हम संभाल रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ये सोच के ना अपने लोगों को डील करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ये मेरे भाई बहन या बच्चे जिस तरह ना, उसी तरह के ये लोग भी, तो फिर आपके सोचने का अंदाज बदल जाता है, आपके लोगों को डील करने का तरीका बदल जाता है। आपने कभी, आपके बच्चों से नाराज होते होंगे, लेकिन बच्चों को कभी घर से बाहर तो नहीं निकालते होंगे, नहीं निकालते ना, डांटते हैं, वेलफेयर, मकसद वेलफेयर है ना। तो अगर आप इस थिंकिंग के साथ करें, जहाँ जिन लोगों को भी आप डील कर रहे हैं कि हमारी फैमिली का पार्ट है, हमने उसी तरह से ट्रीट करना है जिस तरह कि हम अपनी फैमिली के लोगों को ट्रीट करते हैं, तो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, तरीका क्या चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने यहीं से सीखा ना। अब देखिए, सुबह बात हुई सेशन में, भाई मदर से बड़ा कोई एचआर मैनेजर हो ही नहीं सकता, या एचआर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि मदर को पता है कि ये कौन सा है, ये बहुत ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट है, बात करने वाला है, ये बेसिकली सबमिसिव है, उसको सब बच्चों का पता होता है मदर को, ये सबमिसिव है, ये अगर बीमार हो जाए तो ये चुप करके एक कोने में पड़ जाता है, और किसी से बात नहीं करता, किसी को बताता नहीं है। ये हल्का सा इसको कुछ हो जाए तो ये शोर मचाना शुरू करता है, सारे घर में शोर मचाता है, सबको बताता है कि मैं बीमार हूँ। मदर उसको भी असेस कर लेती है, मदर उसको भी असेस कर लेती है, जो चुप करके बैठा था मदर को फिक्र हो जाती है, यार ये क्यों चुप करके बैठ गया, ये तो इसका करता था ना। तो ये हर तरह के बंदों को, कोई आर्टिकुलेट को भी देखती है, सबमिसिव को भी देखती है, और एक और जो होता है जो बोलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट को भी देखती है, एक्सट्रोवर्ट को भी देखती है ना। एक एक इंडिविजुअल हर तरह के लोगों को वो कर रही होती है, लेके चल रही होती है। ठीक है, तो एचआर मैनेजर का भी तो यही रोल होता है ना, उसको असेस करना है, इवैल्यूएट करना है, ठीक है, और उसको देखना है, और ये उसकी ट्रेनिंग है, उसकी लर्निंग है, कि उसने एचआर की, कि उसने लोगों को किस तरह से डील करना है, जिस तरह लोग चाहते हैं, जिस तरह लोगों के नीड है उसके हिसाब से डील करना है ना। ठीक है, वो एक पॉलिसी होती है ना, कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक ना, कि जी आपने इनाम भी देना है और साथ में करना। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है, उस उसको उससे लेके चलना होता है, किसके लिए कैरेट है, किसके लिए स्टिक है, ठीक है, किसके लिए थप्पड़ है, किसके लिए डांट है ना। ये सब चीजें उसने लेके चलनी होती है, लेक्चर मैनेजर ने भी लेके चलना होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन, हो सकता है सबके लिए आपका फॉर्मूला कामयाब ना हो, सैलरी कट करने वाला, सबके लिए सैलरी कट करना बेसिकली इस वक्त दुनिया में प्रैक्टिस को कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता ना, क्योंकि इससे लोग डिमोटिवेट होते हैं। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में बात करें, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसके बजाय वो कुछ और मरीज लिखते हैं ना। ठीक है, जैसे हम जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया,
तो हम ट्रेनिंग करवाते थे ना, तो ट्रेनिंग करवाते थे, जो ट्रेनिंग में लेट आता था ना, हम कोई ना कोई टास्क उनको देते थे। बड़ी बड़ी ट्रेनिंग, बड़े बड़े लोग होते थे, उनको कोई ना कोई टास्क देते थे ना, कि जी किसी ने सिंगिंग करनी है, कोई जोक सुनाना है, कोई डांस करना है, जो भी पब्लिक की डिमांड होती थी ना, अल्टीमेटली फिर लोग क्या करते थे कि लोग फिर उसको टाइम पे आना शुरू हो गए। लोग अपने टाइम पे आना शुरू करते थे कि फिर ऐसा हुआ तो फिर हमें ये मसला हो जाएगा ना। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो जो चाहते थे कि उनको मौका मिले गाना गाने का। इस तरह के लोग भी थे ना, तो डिफरेंट। हाँ दे खैर। अच्छा। 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 ऐसा भी होता है। अच्छा। हाँ कर ले। अब हर एक के लिए ना आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज करने पड़ते हैं ना। अच्छा, अब मैं मजे की बात बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, जो बड़ी बड़ी प्लांट्स होते हैं, जहाँ वहाँ पे जो लेबर होती है ना, उनको क्या करते हैं, उनको क्या किया जाता है, अब वो वहाँ पे ना एक बंदा आया, उसको काम पे उससे उसके अगेंस्ट कोई ऐसा इशू था ना, उसको उन्होंने बिठा दिया अपने ऑफिस में। हाजिर लगवाई, ऑफिस में बिठा दिया, जो वो जो जहाँ से सब गुजर रहे होते हैं, और उसको काम के अंदर लिए अंदर जाने देंगे, ये उसकी पनिशमेंट। जो गुजरेगा, उसके गांव का, उसकी बरादरी का, आसपास गांव बरादरी होती है ना जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती है, वो देखिएगा जी फलाना साहब बैठा हुआ है सारा दिन ऑफिस में, उधर बैठा रहता है, और अंदर काम करने नहीं जाता, और सारा दिन आराम करके वापस आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो ना यार, और फिर जो उसकी बरादरी या कम्युनिटी के लोग हैं, वो बातें करते हैं, यार ये तो हराम हो रहा है, ये तो हड हराम है, ये वो है, कहीं इस तरह की बात है ना। ये भी एक प्रेशर होता है। तो हर जगह के लिए आपको अलग स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है ना, हर इंडिविजुअल के लिए भी उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है ना। घोड़े और गधे को एक तरह से आप हाँक नहीं सकते ना। ठीक है, स्ट्रेटेजीज आप चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली वो वर्क भी करेगी ना। ठीक है, सही। तो हमने तो पहले देखा कन्फ्लिक्ट के ऊपर बात की। अब देखते हैं ग्रीवेंसेस रेजोल्यूशन प्रोसेस। जी निदा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी सर, मैं मौजूद हूँ। ये जो आप बता रहे थे कि सबको एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, और इवन जो लेट का भी पॉलिसी का बता रहे थे, तो उस पर मैं यही सोच रही थी कि जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पर मैंने इनको ये बोला, सजेस्ट किया कि देखिए हमें इतना, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, तो मैंने इनको बोला कि मैंने कहा जो हमारे यहाँ का हेड ऑफिस का स्टाफ है, उस पर वही जो 15 मिनट हम उनको देर से बुला रहे हैं और जल्दी बुला रहे हैं, 15 मिनट मतलब उनके लिए हमने पॉलिसी रखी हुई कि 15 मिनट तक की ना, कि लेट अलाउ है, लेकिन जब वो लेट जा रहा है तो हम इनको कंपनसेट नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो हम सही। एटलीस्ट इसको फ्लेक्सिबल कर लें कि जो हमारे रेट है वो बैलेंस हो जाए। तो वो बॉस को भी बुरा लग गया था और उनको लगा मैं उनका कल्चर खराब कर रही हूँ। अच्छा, सही। ठीक है। तो मुझे लगा बिल्कुल। कि ही वाज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो कि ओपन एचआर पॉलिसी वाला सिनेरियो। बिकॉज हाँ आई जी। पर्सनली बिलीव कि थोड़ा सा फ्लेक्सी टाइमिंग, और अब जो है ना हमारा जो कल्चर है वो मतलब वर्क फ्रॉम होम और इन चीजों को हमें इंकरेज करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली इट्स द सॉफ्टवेयर कंपनी एंड दैट काइंड ऑफ, जहाँ पर ऑफिशियल मतलब डेटा का इतना प्रॉब्लम नहीं था। बिल्कुल सही लेकिन है। उनको बॉस वाज नॉट हैप्पी विद द सिनेरियो। ओके। उनको लगा कि वो जो पुराने मेथड्स हैं वो अच्छे बॉस हैं। की साइड में लगा दो। शेयरिंग ऐसे। हाँ, ठीक कह रही है निदा, सही है। लेकिन कुछ मेजर्स है ना, आपको चेंज करने पड़ते हैं, हर एक के लिए अलग अलग उसका रहना पड़ता है ना। हमने ये देखिए स्टेप इन द ग्रीवेंस रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है जी, आप लोग भी इसी तरह से करते होंगे, इससे मिलता जुलता कोई काम करते होंगे। ग्रीवेंस कन्फ्लिक्ट तो चलो एक अलग चीज है ना, ग्रीवेंस एक और चीज है ना, ग्रास लेवल पे आती है। सबसे पहले क्या करेंगे जी, द एम्प्लॉय सबमिट आर रिटर्न ग्रीवेंसेस डिटेलिंग द इशू और कंसर्न दे हैव विद द वर्क प्लेस रिलेटेड मैटर। वो जो आपको रिटर्न में बताएगा ना, जिसको भी ग्रीवेंसेस है। आप लोगों ने लिखा होगा ना, अक्सर जो वहाँ पे शिकायत बॉक्स होते हैं, अक्सर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में ना, कि आपको अगर कोई कंप्लेन है तो आप इसमें भेज देना। आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है, विद नेम करें या अनोनिमस होकर भी करें ना। ठीक है। फिर जो भी ग्रीवेंस आप
डिपेंड करता है कि उसकी नोट क्या है। फिर ग्रीवेंस को जो आप क्या करते हैं, इनिशियली रिव्यू करते हैं, और फिर को कमेटी बनाते हैं, किसी को वो हैंड ओवर करते हैं या वो डेलीगेट करते हैं, ठीक है, एचआर मैनेजर को या एचआर रिप्रेजेंटेटिव को ना, ताकि वो उसके ऊपर बैठ के वो देखे कि उसको रिव्यू करे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और उसकी इंटेंसिटी क्या है ना, ठीक है, उसको देखा जाता है। फिर उसके बाद फिर एक कमेटी बनाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है, विच में इन्वॉल्व इंटरव्यूइंग द एम्प्लॉयज। फिर विटनेसेस को देखा जाता है, कोई भी ऐसा मामला हो चुका है ना, तो किसी ने कंप्लेन दर्ज करा दी, तो उसके ऊपर फिर देखा जाता है कि वाकई वो सच बात भी है कि नहीं है। इनके जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उस आई विटनेस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना, उनसे आप इंफॉर्मेशन लेंगे, अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप क्या करेंगे कि डिटरमिन करेंगे कि भाई वाकई ये ग्रीवेंसेस ठीक थी कि नहीं, है ना। अ डिसीजन इज मेड बाय appropriate authority based on the finding of the investigation and the employee is informed of the outcome, ठीक है, कि उसको बताया जाता है, जिसने भी कंप्लेन दर्ज कराई ना, यानी ग्रीवेंस शो गई, उसको बताया जाता है कि हमने ये एविडेंस इकट्ठे किए हैं, बहुत से लोगों से इंटरव्यू की है, उसके बाद हमारी फाइंडिंग ये है। उस फाइंडिंग के हिसाब से फिर क्या किया जाता है। और अगर जिसने ग्रीवेंसेस की है वो मुतमईन होता है उस बात से, मुतमईन होता है तो ठीक है, नहीं मुतमईन होता तो उसके पास फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपील का प्रोसेस भी होता है, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन उसको मौका देती है कि वो अपने फैसले के अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं। डिसीजन कोई भी हो सकता है, वो गिल्टी भी फील हो सकता है, वो गिल्टी हुआ तो उसके ऊपर कोई चार्ज भी लगाया जा सकता है, उसके ऊपर कोई पनिशमेंट भी लगाई जा सकती है किसी किस्म की भी ना। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सैलरी कट होती है, यानी एक महीने की सैलरी जब्त कर ली या कुछ कर लिया, या प्रमोशन रोक दी गई ना, इस तरह की चीजें भी होती हैं कि जी आपकी प्रमोशन एक साल तक नहीं होगी, एक साल तक, 2 साल तक आपकी तरक्की रोक दी जाएगी ना, ठीक है। तो ये वाले मेजर्स भी ले जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट वो चाहता है कि अपील करे, तो अपील कर सकता है। फिर अपील करने के बाद में सारा प्रोसेस होगा, फिर उससे बड़ी कमेटी बैठेगी, उससे बड़े लोग बैठेंगे, नेक्स्ट लेवल के लोग बैठेंगे, जिसको कहते हैं स्किप लेवल करके ना। और फिर वो जाके फिर उसके बाद फिर द ग्रीवेंस इज रिजॉल्व एंड एनी नेसेसरी एक्शन और रेमेडीज आर इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस द एम्प्लॉयज कंसर्न, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली रिजॉल्व ये होगा, ग्रीवेंस को आप ज्यादा देर तक रख नहीं सकते, अल्टीमेटली ना, ज्यादा देर तक जी आपको उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना है। नहीं एक्शन लेंगे तो फिर उसकी प्राइस आप पे करेंगे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइस पे करेगी ना, ठीक है, डिसिप्लिन में हो जाए या किसी किस्म का और भी आ जाए ना इशू, तो जब तक अगर आप एक्शन नहीं लेंगे ना, अल्टीमेटली फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी खराब हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्वायरमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो सस्टेनेबिलिटी है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमने भी ये दिखा था लास्ट स्लाइड में, हमने ये सारा का सारा हमने इस तरह दिखा था, ये आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर दी जाएंगी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये सारा का सारा वही प्रोसेस है कि इनिशियल रिव्यू सारा जो हम इसको 2-3 तरीकों से हमने किया हुआ है, ठीक है। राइट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन में नहीं होती। आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे है? आप लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट हो रही हो उसके हवाले से सब लोग अवेयर होते हैं। ऐसा मतलब समटाइम्स हमारे सीईओ जो है वो एक स्टाफ जनरल स्टाफ मीटिंग कॉल करते हैं और फिर हम उनसे पूछते भी हैं और हमें अपडेट भी करते हैं। और वैसे ऐसे ही होता है सर। हाँ जी। हाँ। सीनियर मैनेजमेंट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि वो उनके लेवल तक करा देते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनरल स्टॉक में बताने की होती है, वो वहाँ बता दिया है। वहाँ पे बता दीजिए क्या, बिल्कुल और वो ऐसा नहीं होता है कि भाई ये चीजें जो है अपने अपने स्टाफ के साथ शेयर करते हैं, ठीक हो गया। तो वो चीजें ये सारे के सारे वो इनिशिएटिव्स है ना जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, कि आप लोगों को ट्रस्ट में लेते हैं, अपने लोगों को ट्रस्ट में लेते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपको अपने बराबर, अपने साथ का समझते हैं, हम ये चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं एज अ फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ना। और ये अब ये जब ये दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के चैनल्स है ना। कभी वो सीनियर मैनेजमेंट कमेटी है उसको बता देते हैं, कभी वो खुद डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो नोयत क्या है उसको ना। जब वो डायरेक्ट बताते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट भी आता है, लोगों पे इम्पैक्ट आता है, फिर लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ता है ना, ठीक है। इसी तरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ओपन वो होते हैं क्या कहते हैं, वो जो टाउन हॉल मीटिंग होती है,
ठीक है, ओपन डेज होते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सीईओ, प्रेसिडेंट, आर्किटेक्ट सब लोगों से बात करते हैं। जिस और फौज में भी होता है जी बड़ा खाना, कि जिसमें जनरल्स और सब जवान एक ही जगह बैठ के इकट्ठे आपस में बैठते हैं, गपशप करते हैं, जो भी सवाल जवाब करते हैं ना। ये सारे के सारे वो है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। ठीक है, और फिर इससे एक ओपननेस आती है, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, लोग एंगेज हो जाते हैं। आपको ना स्टाफ को भी एंगेज करना है, सपोर्टिंग स्टाफ को भी एंगेज करना है, मैनेजमेंट को भी एंगेज करना है। ठीक है, हर एक लेवल पे अब मैनेजमेंट को एंगेज करने के डिफरेंट टूल्स हैं। और जो लेबर है या सपोर्ट स्टाफ है या ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं, उनको एंगेज करना एक अलग ट्रिक है। व्हाइट कॉलर जॉब वालों को और तरह से एंगेज करना है, ब्लू कॉलर जॉब वालों को और तरीके से एंगेज करना है, लेकिन मकसद क्या है? एंगेजमेंट है, ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी पे जाके, उनके लेवल पे जाके, जिसको वो अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, सर इस लेबर में तरीके होता से है understand- जी बोलिए, मतलब हम बोलिएगा। लोग जो अपनी प्रोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से कर रहे होते थे कि हर मंथ मीटिंग कर रहे होते थे, ताकि सबको मतलब उसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग फ्रॉम हायर मैनेजमेंट टू बॉटम सबका इन्वॉल्व होना जरूरी होता था। और फिर सबको इंडिविजुअल लेवल पे केटर किया जा रहा होता था कि किनके जैसे हायर मैनेजमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, या सब जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, जो मैनेजर्स हैं उनको किस तरीके से वो डील करेंगे, और जो लोअर स्टाफ है उनकी क्या ड्यूटीज होंगी उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। वो हमने मंथली मीटिंग का एक वो क्या हुआ था, चैनल बनाया हुआ था, ताकि वो पूरे मंथ का जो है ना एजेंडा उसमें डिस्कस हो जाता था। जी बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होता है। बहुत सी जगहों पे उसके डिफरेंट वेज हैं। हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पे एक एचआर मैनेजर थे, तो वो क्या करते थे कि एक दिन कोई दिन होता था, बिल्कुल तैयार होके सूटेड बूटेड होके आते थे ना। और फिर जब तौर पे अच्छे कपड़े पहन के वो जबरदस्त तैयार हो गए ना, पता लगता है भैया आज बिल्कुल डिफरेंट वे में तैयार हो गए हैं। तो लोग उनसे पूछते, हमको पूछता नहीं था ना, बात नहीं करता था, वो भी इतने कम्युनिकेट नहीं करते थे। पता लगता था थोड़ी देर बाद कोई हेड ऑफिस से प्रेसिडेंट आए हुए हैं। आए तो अपने विजिट में ही है ना, बताया भी उनको ही है उन्होंने, लेकिन आ, बाकी लोगों को पता नहीं है। तो लोगों ने ये कंप्लेन की कि जी, जब कोई हाई आपका विजिट होता है हमारे कराची से इस्लामाबाद में, सिर्फ इनको पता होता है, किसी को कम्युनिकेट नहीं करते। ये तो बिल्कुल तैयार होके आते हैं, उसी हिसाब से हम कैजुअल में आ जाते हैं। तो वो ये कंप्लेन थी, लोगों की ग्रीवेंस थी, उन्होंने बताया कि पता तो चले, ताकि लोग उसी हिसाब से रेडी हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं ना। ठीक है, और उस तरह से तैयार हो। तो ये भी एक छोटी सी चीज है। तो और फिर जाहिर है कम्युनिकेशन नहीं थी। तो कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आप कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन करने का मतलब है कि किस तरह लोगों को समझाते हैं और अंडरस्टैंड करवाते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन फिर उसका कल्चर खराब हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का अंदर लोग एक दूसरे से डिसंगेज हो जाते हैं, उनका ट्रस्ट लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, और जब ट्रस्ट लेवल डिक्रीज हो जाएगा, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप रहेगा नहीं। ठीक है, तो मेडिएशन कैसे करनी है जी, फैसिलिटेशन कैसे करनी है? ठीक है जी, मेडिएशन इज स्ट्रक्चर प्रोसेस वेयर a neutral third party help disputants negotiate a mutually acceptable resolution। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जब कन्फ्लिक्ट होता है ना, तो वो क्या करते हैं, फिर वो बाहर से कोई ऑडिटर फर्म होती है ना, ऑडिट फर्म, उसको हायर करते हैं। जब कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट हो जाए जो उनको लगे कि सही नहीं हो रहा उनकी सारी एफर्ट के बाद, तो भी किसी थर्ड पार्टी को भी हायर करते हैं। इस तरह भी किया जा सकता है ना। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का इत्तेफाक हुआ, अगर आपके पास भी ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जाएगा ना पूरे का पूरा, अपील और फिर अप्रेजल वगैरह जब इस तरह स्ट्रक्चर करेंगे, तो अल्टीमेटली अगर किसी को इत्तेफाक नहीं होता था अपने अप्रेजल के साथ, तो उनके पास ये गुंजाइश मौजूद थी कि वो अपील कर सकते थे। एक थर्ड पार्टी ऑडिटर रखा हुआ था, प्राइस वाटर कूपर, PwC, बहुत बड़ी ऑडिट फर्म है ना। तो आप उसमें जाके कह देंगे कि मैं इस सारे प्रोसेस से मुतमईन नहीं हूँ। वो फिर अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी फाइंडिंग देगी ना। ठीक है, लेकिन इस मरहले तक पहुंचने में भी बहुत सी चीजें होती थी, और वो ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती थी कि ऐसा इशू रेज ना हो, राइट। मेडिएशन, मेडिएटर का तो पता होगा ना, मतलब मेडिएटर का क्या मतलब है? जो बीच में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, निगोशिएट करवाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाते हैं ना। ठीक है जी, तो वो भी होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज भी होती हैं जिनके ऊपर सबका ट्रस्ट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है ना। वो कहते हैं जी, और फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर सबका ट्रस्ट होता है, और लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग उनके पास जाके बात करते हैं, राइट। बेनिफिट ऑफ मेडिएशन, मेडिएशन कैन प्रमोट ओपन कम्युनिकेशन, फास्टर कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड
प्रिजर्व वर्क प्लेस रिलेशनशिप। ऐसे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते होंगे जिनके ऊपर सब ट्रस्ट करते हैं, जो कि वो अनबाइस्ड होते हैं, और जिसके ऊपर हर आदमी इक्वली ट्रस्ट करता है ना, अपने दिल का हाल उनके सामने जाके खोलता है ना। तो फिर वो ऐसे लोगों का होना भी जरूरी है, ऐसे लोगों से बात करना भी जरूरी है, ठीक है, ताकि वो आपकी बात के ऊपर एक्शन लें, आपको सपोर्ट करें, आपको गाइड करें, आपको इनकरेज करें, मोटिवेट करें ना, आपको राइट डायरेक्शन बताएं। ऐसे लोगों का होना जरूरी है, ठीक है। फैसिलिटेशन इन कॉन्फ्लिक्ट, फैसिलिटेशन involves a neutral party guiding the discussion and decision making process to address workplace conflict ना। तो इस जो जो भी फैसिलिटेट करेगा इस मेडिएशन को, उसके लिए जरूरी है कि हर चीज को अंडरस्टैंड करेगा। तो इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो जब इन लोगों के पास जाते हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, ठीक है जी। फैसिलिटेटर रोल क्या है जी? फैसिलिटेटर मेंटेन न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी, ये पहले भी बात की है हमने, फेयरनेस, इम्पार्शियल, ठीक है, encourage participation and help parties identify interest and generate options, ठीक है। वही जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी, इसमें वर्डिंग चेंज हो गई है, लेकिन लबे लुभाव उसका वही है, ठीक है जी। और हम देखते हैं जी, फैसिलिटेशन मीडिएशन फोकसेस ऑन रीचिंग अ म्यूचुअली एग्रीबल सेटलमेंट, while facilitation emphasize the process of problem solving ना, ठीक है। तो अब सम टाइम आपको कंफ्लिक्ट खत्म करना है, ठीक है, किसी एग्रीमेंट पे लेके आना है, सम टाइम जो रूट कॉज है ना उसको खत्म करना है। ये जरूरी है ना, रूट कॉज को खत्म करना है। ये ना हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्लिक्ट के अंदर, जो अगर उनको वहीं पे रिजॉल्व करवा दिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान नहीं है ना, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा इंडिविजुअल भी आ गया जो टॉक्सिक है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, फिर वहां पे आपने रिजॉल्व चीजों को रिजॉल्व नहीं करना होता, वहां पे फिर रूट कॉज को खत्म करना होता है। क्या ख्याल है सर? ठीक है। तो कुछ जगहों पे आपने रूट कॉज को खत्म करना होता है ना, क्योंकि टॉक्सिक लोग अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो हो सकता है वो ठीक ही ना हो सके, तो अल्टीमेटली आप, हाँ। सर अगर बॉस खुद टॉक्सिक हो तो क्या करें? जी बोलिए निदा, क्या कह रहे अगर बॉस खुद टॉक्सिक हो तो क्या करें? हैं? बॉस को नहीं, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बॉस टॉक्सिक हो सकता है। देखिए, यहाँ पे भी ना, अब आपके सामने एक मुख्तलिफ कोर्सेज है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग है, हाउ टू मैनेज योर बॉस का, ठीक है। नहीं, इस पे बात हो रही है आजकल, उसी जगह पे हो रही है, हाउ टू मैनेज बॉस ना। इस तरह के लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, आ जाते हैं। उनका गोल क्या होता है? उनका गोल ये होता है कि प्रमोट कोई प्रॉब्लम, इसको भी है, उसको प्रमोट करना है, कोई प्रॉब्लम है बस उसको लेके पकड़ के बैठ जाना। लेकिन यदि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाते हैं, वो प्रॉब्लम मेकिंग की तरफ ले जाते हैं। सही है। ऐसे लोगों को मेरे हिसाब में इट शुड बी अटेनेबल, कि अगर ऐसा एक के साथ हो रहा है चलेंगे, इसके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम, दो के साथ हो रहा है, तीन के साथ हो रहा है, तो ये इस जुड़े है तो मोर देन 5%, तो फिर उसके साथ जो है खास करके कि वो हर बिल्कुल पहुंचे पास। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है नॉर्मली ना, हायर मैनेजमेंट इसमें इंटरवीन करती है। जो इस तरह के टॉक्सिक लोग होते हैं उनको मौका मिलता है कि वो अपने आप को ठीक कर ले, लेकिन अगर हमेशा टॉक्सिक रहते हैं तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होते, अल्टीमेटली काफी नुकसान तो करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना, किसी भी वर्क प्लेस का, लेकिन अल्टीमेटली फिर उनको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है ना, अपने कैरियर की सूरत में, अपनी वो एक्सेप्टेंस की सूरत में लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते ना, ठीक है। तो ये जरूरी है कि हम इसको भी अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और सर बॉस बॉस को ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो लोग लोग मजबूर होकर बेचारे को बर्दाश्त कर रहे हैं। व्हाट कांट बी क्योर्ड, व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, ठीक तो है। यही चल रहा है तो सर, आप मस्ट बी इंड्योर्ड।
आप लेकिन उसके ऊपर उसके बिहेवियर पे थोड़ा थोड़ा काम करें ना, मे भी किसी वक्त आप बॉस को पसंद आ जाए, बॉस इसी बहाने ठीक भी हो जाए ना। नहीं नहीं सर, मेरे जो हो भी सकता है। प्रीवियस बॉस थे वो बड़े अच्छे थे। ये जो लास्ट एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, जिनको मतलब वो अच्छा नहीं रहा, उससे प्रीवियस बॉसेस तो बहुत अच्छे थे। इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़े से टॉक्सिक टुवर्ड्स स्टाफ थे, तो आई टोल्ड हिम कि सर ये जो है हरेसमेंट में जा रहा है, जो आप मतलब बोल रहे हैं स्टाफ को, अलग से मैंने इनको बता दिया था। और फिर अच्छा अच्छा अच्छा। सर उन्होंने एक सेल्स एजेंट को बोल दिया था उठा के कि तुम्हारी शक्ल नहीं है कि तुम सेल्स कर सको। अच्छा, ऐसे कहा था। हाँ हाँ लिटरली। हाँ। और वो बंदी ने जॉब छोड़ दी थी। उस बंदी को भी इतना समझाया मैंने, एक मतलब काउंसिल किया था कि भाई देखो वो थोड़ा सा ऐसा टेंशन नहीं था या वैसा नहीं था, बट द थिंग इज आई हाँ। वाज नॉट देयर व्हेन ही सेड दैट। तो ओके। मतलब इस तरह का सिनेरियो हो गया था। एंड फाइनली उन बॉस को बाद में मैंने कहा था कि सर आप इस तरह से करेंगे तो वी विल एंड अप लूजिंग द स्टाफ ना। जी, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब वहां पर तो मसाल हो गया था, लेकिन प्रीवियस वाला बहुत खराब एक्सपेरिमेंट कर लिया है मैंने सर। अब इंशाल्लाह नया एक्सपेरिमेंट करेंगे लाइफ में। हाँ, नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट हमेशा नहीं होने चाहिए, गलतियां भी नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, सीधी सी बात है, पहले से तो सीख लिया ना। हाँ, तो क्या करने का। बहुत अच्छे हैं। हाँ, नहीं, बॉस भी अकोमोडेटिंग होते हैं और वो भी लर्न करते हैं, उनके लिए भी बहुत सी चीजें होती हैं, तो वो भी ह्यूमन बीइंग है ना। लेकिन वो फिर उनको इस एटीट्यूड की प्राइस पे करनी पड़ती है ना, अपनी मुख्तलिफ जगहों पे कैरियर के अंदर, फिर उनकी रेपुटेशन बन जाती है। ठीक है, कि वो यार ये बॉस ठीक नहीं है, तो सब लोग आना पसंद नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन उनको लेना पसंद नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशन को लेना पसंद नहीं करती ना, अगर ऐसा हो। कोई आज का कल तो सब इन्फॉर्मेशन चली जाती है ना। अगर कोई ऐसा होता है, पीपल सेंट्रिक लोग होते हैं, अगर कोई किसी के पास कोई बंदे रिटेन नहीं रहते, उसको कोई रखेगा ही नहीं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियस टाइम में ऐसा होता था, तो अब लेकिन अब चीजें चेंज होती जा रही हैं, और जाहिर है कि लोगों के साथ ही लेके चलना है ना, काम तो लोगों ने करना है। एक्सपीरियंस हुआ है। जी। मैं कोई काम नहीं की, सर्विस को लेकर, हम्म। तो वहाँ मैंने काम करा। हम्म। वहाँ पे हमें जो सर्विस मिलती थी, एटलीस्ट 20 तारीख को कभी 21 को कभी 22 को, अच्छा। सर्विस बहुत ज्यादा नहीं थी। तो हम जो है ना इधर उधर से पकड़े के पूरा महीना गुजारा। हम्म। और जब सैलरी आ गई तो सैलरी जिसके पैसे देने उसको दे दिए, मुझे फिर हो गए। हमने एक दफा उनसे कहा कि सर दिस इज वेरी बैड, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इस आपको ये करेंगे, नहीं तो फिर तुम उनके पैसे कभी दूंगा, काम करने करो मुझसे ना काम करो। तो हमारी जो है नेटवर्क काम करेगी, सर ये सही काम आप ही कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे तो हम नहीं करोगे, वो सारे लोग एक पास वो सारे लोग लेकिन हम लोग करना लाते ही इसको मुख्य ऐसे फिर काम शुरू करें। अच्छा, एक बार एक तरह का लेकिन बदले लेते हुए काम बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे सबको इन्फॉर्म तो आते ही कर एक सारी सीरीज की चीज और मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा, थोड़ा सा लाउड कर रही। दोस्तों हमने ये किया, दिस इज योर जॉब, हम जा रहे हैं सारे के सारे, आप जाना और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जाना। अच्छा। विद इन 1 मंथ ऑर्गेनाइजेशन उसकी जो सर्विस प्रोवाइडर का कंपनी थी बंद। बंद होगी ना, बिल्कुल सही है। कुछ लग रहा था कि जब वहां पे दोबारा आके काम करें। बिल्कुल। बल्कि हम एक ट्रेनिंग की, उसके अंदर हम एक पार्ट है, उसमें हमने सर्वे किए हुए हैं, उसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के बारे में बात हो रही थी, कि लोग बेरोजगार भी हो ना, उन्हें पता हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है, उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाते, जॉबलेस। सर मेरे साथ यही हाँ। हुआ है। मतलब मैंने ज्वाइन कर लिया एंड आफ्टरवर्ड्स आई गॉट टू नो कि मैंने वर्स्ट डिसीजन लिया था। जो वहाँ के जी जो जी। एक्स एम्प्लॉइज हैं, जब मेरी इत्तेफाक से किसी ग्रुप पे उनसे बात हुई, तब उस वक्त तो नहीं, जब मैंने छोड़ दिया तब दे सेड कि वी न्यू यू विल एंड अप लीविंग दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज़ नोबडी कैन स्टे देयर, मतलब दे आर वेरी टॉक्सिक। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन खराब है, कोई जाएगा ही नहीं काम करने। पाकिस्तान में बहुत से स्कूल्स हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो उनको तो रिटेंशन का क्या, हायरिंग का मसला होता है।
वहाँ पे काम कर रहा है जी। छोटी, हाँ जी। अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमने नहीं रखा, हाँ जी, मैं ऐसे भी होता है। तो वहां पे काम करके आए, यू हैव सम रिलेशंस विद देम, तो हमने नहीं रखना क्योंकि तुम्हारा और ऑर्गेनाइजेशन का ये रेपुटेशन खराब तो वो बिल्कुल मुझे ऐसे सर्व करने का मौका मिला ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे बड़ा चैनल क्या है, जॉब काफी काफी पैसे तक वेकेट रहे है। किसी खास से वो एरिया में ना, लोग आना पसंद ही नहीं करते थे। अनएम्प्लॉयड लोग होते थे, बेरोजगार होते थे, लेकिन नहीं आते थे। ठीक है, और फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वाले थे, वो डिसीजन चेंज कर रहे थे। डिसीजन यानी वो अपना कल्चर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। कल्चर चेंज करने की कोशिश में जब उन्होंने नए लोगों को हायर करने की कोशिश की, तो लोग ही नहीं आ रहे। लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे कि भाई वो, हालांकि वो बताते थे कि भाई अब वो इन्वायरमेंट नहीं रहा, वो मैनेजमेंट नहीं रही। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फ्यूल पंप पे जाए या पेट्रोल पंप पे जाए ना, या किसी दुकान पे चले जाए, किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, चल नहीं रहा होता तो लिखा होता है थोड़े थोड़े अरसे बाद, नई इंतजामिया के साथ। एक बार फिर आपकी खिदमत में नई इंतजामिया के साथ ना। ठीक है, तो वो यही होता है कि उनका चल नहीं रहा था सिस्टम, उनकी रेपुटेशन खराब हो चुकी होती है ना। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, उनका चैलेंज होता है, और ऑर्गेनाइजेशन भी निकल जाएगी इस बिजनेस से। जिस तरह आपने एग्जांपल दी, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, तो नहीं सर्वाइव कर सकती इस तरह के काम में ना, क्योंकि लोगों के पास तो जिस जिस टाइम में हम करते थे ना, आजकल के टाइम में, यहाँ पे हमारे आने वाले यूथ के पास ना बहुत सारे ऑप्शन है काम करने के। ठीक है, फ्रीलांसिंग भी है, कॉल सेंटर की जॉब्स भी हैं, और बहुत सारी जॉब्स हैं। ठीक है, तो वो उसमें जा सकते हैं, पहले ऑप्शंस नहीं थे, पहले ऑप्शंस लिमिटेड होते थे। अब इनके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, तो इसलिए इनको रिटेन करना, क्योंकि पीपल सेंट्रिक चीजें होंगी ना, पीपल सेंट्रिक जब चीजें होंगी तो फिर लोगों को रिटेंशन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, इस स्लाइड पे हमने ऑलमोस्ट ये बात की हुई है कि कौन कौन से टूल्स हैं जिसकी वजह से आप कन्फ्लिक्ट को कम से कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की पहले बात हो चुकी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि लोगों को ट्रेन करना, कन्फ्लिक्ट अगर आपको आपस में हो जाए तो कैसे रिजॉल्व करना है। फिर जो क्लियर कट पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को डेवलप करना, कि अगर इस तरह की वायलेशन होती है, कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो उसके कंसिक्वेंसेस या उसके रेपरकशंस ये होंगे ना। ठीक है जी, रिस्पेक्टफुल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना, टीम वर्क को क्रिएट करना, कोलैबोरेशन क्रिएट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, लोगों के होने का ख्याल रखना, लोगों को रिस्पेक्ट का ख्याल रखना। ये सब चीजें हैं जो इस स्लाइड पे लिखी हुई हैं, जो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, कि आप कैसे कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रीवेंसेस को या कन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या मिनिमाइज कर सकते हैं। राइट, पॉलिसीज आपके यहाँ भी हर चीज की पॉलिसी होगी ना। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, जो जो चीजें इन्वॉल्व है उन सब के लिए हमें पॉलिसीज बनानी पड़ती है। राइट, और बनानी भी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी इज अ गाइडलाइन फॉर यू। ठीक है जी, जैसे आपने वो देखा ना, जिससे हम कोई गुम हो जाए तो रास्ता तलाश करते हैं, वो क्या नाम है उसका, वो जो जीपीएस ट्रैकर भी हो गया, पुराना भी एक नाम था उसका ना, कंपास। जीपीएस कंपास था, पुराने जमाने में कंपास होता था। तो ये पॉलिसी प्रोसीजर, ये नेविगेटर, ये कंपास है, ये नेविगेटर है। जब भी आप टर्बुलेंस में जाएंगे, जब भी प्रॉब्लम में जाएंगे, अपने पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को देखें, वहां से रहनुमाई लें। ठीक है, ये जरूरी है एचआर प्रोफेशनल के लिए। जो एसओपी होती हैं, एम्प्लॉय हैंडबुक होती है, या और इस तरह के डॉक्यूमेंट जो आपने डेवलप किए अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो आपने जिसके ऊपर उनका कंसेंट भी लिया हुआ है लोगों का। ठीक है जी, तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से बेहतर करना है, किस तरह से लेके चलना है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर योर अटेंडेंस, और आप लोगों के टाइम का भी बहुत शुक्रिया। अब हम इसके बाद हम चलेंगे अपनी वो सर्टिफिकेट पर में। जी जी, सर्टिफिकेट देते हैं, फिर हम इसके बाद फिर आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। आप लोगों के साथ हम अटैच्ड हैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, और आप लोगों को जब भी कोई बात करनी हो, पूछना हो, कोई केस हो, आप फ्रैंकली उस ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, या किसी किस्म की अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं। राइट जी। थैंक यू सो मच सर। सर एक लास्ट थैंक यू इंसिडेंट सर। शेयर कर दूं आपसे रिगार्डिंग द पॉलिसीज। मैं वो अभी अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट। इसका भी रिकॉर्डिंग लिंक मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। ठीक है।
और बाकी जो लर्निंग मटेरियल है और जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे थोड़ी देर में। और सर व्हाट अबाउट सर्टिफिकेट, वो ईमेल आएगा क्या होएगा? जी व्हाट अबाउट द सर्टिफिकेट, वो ईमेल आएगी हमें या क्या होगा? नहीं, आपको हार्ड कॉपी आ जाएगी ना, सॉफ्ट भी आ जाएगी और हार्ड कॉपी भी आ जाएगी आपके एड्रेस पे ना। ओके। सॉफ्ट में शेयर करती हूँ, आप उसको लिख सकते हैं। Thank you so much. It was a good learning. Thank you, everyone. थैंक यू। You're welcome. लाइट्स है ना, लाइट्स नहीं है। ये मूवेबल स्क्रीन है। अगर ये तो मेरी उस साइड के लाइट जो है वो आ सके है ना, यहाँ आ जाए। वैसे ऐसा फर्क है उससे पीछे हो सकता है, ये पीछे। मैं फोटो सेशन मिस आउट कर रही हूँ। तो यहाँ आगे करें वो मैंने देखिए सर सारे टाइम में कितना प्यारा मिस खींच ट्रेनिंग एक जैसा है ना, लाइक वो बिगड़ भी रहा है ये बात फिटनेस।
Oh, same. सर आपका ये स्क्रीन से भी दोबारा नहीं, अभी उस पे वो आया ही नहीं, लेकिन ये कैसा है? हाँ, आई थिंक अच्छा नहीं ब्राइट आएगा, क्योंकि वो पीछे बैकग्राउंड ही चाहिए, वो आ जाएगा ओके। Beyond honestly. अच्छा, बस नहीं यार। Yes. Accept your yes. थोड़ा स्क्रीन ऐसे करते हैं, मेरा पेंसिल वहाँ पे रहना एक बार से आपको ये स्क्रीन देख रही है क्लियर कैमरा पे? हेलो, नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही। अभी आई नहीं, हाँ अब आ रही है, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये नहीं, ये आपको सामने वाली जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन है वो नजर आ रही है, इस पर लिखा हो लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन। नहीं, उसमें लाइट इतनी ज्यादा है that it's not visible, मतलब वो बहुत वाइट वाइट हुआ है। This screen on this was ever there, but actually, when someone is distributing the certificate, this is what I want to see and say more of that. ये उधर से क्लियर होगी Actually, It's all white because लाइट की वजह से it's not visible. थैंक यू बहुत मजा आया आपको बात करके Zara, please, we appreciate your participation in this training. Traveled all the way to Lahore to attend this training. We wish you all the best. one two thank you Thanks. Yeah, so now it's Umar's turn. Thank you, Umar. You also to participate.
Miss Frank, I appreciate you. Bye. Coming for using feelings and sharing this knowledge to us. It was my desire. They went to the desire to be able to all CHRP trainings. CHRP places in India now is being favored in certain no. The photo one Meda, let me show you your certificate. Is it visible? This is yours, and we are going to send you the soft copy as well. Congratulations, and thank you for your participation. Thank you so much. Thank you so much. मुझे इसकी सॉफ्ट कॉपी अगर मुझे right now so that I can share it on my LinkedIn and Sure, I मिल hope we जाएगी will receive the hard copy soon. मिल जाएगी वो मिल जाएगी भेज दूंगा Thank you. थैंक यू वेरी मच You're welcome. Love us. नमस्ते